up sleeves, yeah. 24K smile and precious red eyes. Commas in his area. Train with the same buddy ain't none. Ring up neck and letters on his fingers speak of trouble. Trouble, trouble, trouble. Don't go flexing, boy, you get trouble. Oh, bad boy, messing with that boom, boom. Oh, bad boy, riding on that boom, boom. Oh, bad boy, bad boy, huh. Bad boy, bad boy, huh. Oh, bad boy, messing with that boom, boom. Oh, bad boy, riding on that boom, boom. Oh, bad boy, huh. Bad boy, huh. Din on that, 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 boom, boom. Din on that, din on that, din on that, din on that, boom, boom. Din on that, din on that, din on that, din on that, boom, boom. Messing with that boom, boom. Riding on that boom, boom. Din on that, din on that, din on that, din on that, boom, boom. Din on that, din on that, din on that, din on that, boom, boom. Din on that, din on that, din on that, din on that, boom, boom. Messing with that boom, boom. Riding on that boom, boom. Roll up sleeves and coming on hard. He's gonna hurt the ones he loves. 'Cause no savage can be trusted, no, no, no. Yeah, riding label, hitting bad all day. Repping the noise, so trouble, trouble. Don't go fixing, boy, you get trouble. Oh, bad boy, messing with that boom, boom. Oh, bad boy, riding on that boom, boom. Oh, bad boy, huh. Bad boy, huh. Oh, bad boy, messing with that boom, boom. Oh, bad boy, riding on that boom, boom. Oh, bad boy, huh. Bad boy, huh. Din on that, 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 boom, boom. Din on that, din on that, din on that, boom, boom. Din on that, din on that, din on that, din on that, boom, boom. Messing with that boom, boom. Riding on that boom, boom. Bad boy, huh. Bad boy, huh. Din on that, din on that, din on that, din on that, boom, boom. Din on that, din on that, din on that, din on that, boom, boom. Messing with that boom, boom. Riding on that boom, boom. Easy moving up, I bang my thing. I sip of things, it's the next big thing. Now I'm talking, just whip them off straight. Never gonna give it up, never gonna change, no, no. What up, guys? Welcome welcome to another live stream. ये क्या हो रहा है यार? ये ऑल कैसे पसंद नहीं आ रहा है? क्या करूँ गाइस? Pablo on duty. One show me 41.
ये क्या है? ओह, वापस स्काउट। इंटरेस्टिंग। Back in it. 10-4. Any actives? 10-10. Central. This charger looks nice, yeah. हाँ भाई क्या चल रहा है? बस अभी भी आया हूँ। जिंदगी में कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, तो सोचा आ ही लेता हूँ फिर थोड़ा सा। ना ना देख तुम काम करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे हम। नहीं वो पता है, पर अंटिल आई गेट द हाँ। कॉल मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, लाइक वही है, अगर कॉल आया हाँ, तो वो भी मुझे है। जाना पड़ेगा, वरना आई कांट डू यस एनीथिंग। यस, बिल्कुल बिल्कुल, चलो ध्यान रखो। यस 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 यस। गाइस कुछ आउटफिट्स देखें क्या, कोई अच्छा सा आउटफिट है कि नहीं? 100 code 1. सर I'm just gonna be send for few nice clothing stuff. 10 4, no worries. How do I find this, yaar? Like it's complicated. If I make my west 0, I was 14. But now I need to find something, otherwise like this is sheriff. This is full BCSO, okay? This is ये क्या है? This is sheriff. This is sheriff. This is sheriff. अरे? This is शेरिफ। माँ कसम, देखो गाइस BCS के लिए सब कुछ है। शेरिफ शेरिफ what the fuck? This is Ranger. This is EMS. This is hoodie. वैसे गाइस ऑनेस्टली मैं आज स्ट्रीम कभी भी बंद कर सकता हूँ, मेरा कुछ पर्सनल काम है।
अगर मुझे वो कॉल आया तो मुझे मुझे मैं तुरंत बंद कर दूंगा स्ट्रीम. पीडी 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 पीडी. This is formal, okay. This is normal cop stuff. This is also normal cop stuff. Full लाल पास कर के chat पे. What is this? Nah. There is this here, but I don't know if I like it too much or not. Don't like this? तुम लोगों को ये पसंद है? तुम लोग को ये पसंद है? Seven, right? एक पैंट तो चेंज करूंगा, मैं बोला ये ऊपर का.
वैसे कैसे हो आप? बेकार लगा। हाँ मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है ये, सच बोलूँ तो मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। जब जेक का वाइब से मैच नहीं कर रही है। What if I do this? What if I keep this as this only? No, what? ये कितने पे था? Okay. So what if I leave everything as it is, but I want to see if there's any other vest. Okay. Current vest is 14.2. I think मेरे अभी और कुछ है भी और कुछ है. White pants not much good. पता नहीं मुझे always white pants पसंद है, always. Hello Vince. One back 10-8 code 1. 10 4. यार हैं शशांक exclamation mark wife 100 same traffic code 1. Weren't you supposed to pick me up hours ago? Traffic is that bad? Come out. Hey there, friend. आज कुछ भी कमा लेते थे तुम लोग यार.
ये जैकेट है पर वो जो मुझे जैकेट चाहिए वो अभी वो लाइक डाला जाएगा साउंड में. Is this? Oh sheesh. Hello? No, not yet, guys. Not yet. I'm not going anywhere as of now. I'm not going anywhere as of now. अच्छा 31191. ये क्या है? ये आ भी रहा है कि किधर से आ रहा है ये? हाँ, ये लाइट है. ये लाइट किधर से आ रहा है? ये लाइट किधर से आ रहा है? ये रेड किधर से आ रहा है? समझ नहीं आ रहा. वड़ा वर्मान कैसे हो यार? गुड मॉर्निंग. और क्या बताओ इस बार रेड आर पे हो रहा है? जो रेड कलर प्रमोशन अबे फेमस में भी ना कुछ नहीं. इंटरव्यू 3 बजे से है, पर अगर मैं होऊंगा कि नहीं वो पता नहीं यार. वही दिक्कत है. अगर मैं रहूंगा कि नहीं इंटरव्यू में वो पता नहीं.
But you know what? I feel the charger's good. I feel the charger's really good. और कौन कौन लेगा इंटरव्यू? पूरा हाई कमांड, जो भी 7 हाई कमांड है सब लेंगे. इंडिविजुअल बनने के लेंगे. अरे नहीं, हम इतना तो नहीं करेंगे यार. हम बस अपना काम करेंगे. बिकॉज यार मुझे बस एक बंदे को तोड़ना है. मुझे बस एक बंदे को तोड़ना है इंटरव्यू में, और किसी को तोड़ना नहीं है. बस एक बंदे को तोड़ना है. और वो आज के बैच में है ही नहीं. बाकी सबको नॉर्मल इंटरव्यू करना है, नॉर्मल. बिकॉज आई वांट, द थिंग इज आई एम लाइक, जितना भी हंसी मजाक होता है, जितना भी बकचोदी होता है, आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट दिस डिपार्टमेंट. Los Santos River Winewood, that's quite far. और कौन है वो? वॉरियर, ऑफ कोर्स. ऑब्वियसली दैट इज वॉरियर. एक सेकंड गाइस. मतलब चैट, अगर मुझे कोई भी कॉल आएगा तुम लोग 22 स्पैम करोगे क्या? हाँ, अगर मुझे कोई भी कॉल आया तो तुम लोग 22 स्पैम करोगे क्या? क्या हो गया सर? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं. तो गाइस, अगर मुझे एक क्वेश्चन है, ठीक है? एक क्वेश्चन है गाइस. अगर मैंने माइक म्यूट किया और ये शर्म भी नहीं आती, बाहर लिखना चालू हो जाते हैं. शर्म भी नहीं आती भाई, बाइक इतना चालू होता है भाई. वेलकम कमीने लोग. Okay. Should I go full testing on this car?
Should I just test out this car once before any situations happen? Alright, let's go. Alright, let's go S plus, okay? And sure, let's test out this car. Wait. Local. So honestly, I feel this car. Abbe, yaar, this local. I can't help that. I feel this car is a really good chase car. Like, I mean, गाइस मैं बस टेस्ट कर रहा था कि अगर मैं डाउन होगा तो मेरा F1 से क्या होएगा. मुझे ये 31A टेस्ट करना था चैट. आई वॉन्टेड टू टेस्ट दिस 31A. ठीक है, मुझे ये देखना था कि इससे क्या होता है. यार तुम लोग भी ना यार, तुम लोग को पता भी नहीं, सब प्लान था यार. पाब्लो प्लीज प्रेमियर दैट. पाब्लो मैं एस्केप नहीं दे पा सकता हूँ. You left the radio just saying no. If you go unconscious, you automatically leave the radio. I didn't leave the radio. हाँ इमो से क्या? VLD में न्यू ड्रग आ गया है, सब ढूंढ एनर्जी. क्या वहाँ फोकस करेगा? देखते हैं हम क्या करते हैं. पाब्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे एस्केप नहीं दबा सकता हूँ. एस्केप नहीं दबा सकता हूँ. पाब्लो आ रहा है. पाब्लो there should be a way to open map.
लास्ट टाइम आपके हाई कमांड से कुछ लोगों की जड़ी थी, इस बार फिर ऐसा ना हो जाए। लॉल थैंक यू $8 सिकंदर। गाड़ी कहाँ है हमारी? यहाँ से राइट लेके है थोड़ा सा, मैं बेल्ट होता है पहली बार सबका होता है, मेरा भी हुआ। EMS आ गई, रुको मैं, क्या बात है? तो मैं तुम्हारी गाड़ी का काम करता हूँ, तुम्हें EMS को देता हूँ। हाँ। जी डॉक्टर, ऑफिसर ले जाइए प्लीज। इनका नेवर माइंड। अरे बेल्ट नहीं लगाते हैं ना पहली बार, समझ रहे हो? ठीक। अरे ऐसा नहीं है डॉक्टर, ऐसा नहीं है। मैं बस देख रहा था कि मेरा इमरजेंसी कॉल 70-16 +1 पेशेंट। मैं बस देख रहा था कि मेरा इमरजेंसी बटन काम करता है कि सर, नहीं, हर और जगह कुछ नहीं। कन्वींसी भी नहीं करते सर। नहीं सर, मैं देखो सर, हम बिलीव करते हैं कि डिपार्टमेंट सेटअप होने से पहले आई नीड टू चेक एवरीथिंग, ठीक है? अच्छा। तो इमरजेंसी अच्छा। बटन चेक कर रहा था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ओह सर, आप होश में क्यों नहीं हो? लाइक इतना चल फिर क्यों नहीं मारोगे? मैं नो क्या कमजोरी कहाँ से आ गया आपको? क्या इतनी कमजोरी कहाँ से आ गई आपको फिर? सर इसको कमजोरी, आई एम द फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट सर। देखो सर, अगले 1 घंटे तक मैं कितना भी बकचोदी करना मैं कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ, उसके बाद क्या पता मुझे मेरे चीफ सर आके मुझे कुछ दे दे, तो उसके बाद थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। तो 1 घंटे का बकचोदी है मेरे पास। सही है। क्योंकि आई एम ओनली ऑफिसर राइट नाउ, यू नो। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लग रहा है चेंज करना पड़ेगा। बताओ। नहीं अरे मजाक कर रहा हूँ यार डॉक्टर, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत आपको करो। बाहर निकाला हुआ डर लग रहा है, कहीं बाहर ना हो जाऊं। पता नहीं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। आपके साथ पेशेंट है सर? हाँ पेशेंट है सर, अपनी ओ अंदर ले सर, जाइए। मैं इनको लेके चल रहा हाँ जनरल वार्ड। अबे यार, ऐसे लोग भाई, ऐसा अनसीट कर लो ना। सर थोड़ा वेट कर लिएगा मेरे लिए, ठीक है? हैं? मैं वेट करूँ? ठीक है, कर लूँगा। हाँ ठीक है, कर लूँगा तुम्हारे लिए वेट करूँ। अगर कुछ होता है तो। कहना क्या चाहते हो? मैं तुम रहने दो अनपढ़। ये पीछे माइकल क्यों आ रहा है? क्या करूं? हाँ सर, just give me 2 minutes. सर बचा लो सर, ब्रेक आउट हो रहा हूँ। सर उनको बहुत गहरी चोट लगी है। हाँ, ये ब्लीडिंग हो रही है, मैं आप तो देख नॉर्मल लीजिए। बैंडेज पहले पुट कर देता हूँ। ओके। वुंड्स क्लीन। पता नहीं गाइस, टुडे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे स्ट्रीम करना ही पड़ेगा। सॉरी डॉक्टर। लगता है आज मुझे स्ट्रीम करना ही पड़ेगा, बिकॉज आज पता नहीं ऐसा लग रहा है ना कि आई एम इन अ बैड मूड, पता नहीं तो क्यों। हुआ क्या बात है? मैं नो मैं बस एक किन्हें सर? गाड़ी चला रहा था और सामने से एक बंदा आया। अरे और वो बंदे ने मुझे बोला कि यहाँ से निकल जाओ। तो हम निकल रहे थे, फिर ऑब्वियसली यार पता नहीं यार वो बंदे ने ऐसे क्यों बोला। और फिर एक गाड़ी आके मुझे ठोक दिया, और फिर मैं थोड़ा पंख आ गए मेरे पे, एंड आई फेल्ट दैट आई हैड विंग्स टू फ्लाई। और फिर उड़ते मुझे लाइफ में पहली बार उड़ रहा था तो दीवार पे टकरा गया। गन से सर आपके, मतलब वो जो भी चीज है आपके हाथ में, पिस्टल सी? नहीं लगेगी यार, मत चिंता करो। चिंता कर लेता हूँ। प्रोफेशनल होंगे, वो क्यों चिंता कर रहे हो आप? इस बार किसी की नहीं जलेगी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द डिपार्टमेंट। किसी की जलेगी आई डोंट केयर सिकंदर। अगर किसी की भी थोड़ा बेटर फील कर रहे होंगे आप अभी। हाँ थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। यस यू आर राइट सर। खास कर सर, एवरीथिंग आपका तबीयत ठीक है सर? नहीं। क्या हुआ सर? पता नहीं यार क्या हो गया। बेटर फील कर रहे हो आप अभी? आपकी पीस और देख भाई सब ठीक? कितना सर? 200 माय पेपल इज 48।
फिर आपको तो ब्रीडिंग हो रही है यार। बहुत भयंकर। हमने कुछ नहीं किया। वही चलो। अब बायोलॉजी में होता है कोई बात नहीं। हम भी गिरे थे ऐसे ही उड़ते हुए। पता है कहाँ से कहाँ गए थे? कहाँ से कहाँ? सिटी हॉल से रॉकफोर्ट प्लाजा। है? सीधा। वो अलग बात है, मेरी गाड़ी 180 की स्पीड में थी। थोड़े ज्यादा स्पीड बम मैं फिट तो कर बस दिए थोड़ा थे। चार्जर टेस्ट कर रहा था, सामने से लोकल आया मैं कर खुद दो। मैं खुद वही कर रहा था। मैं ठुका इतने छोटे से खंबे से और मैं गिरा गया। खत्म ही हो गया। हमारी गाड़ी तो हमने हैं? तो बुलवा दी। अभी तुम्हें उतार देते पीडीएम। हैं? I am out of ठीक है this. बैठो बैठो। तो वेरी नाइस है जी, अच्छा लगा देख के। कुछ लाइनर किधर से मिल रहा है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं बस अच्छा, चाहता हमारे हूँ। लिए काम बढ़ रहा है। हाँ, मैं बस चाहता हूँ 9F वाला बंदा स्पीडिंग करे ना, मैं अच्छा लगेगा। इसकी वही। मारूंगा। Thank you so much. No worries. Sir, PasKaLL and Babu, no one knows a person who actually did the anonymous. मैं आगे से जाके पीछे से क्यों जा रहा हूँ? मैं भी सोच रहा हूँ। पता नहीं। चलो जी। कौन सा था वो anonymous चीज? वो क्या लिखा था वो anonymous में? और मैं एक्चुअली भूल गया किसने लिखा था। और मैं एक्चुअली भूल गया किसकी जली थी। मैं एक्चुअली भूल गया। $476 to ladies 911 code. अरे ये क्या है? I can't access anything. क्या करूँ guys? यही कि कभी ड्यूटी दे नहीं देता और वो लोग सीनियर पर बन जाते हैं, ऐसा ऐसा। अच्छा हाँ, रैंक के ऊपर था। According to the person who did the 911, the guy is wearing a pink shirt and has white hair. He stole his bag at Alta Street. कैसे पीछे? कुछ तो होएगा इसमें यार, कुछ तो होएगा।
Oh, reset UI reset HTRP. 911 seems to be a code for as of now. No one to be seen. इन्वेंटरी भी कर लिया ऑलरेडी वो इन्वेंटरी इवन इफ आई डोंट डू एवरी आई जस्ट हैव इट हियर इट्स द सेम थिंग तो नहीं खुल रहा उससे तो ट्राई कर लिया ऑलरेडी गाइस आज मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूँ व्हाई एम आई सो फ्रस्ट्रेटेड है लाइक पता नहीं यार आई फील फ्रस्ट्रेटेड Just want to check one thing. Huh? पूरा Oh, okay. Interesting. हाँ कौन से रैंक में पीडी में आई एम द एसएसपी ट्रूपर लाइक तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए एज ऑफ नाउ इट इज द सेकंड हाईएस्ट रैंक इन द डिपार्टमेंट वैसे अभी कॉप में मज़ा कम आ रहा है क्योंकि पीडी में लोग कम है इसलिए शायद हाँ इसलिए सूर्यांश देखो सूर्यांश अभी पीडी का सेटअप टाइम है ठीक है सेटअप टाइम में ज़्यादा काम होता है ऑफ स्ट्रीम रिलेटेड लाइक बैक एंड वर्क एसओपी बनाना टेंट कोच बनाना रिक्रूटमेंट चालू करना फिगरिंग आउट द क्वेश्चंस फिगरिंग आउट द डिपार्टमेंट प्रोसीजर्स फिगर आउट करना फिगरिंग आउट रैंकिंग्स वो सब बैक एंड होता है वो सब स्ट्रीम पे नहीं होता है वो स्ट्रीम पे दिखाने की चीज़ें नहीं है सो तो वो सब जब हो जाएगा जब डिपार्टमेंट सेटअप हो जाएगा तब अलग बात होएगा One back channel after CORSAIR. Resuming code 1.
10 to dispatch. 10 for you are. 10 for you are. 10. Alright, I'm responding to this 37 OB9F. 10 for, I'll attach in one mic. I'm sending it on LS Freeway North, currently no visuals. We check south. 10 for, copy that. और SASP ट्रिपर वो क्या होता है देखो SASP is the entire state का डिपार्टमेंट that is San Andreas State Police. SASP के नीचे आता है 3 सब डिपार्टमेंट एक LSPD एक I sent it towards Grapeseed, currently no one to be seen. So I don't think he came here. So I'll keep continuously looking around the city for that same vehicle as well. 10-4, copy that. तो SASP के अंदर 3 डिपार्टमेंट है that is the LSPD, the BCS and the Park Rangers. कार लिवरी लगाना है यहाँ पे आपने किसी डाउन इंसान या कोई अनकॉन्शियस इंसान को देखा? नहीं सर, मेरे को तो बस उसको ही देखा, तो वही है। मेरे को लगा था ये डाउन है, तो बाद में देखा नहीं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। और स्ट्रीम इंटरव्यू चाहिए तो बस नसीब अच्छा होना चाहिए कि मैं स्ट्रीम ना कर रहा हूँ। बॉलर अनुभव लड़ने का लगा, अनुभव के ऊपर है वो। हॉर्न स्ट्रीम चाहिए, देखते हैं ना। लाइक आई हैव सम पर्सनल इश्यूज आल्सो गोइंग ऑन इन लाइफ। जब तक वो पर्सनल इश्यूज सॉल्व नहीं होते, एवरीथिंग इज लाइक नथिंग इज इजी। नहीं यार, इसका टर्निंग थोड़ा सा आई हैव टू स्लो डाउन अ लॉट। आई कांट सेंड इट ऑन टर्निंग्स। करण और वॉरियर का इंटरव्यू ऑन स्ट्रीम प्लीज। अरे सेकंड लाइक मतलब $3। मैं कोशिश जरूर करूँगा। देखो, अगर मेरे पर्सनल इश्यूज नहीं चल रहे होते ना
तो I would have thought about it. What up, Rocky? How you doing? कैसे हो यार दोस्त? थोड़ा सा खुल जा। वॉरियर न्यूक्लियर को बुली देखना है। इंटरव्यूज होंगे। दे विल अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑन स्ट्रीम होंगे, पर देखते हैं। 476 for review. Sanfa. फोन चेक, वही तो खरीदने जा रहा हूँ अभी। है मतलब ये गेट बोल रहा है कि चट को कल ना। अरे ये तो चीटिंग है यार। इंटरव्यूज कब? इंटरव्यूज 3 बजे होंगे अगर मैं रहा तो, वरना कोई और ले लेगा इंटरव्यूज। क्या जेक को भी लिटिल सोल से खाना पीना लेना चाहिए? हाँ, क्या जेक को भी लिटिल सोल से खाना पीना लेना चाहिए? हाँ नो, तुम लोग ऐसे बोलो कि फर्क भी पड़ता है, अगर ले या ना ले फर्क भी नहीं पड़ता। 400 resuming code 1. कैरेक्टर मैं कैरेक्टर मिस नहीं करता। ओ Opponent will be on a lookout for that sentinel that's overspeeding near Havik. चल फॉर हेल्प यू आउट। Thanks, bro. सैलरी कैश में आते नहीं बैंक में, मैं बस कैश निकाल के रखा हूँ। I'm gonna check Havik East, you check Havik West. Send for copy that. Heading towards Popular South, mostly I'll find him. This charger's good. पर कौन चला पाएगा वो? This is not going to be like last time. I've got eyes on the sentinel, but there is no one inside. Just hold on. It is near Digital Den. 10-9, where did you get eyes? Digital Den, but the thing is, this vehicle has been crashed and there is no one inside. I'm just looking around. There is an EMS here though, so I'm just going to. He might have crashed and like got injured.
truck at garbage and I'll be there. 10-4. Sir, are you conscious? यस सर। क्या हुआ आपको फिर से? अभी तो ठीक हो गए थे। यार मेरे दोस्त ने गाड़ी ठोक दिया, मैं यहाँ गिर गया, वो चले गया। आपको छोड़ के चला गया वो? उसे पता भी नहीं होगा सर। यही है ना दोस्ती आजकल की, क्या ही बोले, एडवांस दोस्ती हो गई है काफी। दो मिनट दीजिए सर आप, ठीक है? For now. थैंक यू ऑफिसर फॉर कमिंग। नो वरी सर, हम तो कुछ और रीजन की वजह से आए थे, बट ठीक है। ठीक है। $400 back on code 1. What's your 20 Jake? और डिजिटल डन। 76. I'm going to be heading towards the pillbox because I'm going to question this down suspect. I mean, potential suspect, because the car was here and he's injured. 10-4, copy that. I've taken evidences. I'm just going to be impounding the vehicle. Copy that, then I'll meet you directly at Mount Zona. 10-4. ये रखना गया था। Yeah, I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help beat it.
चैलेंज के बारे में जानना है सबको? गाइस तुम लोग को चैलेंज के बारे में जानना है? गाइस मैं एक दोस्त का स्ट्रीम देख रहा था। अब वो दोस्त ने बोली है कि एट 12K शी वुड डांस ऑन स्ट्रीम। अब वो डांस से फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझे ये देखना है कि इफ शी एक्चुअली डज इट और नॉट। जो लिंक जितेंद्र स्पैम कर रहा है उसको जरा सब्सक्राइब कर लो, 12K करा दो, एंड लेट्स सी इफ द चैलेंज कैन बी फुलफिल्ड। 101 back carried after another code 0. I'm 76 to Mandana. 400 to Jake, do we have air one right now? Like there's one guy stuck on the roof and it's locked. I mean we do, but I don't think they can. I mean. Yeah, no worries. Yeah. भाई भूल जाते हैं कपल बॉक्स भाई। I don't think we have the air one either. Oh, 10-4. 10-4, I just take the helipad. कब का फॉर्म एक्सेप्ट करना था कल? Show me 10-7 for like 5 minutes. 10-4. वो सस्पेक्ट चले गया। चलो ठीक है मुझे जानना है यार कि लोग ये सारी गाड़ी कैसे ले रहे हैं। मुझे ये जानना है, जो ये सेंटिनल है, जो वो 9F था, ये सब गाड़ियाँ लोग कैसे ले रहे हैं। This is I2 LSPD. 10-4 send it. Are you responding to latest call? I guess इसको rescue help चाहिए. We're trying, but we don't have any air access as of right now. Help you out for that. 10 for them, we can respond. So I'll be on an air unit and you please come on and ground unit, please. 10 for sir.
I'm 30 the latest one. I'm also 23 below the apartment building. Got visuals. Send for copy that. Guys, EMS PD working together. और यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ. काम करो सागर शिवा. काम करो. Which I wanted, that is EMS I want. Is everything alright? सर एक्चुअली वो सीन हो गया समझ रहे हो गाड़ी उड़ने वाला प्लीज अवॉइड करो उस चीज को 10 for. मैंने तो एनर्जी ऑन टॉप चल रहा है वो हम नहीं बोलते वो पूरी दुनिया बोलती है गाइस किसी को रसगुल्ला खाना क्या क्योंकि मैं खा रहा हूँ सोचा सबको जला लूँ अगर किसी को खाना है तो खाना है किसी को अरे व्हाट अप जोशी क्या हाल है हाँ गाइस खाना किसी को Everything all right, doctor? He's all right. 10-4. Hey, what happened there? कुछ नहीं. We are just taking care of a situation. What? We're just taking care of some things. Officer, do you have food and water? Oh, 10-4 I do. I sound some burst here. I will landing my chopper on a No, it's all good. It's all good. All good. Yeah. I'm very scared, bro. Don't worry. Just remove your helmet though. Oh. Yeah. And please, like, just move away from the area slightly. Okay. Yeah. What the hell?
Not mine. I mean, don't harm me, man. I mean, it's okay. Like you can. I mean, we're just here to save you, man. What the? Sir, क्या देख रहा हूँ मैं आज? Sir, we are just here to save you, so you don't need to harm us, okay? Like, I mean. सर आपके पास से गन कहाँ से? चॉपर के अंदर ही बताओ पहले मेरे को. मुझे बता होता तो फिर मैं भी बता ही देता. सर एक सेकंड वापस लड़ चॉपर. मतलब ये 12 घंटे कोई बचाने नहीं आया. तो बैठो. 12 घंटे कोई बचाने नहीं आया. लॉक तो खोल दो. जनता पागल हो जाएगी. सर का फ्लैशलाइट है क्या ऑफिसर? हाँ है. इनको फ्लैशलाइट दो प्लीज. अरे जरूर. हाँ मिल गई. फ्लैशलाइट निकाल दो. या अभी वापस दे दो. रखने दो. वापस नहीं रखते दे सकता हूँ. सर कुछ खा. हाँ अभी बताओ सर, मैं खाना दे रहा हूँ. ये गन किधर से आया? नो आइडिया सर, नो आइडिया. अभी मैंने आपको टॉर्च दे दी, फिर भी मेरे हाथ में टॉर्च है. अब पूछ यार तुम कैसे टॉर्च देते हो यार? मतलब क्या ही बोले. अरे मुंह धो लो यार. आपने ली नहीं सर टॉर्च. अरे तो मुंह धो पहले. पहले टॉर्च अंदर रखो फिर देना प्लीज. क्या देखना पड़ रहा है. जो अच्छा है मानता हूँ. वही. हाँ तो सर लेट्स कंटिन्यू. हाँ ये बताइए अब क्या हुआ था आपको? ऊपर कैसे पहुंचे आप? सर वो कल रात को मैं लिफ्ट मांगी थी किसी से, फिर हम लोग एक बार में गए. उसके बाद में क्या हुआ मेरे को कुछ याद नहीं है. आज सुबह मैं इधर उठा सर, मेरे पास खाना पानी कुछ भी नहीं है. अरे उसकी टेंशन मत सर, अब हम आ गए ना आपके पास. उसने मेरा 150 रुपया भी चुरा लिया सर. टैक्सी ड्राइवर बोला उसने. सर फाइनली मैं ओके कर सकता हूँ बट यस ये रिपोर्टर पीडी लिखवा सकते हैं. पीडी से सब टैक्सी ड्राइवर था. उसका नाम था मंगू यादव. मंगू यादव. यस सर. उसने क्या किया कल आपके साथ? सर वो बोला, अब मैंने टैक्सी ड्राइवर को बुलाया. थैंक यू सर. टैक्सी ड्राइवर को बुलाया. मैंने बोला सर मेरे को ऐसे जाना है, हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा सा मेरे को काम है, पूछना है कुछ दवाई के बारे में. तो बोलता कि अभी हम लोग एक और बंदे को ड्रॉप करने के लिए इस बार वगैरह में जा रहे हैं. अब उनको ड्रॉप करके और फिर हॉस्पिटल चलेंगे. मैं बोला ठीक है चलो ड्रॉप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा है, थोड़ा शेयरिंग में कम भाड़ा लगेगा. मैं गया उधर, फिर वो लोग पार्टी वगैरह उधर करना स्टार्ट कर दिया. आगे उन्होंने सरकाई नहीं गाड़ी. बोलते कि 5-10 मिनट इधर चिल करते हैं फिर चलते हैं. तो मैं बोला चलो ठीक है. अब जाना तो था सर, कैसे अब पैदल तो इतनी दूर नहीं जा पाऊंगा. फिर उन्होंने कुछ ड्रिंक्स वगैरह दी सर. उसके बाद में सब कुछ धुंधला हो गया, कुछ याद नहीं है. क्या उन्होंने तुम्हारा कुछ सामान चोरी किया है? कुछ किया है? पैसा चोरी हुआ था साहब. पैसा $150 चोरी हुआ. अभी डॉक्टर साहब ने. क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आपने पैसे के बदले में वो गन खरीदी एक्चुअली में? है? कौन सी गन सर? जो आप अभी आपके हाथ में अभी एक गन था सर. सर अवॉइड करो सर. यू कैन चेक मी सर. सर मेरे को कुछ याद नहीं है. मेरा सर चकरा रहा है सर. देखो सर, आई वुड रेकमेंड कि आप मेरे साथ एक बार पीडी आ जाइए, ठीक है? जी सर. आई विल राइट एन FIR फॉर यू. जी सर. एंड दिस मंगू यादव पर्सन जो भी है, वी विल ट्राई टू फाइंड हिम एंड थोड़ा विल क्वेश्चन हिम अबाउट दिस कि क्या हुआ एग्जैक्टली. सर कुछ खाने पीने को दे दो सर. दे तो दिया. ओके मिल गया सर, मिल गया. थोड़ा सर चकरा रहा है सर, पता नहीं चलता इधर उधर का. कोई नहीं, समझ ऑब्वियसली यार. कोई अगर बिल्डिंग पटका दे वुड फील अ लिटिल स्कैर्ड. आई गेट दैट. 12 घंटे सर. सुबह से शाम हो गई है. हां ऑलराइट ऑफिसर, लेट मी टेक अ लीव. यस नो वरीज. थैंक यू. नाउ फीलिंग मच बेटर सर. डू यू नीड एनी लाइक मेडिकल असिस्टेंस? नो उन्होंने कर दिया ट्रीट. कर रहे. एक हेलीकॉप्टर भी ट्रीट हो गया मेरे लिए. है एक हेलीकॉप्टर. जैसे गन आई वैसे हेलीकॉप्टर भी. मैं नहीं चाहता. मैं भी नहीं. मैं चाह रहा हूँ सर. वो रिपोर्ट. अच्छा रिपोर्ट बनाते आ जाओ. तो वो क्या देखना पड़ता है. सर मैं तो कचरा उठाने वाला था. पता नहीं क्या देखना पड़ रहा है मुझे. तुम कचरा उठाने वाले थे? इतने मतलब इतना बुरा हैंगओवर के साथ? पता नहीं सर, मैंने पहली बार ड्रिंक किया जिंदगी में. है? कल मैं पहली बार ड्रिंक किया? जी सर.
देखो यार इतना नहीं पीना चाहिए यार। अरे सर 1-2 ड्रिंक हुई थी, उसके बाद में कुछ याद नहीं, उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ मिलाया। साहब ऐसा नहीं हो सकता। क्या कोई थोड़ा सा भी लाइक हैंगओवर सा हेडेक सा कुछ भी फील कर रहा है? हाँ सर, हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चक्कर सा आ रहा है सर, सर पकड़ने को ऐसा फट रहा है तो सर एक एकदम काम सर। करते हैं सर, ओके, फॉर योर सेफ्टी ओनली पहले एक एफआईआर लिखा देते हैं, ठीक है? जी देन जी वील गो टू माउंट जोना एंड वील जस्ट डॉक्टर से थोड़ा बात करते हैं, इफ दे हैव एनी लाइक मेडिसिन दैट विल मेक यू फील थोड़ा सा लाइटर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट पार्क दिस इन फ्रंट ओनली। जी सर। चलो यार, ये आरपी दे रहा है गाइस, ये आरपी दे रहा है, ये आरपी दे रहा है। सर डोंट नीड टू वरी सर, अगर हम लोग वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट। अरे सर वो बस इतनी ऊंचाई से सर, इतनी देर तक देख देख के बुरा हाल हो गया है सर। लोग चींटियों जैसे दिख रहे थे ऊपर से। सर कोई दिक्कत नहीं, आई गेट। तो रुको एक सेकंड। जी सर। 222 10-8-41 will be 10-6 for a while. अच्छा, अब अभी आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम टोबी जिंक्स। क्या आप मुझे आपका लाइक फ़ोन नंबर रीड आउट कर सकते हो? ट्राई करता हूँ सर। एक सेकंड सर। या नंबर होगा सर 21861 हाँ 45207। 21861 हाँ, हाँ। 45207। जी सर, टोबी जिंक्स। एंड ये किसने आपका सामान लिया था? सर सामान लिया किसने था वो पता नहीं, मगर मैं लास्ट टाइम तक मंगू यादव था और उसके साथ में गाड़ी में एक और था जिसको पार्टी में जाना था, उसका नाम मेरे को नहीं पता साहब। मंगू यादव, राइट? हाँ, टैक्सी ड्राइवर बोला मंगू यादव, उसका नाम मंगू यादव ही था। कैसे कैसे लोग हैं साहब सिटी में। तो हाँ, अब एक बार फिर से एक जो एग्जैक्टली हुआ था कल रात को, एक बार स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो ताकि मैं ये मैं एफआईआर बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मैं उधर था अपना क्या बोलते हैं ये जो ग्रूव स्ट्रीट है, ग्रूव स्ट्रीट के पास में था मैं, और मेरा जो ट्रक था वो ख़राब हो गया था, गार्बेज वाला। ओके, ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं कोई टैक्सी वाले को बुला लेता हूँ, तो वो बोला कि मैं शेयरिंग वाला कर सकता हूँ आपके लिए थोड़ा सस्ता, बिकॉज वो $250 मांग रहा। मैं बोला साहब थोड़ा देख लो कुछ शेयरिंग में, अगर मतलब कम हो जाए भाड़ा। तो बोला शेयरिंग वाला लगेगा, रूट लंबा होगा, एक बंदे को छोड़ के फिर तुम्हारी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आया, उसकी गाड़ी में पीछे ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ था। तो मैं ऐसा अनजान लोगों से ज़्यादा बातचीत करता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था, बट ड्राइवर बोला मंगू यादव। तो हम दोनों गए और वो बोलता कि अभी इसको एक बार पे छोड़ना है और फिर हम लोग निकलेंगे। ठीक है, तो वो वाइनबाउड की साइड उधर ऊपर पहाड़ों की साइड उधर है, बड़ा सा पॉश एरिया है, उधर वो लोग गए और फिर वो ड्राइवर को भी अपने साथ में अंदर लेके चला गया। तो मैं बाहर गाड़ी में वेट किया थोड़ी देर, मैंने सोचा आ जाएगा पेमेंट लेके, शायद पेमेंट लेने के लिए गया होगा। तो थोड़ी देर में दोनों बाहर आते हैं और बोलते हैं कि अभी बस 5 मिनट में हम लोग निकल ही रहे हैं यहाँ से, और तुम एक काम करो, तुम भी अंदर आ जाओ, 5 मिनट में चलते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लो, तुम भी आए हो तो ऐसा अकेले खाली बैठे अच्छा नहीं लगता। तो मैं चला गया साहब, मैंने बोला कि अब पैदल तो जाने से रहा इतनी दूर। तो मैं उतर के उनके साथ अंदर गया, तो उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह मंगवाई कुछ। 1-2 ड्रिंक्स के बाद में सर मेरे को ऐसा धुंधला धुंधला सा महसूस हुआ। मैं बोला सर आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो बोलते कि कोई बात नहीं, अभी बस लेके चल ही रहे हैं तुम्हें, क्योंकि मेरे को वैसे भी हॉस्पिटल ही जाना था। तो दे सेड कि दे विल ड्रॉप मी टू द हॉस्पिटल। तो मैं बोला ठीक है चलो, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। मैं बाहर जाके और गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद में सर मेरे को कुछ याद नहीं है। अब मैं सुबह जब उठा हूँ सर, मैं बिल्डिंग की छत के ऊपर था, बिल्डिंग का गेट भी बंद था सर ऊपर का। उसके बाद में सर मेरे पास में कुछ भी नहीं था, खाने पीने का सारा सामान चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया सर। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जी साहब।
तो और आपको आइडिया भी नहीं है कि आप वो अपार्टमेंट के ऊपर कैसे पहुंचे, राइट? नहीं साहब, नहीं, कोई आइडिया नहीं है ऊपर तक मैं कैसे पहुंचा, कौन लेके गया, कुछ आइडिया नहीं। 2 लोग तो लगे होंगे साहब, मेरा वजन काफी है, तो एक बंदे के तो बस की बात नहीं रही होगी, 2 लोग तो लगे ही होंगे एटलीस्ट। अरे बैरस में हैप्पी बर्थडे। ओके, आपके सबसे 2 लोग की जरूरत है, तो शायद से दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। हो सकते हैं सब, हो सकते हैं, देखो क्योंकि आया भी उसी के साथ में था और एंड टाइम तक जितना मेरे को याद है उसी के साथ में था वो। एंड अभी आपका हेल्थ कैसा लग रहा है? आपका आपने बोला कि आपका थोड़ा खाना खाया ना साहब, तो अभी थोड़ा सा हल्का बेटर लग रहा है, मगर सर में अभी भी थोड़ा दर्द है, बट वो बेरेबल है, उतना नहीं है ऐसा, मतलब कुछ इट्स मच बेटर नाउ। कुछ तो साहब भूख से बेहाल हो गया था, पूरा 12-13 घंटे कुछ खाया पिया नहीं एकदम। All right, just give me 1 second and ये क्यों नहीं हो रहा भाई? हेलो, now okay, this is done. FIR against Mangu Yadav by Toby Jakes. Never save it. Alright sir, मैंने यहाँ पे FIR लिख लिया है. All the officers that are there, if we will try to contact Mr. Mangu Yadav. Mangu Yadav sir, yeah. And if there's any update, we will let you know. तुम्हारा FIR number 3 है, तो if अगर आपको कभी भी इंक्वायर करना है इसके बारे में, you can come to the PD. कोई भी ऑफिसर से बात करके पूछ लो कि you want an update on the FIR number 3. जी सर. And then we can figure out. But I'll be very honest with you, अगर हमें मंगू यादव, like if he doesn't give us any valid information या कुछ, फिर it might be a little difficult. जी साहब, ठीक है? समझ लो. So I'll just be very honest and upfront about that. मुझे आपको कुछ false hopes नहीं देना. We'll try our best, but मुझे false hopes नहीं देना आपका. ठीक है साहब. वैसे $150 चोरी किया और लाइक समझ लो, मतलब उसने मारा पीटा कुछ नहीं था, बट वही है कि अगर कोई और के साथ में ऐसा होता तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता था. That's why. So I mean देखो, I get it कि यार आप मेहनत करते हो दिन रात and you have a job and all that, and आपका पैसा चोरी हो गया. So अगर मंगू यादव मिले ना मिले, I don't know, but I can just help you out with this $300. अरे नहीं साहब, डॉक्टर ने दे दिया $200. That's fine. आप मेहनती इंसान हो and it's completely all right because like I get it, like सब लोग मेहनत करते हैं hard work ताकि वो like पैसे कमाए eventually and all of that, right? And मुझे पता है अगर किसी ने किसी का भी like मेहनत का लिया हो तो like बुरा लगता है, it feels bad about it. So साहब बहुत धन्यवाद साहब. अरे कोई नहीं. चलो एक बार माउंट जोना जाके आते हैं just to like I'll just ask the doctors if to see that. बाकी जरूरत नहीं है साहब अभी, वैसे अभी ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है. वो खाने पीने की वजह से सर, और जो दारू वगैरह की वजह से थोड़ा सर में दर्द था, तो अभी ठीक हो गया खाना पीना. क्या आपके पास अभी कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? नहीं साहब, नहीं. आज मैं आपको कहीं ड्रॉप कर लेता हूँ सर. वो लीजन के पीछे, समझ रहे हो, रेंटल पे? पीछे. हाँ, रेंटल तक. आजा, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू साहब इतना करने के लिए. आप अकेले ही काम करते हैं क्या सर? कल भी नहीं, अभी डिपार्टमेंट सेटअप हो रहा है पूरा. ओह अच्छा. समझा. Yeah. Thank you very much, sir. No worries. As long as you're fine, that's what matters. अरे सर, आप जैसे 10 भी लोग आ गए नगर डिपार्टमेंट में, सिटी सुधर जाएगी. बहुत लोग आ जाएंगे, टेंशन मत लो. लाइक अगर आपको कभी भी चाहिए, यू कैन ऑलवेज 911.
One of वही किया officers साहब, will मैं come help you वही out. किया मैं। अभी इतनी ऊंची बिल्डिंग, मेरे को वैसे भी सर मेरी टांगे कांपती है इतनी हाइट से। नहीं, थोड़ा अपना हमारा सर्विस डिले हो गया जस्ट बिकॉज वी हैड टू कांटेक्ट द ईएमएस फॉर एनी एयरबोर्न एक्सेस। समझे सर, समझे। सो वही है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, वरना हमारा रिस्पॉन्स टाइम इससे ज़्यादा तेज़ होता है थोड़ा सा। समझ गया सर। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। थैंक यू वेरी मच। नो वरीज सर, हैव अ गुड डे। यू टू सर, यू टू। इसने अच्छा आरपी दिया यार, बट मैंने one direct to Rex. Send it. 20. Mount Zona Medical Center. I'm 76. I have only 14%. Will be there at Vespucci PD in like 2 miles. No, I'm anyway coming. I'm anyway right besides the Mount Zona, so I'll just come there only. Nothing urgent. थोड़ा सा हमने हक दिया है। हेलो हैं? किधर जाना है? गाड़ी निकल गई भाई। आप ये व्हीकल चला रहे हो? सर मैं वो रेक्स के साथ आया था, तो रेक्स ने बोला आईडी कार्ड लेके आ जा, तो मैंने उसको बोला दे दे चाबी, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम माइक बैनिंग है, मैं आज इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा, माय नेम इज ऑफिसर जेक विलियम्स। अरे सर, नाइस टू मीट। अच्छा, तो रेक्स ने आपको इसकी चाबी दिया है? सर चाबी दी थी, मतलब वो एक बंदा था कोई जो उसको मतलब वो कर रहा था, स्क्रैच पे डंटे वंटे मारा थे, देख रहा हूँ बोनेट आ गया, तो मैं बोला, उसने बोला कि यार देख ले जरा वो गाड़ी। One direct officer Rex. सर वो अंदर ही है, सर अंदर ही है। Can you come outside the mountain? भूल गए हो यार, क्लास सुबह बेचारी की बताओ। हाँ ने इसको तुम्हारी गाड़ी की चाबी दी? अरे मैं डाउन हो गया था ना। हाँ तो मैं चला के लाया ना सर। अच्छा, you were unconscious. ऊपर से ये ऐसे बात ऐसे बोल रहे हो आप, मुझे इल्जाम लगा रहे हो ना सर। सर इन्होंने मुझे बोला ये आपके फ्रेंड है और ये कार्ड लेके जा रहे हैं ऐसे। हाँ मैं डाउन हो गया था ना, और उस समय मैं एक ऑफिसर को बता रहा था अबाउट द प्रोसेस, तो तब तक ही नीडेड द आईडी कार्ड अर्जेंटली, तो इसलिए अलाउड है। अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा और भी कोई लात मार रहा था गाड़ी को, तो मैंने इनको बोला कि गाड़ी मूव करके कहीं और कर दो। कोई बैट मार रहा था सीधा। अच्छा, आपने देखा नहीं बाहर कितना जाम हो गया था, मैंने हटवाया नहीं गाड़ी इसलिए। तुम दोनों बेसिकली यू हैव कम टू अप्लाई फॉर द पीडी। यस सर, आई जस्ट गॉट माय। ऑलराइट, ओके। यस सर। एक और अंदर थे, वो भी पीडी के लिए अप्लाई कर रहे थे। ही वाज लाइक कि क्वेश्चंस बता दो मेरे को। मैं बोला क्वेश्चंस नाम क्या है उसका? नाम क्या है उसका? जरा बताइए। पेपर लीक हो जाता है। क्वेश्चंस नहीं, मतलब बेसिक क्या पूछने वाले हो। हां, तो जरा नाम बताइए उसका। It was something like Spencer Jones. अच्छा, ठीक। सर मुझे बताओ मेरा इंटरव्यू में सर तो उन्होंने बस यही बोला कि वो कोड्स थोड़े उनके डिफरेंट होंगे, तो वो थोड़ा नहीं करने का। दैट्स इट वैसा। हां, बाकी मैं वो बाद में बात करते हैं हम दोनों आपस में। हां ना, इंपॉर्टेंट वर्क पूछो। सर आप आईडी कार्ड ले आओ, सामने में ही सिटी वाले। मेरे पास है सर। नहीं माइक बैन को बोल रहा हूं। अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरा इंटरव्यू आज के स्लॉट्स में नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबब्ली टुमारोस you will get detailed information. Tomorrow ka I'll be posting it by 7 PM tomorrow. हाँ, because weekdays सा कॉलेज वगैरह और ये सब 3 बजे पॉसिबल नहीं हो पाएगा वीकडेज में, इसलिए मैं we'll be having other timing. Don't worry, like we have adjustable timings about that. उसका टेंशन मत लो. And Rexa, do you remember me from the docs? Kinda. I mean, हाँ देखे Simbarao sir, Simbarao. Now you will remember. Yeah. Yes, sir. Okay, sir. Have a nice day. And sir, there was a kid named Rio who was vandalizing your car and breaking the glasses with a bat.
and he was just right there in front of the pillbox. Yeah, I got it. That's Oh. why I asked him to move the vehicle for now because I was with doctors inside. So yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Yep, no problem. वैसे These मैंने gates, थोड़ा man. सा ना Oh हक my दिया God. है। क्या? सर एमडीटी खोलो। हाँ खोला। जरा रिपोर्ट्स में जाओ, खुद पता लग जाएगा। रिपोर्ट्स क्या देख रहे हो यार? 2 बार बना दिया? नहीं, I overrode the second one, which was created by you. I don't know what was in it, and It was regarding some 200 diamonds के बाद फिर एक और था। हाँ कोई नहीं वो ओवरआउट हो गया ना, अच्छी बात है। It was report something, कुछ लोग कह रहे थे गोटी चोट हो गया मेरे। तो मैं वो डिलीटेड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि ये बंदा तुम्हारी गाड़ी चोरी कर रहा है। नहीं। ठीक है, ओके। नहीं ये तो मुझे सुन के बुरा लगा ना, सच चोर लगता हूँ क्या मैं आपको? मतलब कोई शक्ल से चोर लगता ही नहीं है। नहीं ये तो बेरोजगार हो कैसे दिख रहा है ना अब तो। ओए मतलब क्या बोल रहे हो सर? हाँ बेरोजगार हो गए थे ना, बहुत टाइम से पीटी में थे। हाँ जो मेरा बुरा टाइम गया आप उस पे कमेंट ना करें इतना। हाँ, it was not because of some people, you know, circumstances. This guy is one of the best drivers I know. Y'all might not know that. क्यों ऐसा क्या हुआ? कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करेंगे सर बताओ यार। बताओ अभी तो वैसे भी आधा घंटा है मेरे पास उसका फ्रीडम। तुम पहले जाके मेडिकल करा लो फिर बताना। हाँ अच्छा मेडिकल लेके, हाँ पहले जाके करा लो। हाँ पार्ट से सुना रहा था मेरे को कुछ इमोशनल अटैचमेंट कुछ। छोड़ो यार, इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा आज। पर कैसे पता नहीं यार, दिक्कत है। कह रहा था सर मैं सेलेक्ट हो जाऊं तो मेरे को इंटरव्यू में ले देना, मैं बहुत रुलाने में एक्सपर्ट हूं लोगों को इंटरव्यू में। मैं बोला इसीलिए तो नहीं लिया। बोलता है सर मैं बहुत एक्सपर्ट हूं ना, रो देते थे लोग मेरे से इंटरव्यू में, मैं जब लेता था तो प्लीज मेरे को लेना हो तो ले सकते हो। ये भी सही है। हमारा ये चीफ किधर है यार? उसको थोड़ा काम करना था पहले। वही बोलो। आज मसाला मिलेगा इसका मतलब। ये लोगेट है किधर यार? इसको पहले आके काम करना है। चलो मैं थोड़ा आता हूँ, मुझे थोड़ा ग्रोसरी स्टोर जाके थोड़ा खाना पीना खरीदना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है। आप किस बारे में बात करनी थी वैसे बोल रहे थे? वही यही है जो हगास था थोड़ा सा वो। क्या? अच्छा वो ना, उसका कोई दिक्कत नहीं। वो किस रात को बंदे आए थे, देवर लाइक गोटे चोरी हो गया, रिपोर्ट लिख दो। आधा बना दिया मैंने कहा एक सेकंड क्या चोरी हो गया माफ करो। हाँ वही था। जेला सेंटा सर। हाँ जेला सेंटा सही है। सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज ऑफिसर जेक विलियम्स। व्हाट अबाउट यू? आई एम BMW। योर BM? ओके। ओह माय गॉड। बाबू मोशाय W सर। अच्छा ओके बाबू मोशाय। और सर आपका क्या नाम है? मेरा रेक्स डेविस। अरे वाह सर, हमको तो आपके नाम से EMS याद आता है। ऐसा? अरे सर ये आपके पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होना क्या बंद हो गया? हाँ अनफॉर्चुनेटली फॉर्म्स रिसेंटली ही बंद हुए हैं, सो जब भी सेकंड बैच आ जाएगा दैट टाइम यू कैन अप्लाई इफ यू वांट टू। अच्छा सर हम हैदराबाद में गए थे मैकेनिक शॉप में, हमारा वैकेंसी था वहाँ पे निकला था, तो वो बोलते ठीक है तुमसे सवाल पूछेंगे, बता दोगे, इंटरव्यू लेंगे तो हम तुमको ले लेंगे। तो वो भाई साहब हमको बोलते हैं कि बताओ टायर पंचर हो जाए तो क्या करोगे? हम बोले स्टेपनी निकालेंगे। अच्छा फिर क्या करोगे? हम बोले जो टायर पंचर है उसके सामने खड़े हो जाएंगे। बोलता है अच्छा और बताओ? हम बोले और सब बढ़िया, आप बताओ। भगा दिया बैगन। बोलता है तुम जाओ यहाँ से। क्या?
अरे हमको बोलता है और सब बढ़िया। हम बोले और बताओ समझ सब नहीं बढ़िया आया तो बताओ ऑफिसर क्या करूं मैं। सो ये दिक्कत हो गया हमारे साथ। तो अभी हमको बोलता वो फील्ड ही छोड़ दो तुम ये। तो हम आ गए फिर इधर। अभी हमको बनने का है पुलिस वाला। पुलिस वाला? मैकेनिक से सीधा पुलिस वाला बनना चाहते हो? हम थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके आया वहीं। क्या ट्रेनिंग लिया बताओ? हमने ट्रेनिंग ये लिया है सर। अभी ट्रेन से ही आया मैं। तो वहां पे देखा लोग कुछ ट्रेन से आया ट्रेनिंग ले लिया, देख लो। ट्रेन से कमिंग ट्रेनिंग। ओके मतलब तो बढ़िया। बताइए सर आप लोग भी हमसे पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत, हमको भी आना। देखो यार, ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट यार, आई फील बैड कि आपका वो मैकेनिक शॉप का जो काम था वो नहीं हुआ। आई अंडरस्टैंड दैट, या जो भी हुआ, बट पीढ़ी के लिए यू नो लाइक वंस द सेकंड बैच ओपन, अगर आप एक फ्रेशर भी हो तो आपके लिए जगह हो सकती है, वो दिक्कत नहीं है। बट इट इज जस्ट दैट लाइक डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले ही आपको एक जो हमारा इंटरव्यू प्रोसेसेस है वो चालू हो गए थे। अच्छा यस। अरे हम यहाँ भी देरी कर गए। जिंदगी में बहुत देरी कर गया मैं। आप कोई और जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं सोच रहे? अरे हम गए, हम उनको बोले सुनो, हम एक बंदे से मिले, वो उनको बोले यारो तुम हमको जॉब दे दो। हाँ। तो हमको बोलता चुपचाप चढ़क लो, शक्कर की बोरी बोलता हमको। हम बोले है ऐसा बोल के। हाँ एक कौन नाम था उसका याद नहीं आ रहा हमको। हम बोले ठीक है भाग जाता भाई। जाते आते हम भी बोल दिए, क्या बताऊं मैं क्या ही बोलूं। अच्छा। हमने उनको बोला भाई साहब कि एक बार था तुम जो हमको तुम भगा रहे हो, हाँ। तुमने कभी बचपन में पान खाया है? तो बोलता हाँ भाई साहब खाया है। हमने बोला सच सच बताओ कौन सा खाया है। भाग गया हो है? हाँ मुझे पता है पानी का सीन है। FPP ड्राइवर TPP ड्राइवर है ही नहीं। रेटो रोक दिया आपने ऐसे चिल्ला के क्या बोला? ठुल्ला मेरे सामने ठुल्ला बोला। रोको हाँ। सर थोड़ा लेफ्ट में पुल ओवर कर लो। लेफ्ट में ओके। राइट में चुप रहना, कुछ बोलना मत, ठीक है? मैं आराम से टैकल कर लूंगा एक चुटकी में, चिल करो। नहीं बोलोगे, ये भी नहीं बोलोगे तुमने क्या बोला? ठुल्ला हाँ मत बोलो। हेलो सर। सर क्या कहना है? सब आइडेंटिफिकेशन में रन प्लीज। एनी रीजन फॉर द पुल ओवर सर? सर बिकॉज आप अगर घूमते फिरते जाके लोगों को कुछ भी बोल लोगे, आई माइट नॉट टेक ऑफेंस टू इट बट समवन एल्स माइट टेक ऑफेंस टू इट एंड I get everybody has taking offense, then I don't think so there should be a problem. No, see, I get everybody has freedom of speech and they can say what they want, but that still has some clauses that they have to think before they speak. So okay, so you got offended or something? I mean, if it was any other officer, he could have charged you for disrespecting of a Leo, because that is quite disrespectful. But but you've caught me on a good day, so that's why I would rather have a friendly conversation than you telling me that did I get offended or not. Because then I could abide by the law and actually like follow what I have to follow. Alright, here's my driver's license. Set. There you go. Denver Frank. Yeah.
वैसे वैसे आपने ये बोला क्यों? क्या मैं क्या बोला, मुझे ये जानना है। श्श्श। क्या बोला मैंने सर? कर रहा मेरे को बोलने नहीं देता। हैं? कर रहा मेरे को बोलने नहीं देना। चुप करो। Ma'am, are you all right, ma'am? Do you feel any form of are you feel safe with this person? Do you require any assistance from my end? आई एम सेफ बट ये मुझे बोलने नहीं Okay, देता you're है। safe, right? Okay, that's good to know. सर आप इनको बोलने क्यों नहीं देती हो सर? नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा बोल देती है ना कभी कभी ऐसे बातों में। तो लाइक तो थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि कौन है सामने, किसके सामने कितना बोलना होता है, यू नो, थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए, नहीं तो क्या पता फिर क्या मैंने तो डिसरिस्पेक्ट क्या आप करी नहीं। इनके लाइक पापा हो? नहीं क्या शुगर डैडी? नहीं ओ Wait, what? I mean, वो चीनी के पापा। I know what sugar daddy is. I mean, if that is going on between you, that is your personal life. I won't interfere in that at all. Okay, then okay. हाँ. Okay. So, sir, Let's keep that. Yeah, I mean that's between you all. I don't want to interfere in your personal lives and all of that. Okay. हाँ, so sir, coming back to that one specific word that you said, like घूमते फिरते चिल्ला के with this broken window of yours कि कोई सुन ना पाए. Why would you just go around here yelling those words? I mean, I just saw a police car out of nowhere and I was like, एक सेकंड, इस पे क्या लिखा है? Los Santos Police Department। सही है। मैंने बोला, so they are called police, aka ठुल्ला, ऐसा बोल दिया मैंने। I don't think so that's disrespectful. I mean, police को हिंदी में ठुल्ले ही बोलते हैं, तो it's just a language. I mean, if you have a language barrier, then no, I do have a language barrier. I mean, obviously, I'm not. My Hindi is not that strong as well, right? So of course. Okay. No, but the way not you in said a it, disrespectful way, but हाँ इनको बता रहा था explain करने में, क्या पता इन्हें नहीं समझ आए तो। भाई ये तो हमारे स्ट्रीट में बोला, पता नहीं गूगल वालों ने डाला कि नहीं, स्ट्रीट वाले बोलते। हाँ पता नहीं, हमारी लैंग्वेज है। सर कुछ अपडेट? आपका स्लो चल रहा है क्या? मैं 5G को नहीं। वैसे where you from by the way? I mean, what's up with all the personal information? Like आप कभी इंडिया गए हो? हाँ मेरे रिलेटिव्स रह चुके हैं। मैं नहीं गया मेरे। इंडिया में किधर? बिहार में बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। बिहार में पॉपुलर? मुझे लगा दिल्ली में पॉपुलर है। हाँ मैं दिल्ली बोलने जा रही हूँ। ये दिल्ली से है ना? हाँ बजन तुमने ठुल्ला बोला, उसने नहीं। बट इंडिया में होते होंगे ना, बिहार में होता है। बिहार में तो और मैं ठुल्ला बोलने जा रही थी। देखो यार, यहाँ ठुल्ला नहीं ऑफिसर। आपका नाम डेनवर है राइट? हाँ। डेनवर, आई वुड जस्ट गिव यू वन एडवाइस। हाँ। प्रॉब्ली अगर वो बात कर लेती, यू वुड हैव बीन फ्री टू गो लॉन्ग बैक। तुमने बात की इसलिए इतना खींचा हो। फ्री टू गो। अच्छा ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। है पानी खत्म ही हो गया? अरे यार
सर स्टेप बैक इन योर व्हीकल, व्हीकल में ही बैठ लो। परफॉर्म चैनल 11 ऑन अ ग्रे बॉलर ऑक्यूपाइड वंस, current 20 is the evangelico, no distance required. Yes sir. Sir please put your engines off. Yes sir. आप खिड़की नीचे कर दो प्लीज। Yes sir, it was already down. सर आपका ये वाला खिड़की, हाँ। Yes sir. Sir can I get some identification please? Yes sir, myself Barut Singh. Bharat Singh. All right, Mr. Bharat Singh, just inform me, this is Officer Jake Williams from the SASP. Yes sir. क्या मैं जान सकता हूँ कि आप गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे थे? सर थोड़ा रश था सर। रश आई गेट, बट उसमें ये प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, आपको भी चोट लग सकती है, गाड़ी को भी डैमेज हो सकती है। I understand sir what you're saying. सर थोड़ा रश था, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा ये गलती। जिस टाइम मैं आपको एक वार्निंग के साथ छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार इफ आई सी यू लाइक कमिंग अप द स्टेयर्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ सामने से रास्ता है, देन आई वुड हैव टू चार्ज यू, ऑलराइट? ओके सर, सॉरी सर। हाँ, as soon as my lights are off you will be free to go. ओके सर, नहीं सर मेरे को यहीं पे रुकना है। ऑलराइट, ओके, हैव अ गुड डे बालू सिंह। थैंक यू सर। सर बोलो बोलो। अभी आ ही रहा हूँ सर कपड़े पहन के। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? हाँ नहीं, शर्म भी नहीं आती थोड़ी सी भी? हाँ आ जाओ इंटरव्यू में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सर माफ करना सर, थोड़ा सर 1 मिलियन कर रहा था। नहीं आ जाओ इंटरव्यू में, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं विलियम सर। हाँ बोलो बोलो। राम राम सर। नहीं ठीक, मिलते सर, आप तोड़ दो। साला ग्राइंड कर रहा है पीडी इंटरव्यू के पहले, हाँ ग्राइंड कर रहा है पीडी इंटरव्यू के पहले। Time for. Four 241. 10-4. One 76 was Pucci BD. 10-4. 10-9. The 76. He said it's 70. 10. No, it's good. 476 to 19, code 2. Triple 2, same track. Do you live work? Of course. Everyone come to Chief's office. Confirm. 10-4, copy that. भाई इतना स्ट्रेस हो गया, ओ माय गॉड। हाँ मेरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है। सिगरेट चाहिए तुझे? हाँ मेरा सिगरेट तो थोड़ा उसका पूरा टबैको गिर गया। ले मैं देता हूँ। थैंक यू भाई इतना स्ट्रेस, माँ कसम। वैसे ये ऑफिस किधर है? ये ऊपर है एकदम ऊपर ना? हाँ शायद। भाई ये मेज है। Gang division. Server room. 99 at chief office.
99? इसका ऑफिस किधर है? क्या यहाँ पे है उसका ऑफिस? 7476. Where was the chief office actually? In floor. Tonight? But I'll be there. Just let me know if it is on the top floor. Need to EMS? 10-9? One of your like EMS is down. I mean, Miss Lian. So should I get her checked in, or you guys coming in? Why is he on this ward? radio? You're on PD radio. Oh my bad. पाब्लो वॉल गन कहाँ से दे रहा है? किधर से चला रहे हो? और ऊपर आओ, अच्छा ओके। टॉप फ्लोर नहीं, टॉप फ्लोर भी नहीं, ये है शायद। नहीं ऊपर आओ। और ऊपर है। है तू हेलीकॉप्टर से लेके जाएगा क्या? हाँ? फिर नीचे आओ। क्या चल रहा है? मैं बोला था इस रूम पे, कह रहा ऊपर आओ। आगे पाब्लो मेरा बस सेम है। कसम हेलीपैड चले गए हम। जॉर्डन है क्या? I don't think so. No. SSP 2 equal to LSPD chief, not above that. 222 back on radio 1 will be now 76 to 19. I actually had a EMS down in front of me. Sorry for that. आने दो। By the way, सीन ऐसे कि जितने भी लोग आएंगे वो एकदम अपने जो ग्राउंड फ्लोर है उधर आएंगे, राइट? तो उसके बाद से तुमको क्या ऊपर वाले रूम्स को यूज़ करना है? देन बेसिकली मैं एक्चुअली राज बाबू से बात कर रहा था, सो वो थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, वो आ रहा है शायद। ओके। उनको मैं समझा दूंगा पूरा प्रोसेस कि कैसे क्या करना है और ठीक है। बट हैव यू गाइस डिसाइडेड कि कौन सा रूम को यूटिलाइज करना है फॉर इंटरव्यू पर्पस? बस आई वांट दिस टीम टू गेट डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट टीम्स, ठीक है? ओके। सो दैट इट वोंट टेक दैट मच टाइम, पहली बात। अगर 2 डिफरेंट टीम्स के बाद सोच लो कि किसी को कुछ इमरजेंसी काम आ गया ना, अंडरस्टैंडेबल है। अगर नहीं होता है देन वी विल मर्ज इट टू 1 टीम, ठीक है? बट इनिशियल टाइम में हम लोग 2 डिफरेंट टीम में ही डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? ओके। एंड बिफोर दैट आई विल बी असाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटीज आल्सो। आई हैड अ elongated conversation yesterday with the state officials and I'll be segregating you people into different departments, into different responsibilities, but I'm just waiting for Rex and send it to come. Where is send it? It's not here, I guess. एक बार चेक देखो, कांटेक्ट करने की कोशिश करो। किया बट ऑल direct to Rex. What would be your ETA? ETA will be 30 seconds. I'm currently 76.
Meanwhile, how many people are coming? I've invited like 20, right? Yeah, I guess so. Yep, we invited 20 in the first batch. Doctors are facing any difficulties, like channelizing those reports and all? कुछ आया है उनकी तरफ से कुछ As of now, nothing response? from their end. I think everything is clear because even yesterday, me and Pablo got our certificates, and the process seemed quite smooth out there. There was no Yep. hassles and everything, so it seemed quite smooth. They're taking pretty good care of it, so I don't Alright. think any problems as of now. So I guess as soon as we get free also, we'll be going for a body checkup also. Yeah. Okay. Like we means like me The and remaining, you yeah. guys. Yeah. Also, I spoke to one of the doctors, and he just I went there for a casual conversation with them. I informed them that we generally work around our duties on Radio 1. So if they require any emergencies or any like direct assistance, which is an emergency, they can directly come to our radio and ask us. And likewise, if we have any requirement of any EMS individual, we can hop onto Radio 2 and ask them for help as well. Alright. And then meanwhile, in the upcoming days, we'll be having couple of meetings. Our first responsibility to ensure that the department is functional, and after that, as soon as we have some like free time, not free time, ये पूरा responsibility रहेगी recruitment and trainings whatsoever. ये पूरा cycle से हम लोग जब थोड़ा सा free होंगे, and we'll be having a meeting with the state officials and also the judge. Okay. ठीक है? Yeah, related to the law library and everything. कि जो भी हम लोग एक दो उस टाइम MDT का जो रिकॉर्ड्स वगैरह हम लोग ने बनाया है बराबर, उसको एक बार वेरीफाई करना भी पड़ेगा. लाइक वेरीफाई मैंने कर दिया इन द सेंस लाइक कुछ एडिशनल एडेड होता है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा. ठीक है. आई हैव सेंडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, दे आर वर्किंग ऑन इट. आई गेस सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं डाला गया है विच विल बी एडेड इवेंचुअली. जो चीज़ें अभी भी बाकी है लाइक सम ऑफ द like misdemeanor crimes and all. Got it. Yep, वो थोड़ा सा अभी बाकी है. $23.76. 23.76 है? गैराज आ गए हैं, ऊपर आ रहे हैं. अभी खोज रहे हैं. बहुत बड़ा है पीडी. Are you guys in chief's office? 10-4. 10-4 almost 76 clan. Alright, guys. So meanwhile, I'll tell you. याद है हम लोग जब इधर आए थे पहले दिन, like introduction days. Those two guys जो हम लोगों ने बताया था. Meanwhile, like Thank you for the 40. he said about like 2 or 3 like offices. Kevin, so we can't hear you if you're saying something.
Chief 07? Yes. Yes sir. यार मेरे को आने में लेटली वो लीनियर एज मैम की वजह से हुई, मेरी गलती नहीं थी। शी गॉट डाउन इन द मिडिल ऑफ द कॉरिडोर। अरे ईएमएस वाले ऑपरेशन करने में बिजी थे, दे वर नॉट, तो मेरे को बताओ, देखना अपना पड़ा। डॉक्टर ही नहीं देखा, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, तो मेरे को करना पड़ा ट्रीटमेंट। ठीक है। मेरे को लगा जेक विलियम्स में बोलेंगे कि तुमको ट्रीटमेंट आता है। मुझे लाइक ट्रीटमेंट आता मुझे है। क्यों पूछ रहे हो पर लाइक व्हाई? अरे आपको कूल वन ने बोला ना कि ट्रीटमेंट आता है तुमको, ऐसा बोलोगे इसलिए। नहीं यार, व्हाई वुड आई से एनीथिंग यार? अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इफ यू डिड इट यू डिड इट। व्हाई वुड आई क्वेश्चन योर कैपेबिलिटीज? वैसे जब तक ये आते हैं, वांट टू जस्ट फिगर आउट वेयर वुड वी टेक द इंटरव्यू। ये मैं भी सोच रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम जो है वहाँ पे उसको वेटिंग रूम की तरह यूज कर लेंगे, एंड ऊपर जो केबिन्स है उसमें 2 जगह सेग्रीगेट कर लेंगे। हाँ भाई, मुझे बस एक चीज का डर है, जैसे हम लोग ये ऑफिस ढूंढ रहे थे, आवाज एंड इसने किधर से तो बुलाया, इन्होंने हमें टॉप फ्लोर से बेसमेंट में बुला दिया। तो वही है। तो लाइक व्हाट वी आस्क, एक हेलीपैड पे लो, एक बेसमेंट पे लो। हेलीपैड, तो वही दिक्कत हुई। हेलीपैड पे मत लो, एक इस ऑफिस में ले लो। यहाँ पे एक वाइट ये शीशा वाला केबिन है ना, वहाँ पे 3 लोग रह सकते हैं। ऐसा करते हैं, एक सबसे टॉप पे और एक सबसे नीचे। अरे कम विथ मी। सुन रुको, सम्मत आना। Can one officer go to that where all the chairs are kept at the ground floor? देखो, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और एक नीचे के एकदम फर्स्ट फ्लोर पे ले लेते हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। रेक्स तू यहाँ पे ही रुका, एंड तू दूसरा, एक्चुअली मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तो वो दूसरी जगह पे जाओ। नहीं, मैं यहाँ रुकूंगा। ओके, फिर दूसरा जगह घंटा तेरा ऑफिस है। मैंने क्लेम किया फर्स्ट डे। अरे क्लेम में बाहर में गया यार, हम सब ऑफिसर्स अभी के लिए कोई क्लेम कुछ नहीं करेगा। तू पहले मुझे बता दूसरा किधर है। मैं हाई कमांड हूँ, तुम भी हाई कमांड हो। कौन बोला ऑफिसर है? अरे वही यार, हाई कमांड ऑफिसर। हाँ तो बता अभी नेक्स्ट ऑफिस किधर है? नेक्स्ट ऑफिस नीचे के 3 फ्लोर्स पे एसआई ऑफिस है। भाई ये मेज है भाई। I'm there. Then for Rex, just like without talking on the radio, just have a conversation where you're standing. Yeah, I'm having a. I'm speaking right now. In the count of 3. Hello, what is your name? Is your name Jake Williams? Jake Williams, can you hear me? I'm speaking normally. 10-4, I can hear you. I can't. Okay, so that spot, one spot is good, but we have to find a second spot. I'll just try to see. So one spot is fixed, na? Mine one and the place where gym is. 2 spots. No, where gym is, that is where all the officers will just be waiting. Like that's the waiting area. Ah, okay. Okay. So one spot is done, waiting area is fixed, and one place for taking interview is fixed. So we need to find the other spot. Sorry I think we should. But later chief is 10-4, 76 back up. Yeah, 76. Mr. Dash, he will be joining us. Yeah. Mr. Dash. He will be helping you guys, and ensuring that people maintain discipline over here. Yeah. Where is Alright, he? Call him as well. Yeah, he's on his way. Yeah, he's coming. I can hear his footstep. Anyways, so meanwhile, I'll just briefly explain you. So as he mentioned us like related to different not departments, like offices. Like the state is actually interested to channelize those offices as a working office also, like जैसे हम लोग इसको utilize कर रहे हैं right now
दे वांट कि बाकी सारे जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जितने भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए, उसको यूटिलाइज किया जाए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल बी नॉट डिवाइडिंग, मतलब उस हिसाब से नहीं, बट या सेग्रीगेट कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से द एंटायर सैन एंड्रियास स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को 3 डिफरेंट डिवीजन में, डिफरेंट डिवीजन का डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, which I'll be eventually inform you guys. That would be one who the officers will be patrolling inside the city mostly. City in the sense like city of Los Santos mostly. They'll look after the crimes that is happening inside the city. Those will be the Los Santos Police Department. They come under Los Santos Police Department. And Pablo, you and I guess Jim. Yes, Jim. Yeah, both of you will be responsible for the same. I'll be updating uh, your job role as well as your data on the database. Meanwhile, according to regarding the batches and all, I'll tell you everyone कि वो batches वगैरह एकदम after what say selecting the candidates, maybe what say उनके इंटरव्यू के हिसाब से जो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा या फिर जो भी उनका जॉब रोल मिलेगा उसके हिसाब से जब हम लोग मेरे को देखने को मिलेंगे कितने सारे ऑफिसर्स हैं, उसके बाद ही सबको बैजेस मिलेंगे इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. ठीक है, ओके. बिकॉज मेरे को ऑर्डर देना पड़ेगा, प्री मेड नहीं हो सकता वो चीज़. Cool. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट which will be nearest to LSPD offices. Consider this as a LSPD office for now. Okay, and also we'll have one more office near Davies Avenue, as you guys already know. If you wanna see, you can see later. एक सेकंड. यस मिस्टर दाश, आप एक काम करिए, आप वेस्पुची पीडी आ जाइए. वेस्पुची पीडी के रिसेप्शन में वेट करिए, मैं 5 मिनट में जा रहा हूँ उधर, पहुँच रहा हूँ. ठीक है. यस. Next would be we have a park ranger office. I know this subdivision will be responsible to look around the maybe out like depending on the areas लोगों को भी नहीं where पता, animals लोगों को भी नहीं पता. are roaming around, where people are trying to hunt down the animals, trying to harm the animals. मैं लोगन को बोल दूं, मैं आके बता Maybe दूं the सबके wild रूल्स. areas. You guys might need some good protection अब also. तो at लोगन this मैं ही time. आके बता देता हूँ, We'll टेंशन add मत in ले. I know something, this. and I want Rex to step up and ensure that you're gonna handle the department thoroughly. And after that, we have an office at Sandy Shores. I don't know आप लोग में से कितने लोग उधर ऑफिस में गए हो. This Sandy Shores and also Palito. There are like 2 office, and this entire area would be considered under the Blaine County. And you guys gonna call yourself as a sheriff, like that would be BCSO department. I want obviously Jordan is not present, maybe due to some other reason, but yeah, Rave and Jordan, you guys gonna handle the department. Depending on whatsoever तुम्हारा जो भी requirements होता है उसके हिसाब से you need to actually select the candidates among yourself. Meanwhile, me and Jake will be thoroughly observing the entire departments as a SASP member. Although like हमारे responsibility रहेगा to ensure कि आप लोगों को ये 3 डिपार्टमेंट जो मैंने डिसाइड किया, मतलब डिवाइड किया, नॉट डिसाइड किया, इन 3 डिपार्टमेंट में अगर कोई भी इश्यूज होता है वी विल इंश्योर कि कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करें आप लोग. और अगर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो विल स्टेप अप एंड विल ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है. एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? Negative. Nope. Not as of now. Okay. Jake, you will be with me as a trooper, as a Alright, ASP sir. trooper. And I'll be updating one by one your job role. There will be one guy. One by one, you guys can come. I'll ask Pablo to come first, and I'll be requiring your state ID. Yeah. $94. There you go. Right.
And here's my ID card. Alright. And one more thing guys, और एक चीज़ मैं exactly सोच रहा था बोलने का पर बोल नहीं पाया था, मैं एक बार बोल देता हूँ. Mean until and unless we do have proper weapon license, no one is allowed to use any weapon. ठीक है? Okay. Yeah. I understand कि yes we have like enough weapons in the armory. That doesn't mean we need to take them out. ठीक है? There is no like necessity नहीं है अभी के लिए weapons की. ठीक है? This weapon license will be done by judge itself. ठीक है? Like in a maybe in a day or Jake, two. you have some water? Okay. So yeah, One second. थोड़ा सा wait करना पड़ेगा उसके लिए. No, I don't. Meanwhile, you can carry a taser. Rex, Although you have that water? doesn't give you the right to randomly taste Rex. people. ये भी check हाँ. करना, ठीक है? Done. And he was just yeah, Pablo, can you please check your job? I've just updated on the like portal. Yeah, give me 1 sec. वैसे I have a question about Yep. this weapon Done. license thing. Yeah, बोलो. So खाना भी दे दो. I mean, I learn as I go, right? So I used to be under the same concept about the weapon license, where a officer to carry a gun requires a weapon license heavily. I was always on that same concept. But then on the other hand, there's also a counterpart to that, is that we are, like, if we are on duty, our government badge of being a Leo allows us the access to a weapon. And however, if we are off duty and we are still carrying a weapon, then an officer off duty would require a weapon license. So, I mean, trust me. Yeah. I'm not saying that we should carry a weapon. I'm saying obviously we don't need a weapon right now because I mean there isn't a really strong requirement. But it was just about the weapon license. Because that would be done. That's why I like focused on the word that would be done on the urgent basis. I'll tell you why. If you would have the badge where we can showcase that we are the officers, the front party gets to know that we are the officers. Like for an example, it's all about the documentation part, right? Yes, sure. जैसे हमारे ID cards हो गए and all, driving license हो गया, we know how to drive, we know everything, but still we carry our driving license. Why? Because the state says you have to follow some simple rules and regulations. So why? Like even I'm not also carrying, but yeah, that would be done really in a day or two. That's what I'm saying. Already had a word, so वो हो जाएगा. उसको लेके tension ना करो. But that would be done for us only, not for the people who will be joining us in the next days. Got it. वो उनको तभी होगा जब उनका badge मिलेंगे उन लोगों को, ठीक है? After trainings and everything. Anyways, after this, I would be asking Jim to come, please. Jim, what would be your state ID? Card. It will be 233. Yeah, can you please check your job? Yep, done. All right. Okay, next I'll be asking Rex to come. Yep. The state ID. 189. Someone. $189, right? Yep. Yeah, check. Yeah, got it. Okay. Reeve, can you please come? Yes, sir. State ID. 225.
check your job. That would be updated. Yep. Got it. Thanks. All right. Yeah. And Jake, come. Yep. State ID. 187, and here's my ID card as well. Check once. Yep, got it. Got it? Yes, sir. ठीक. So we'll be dividing ourselves into two groups now. I'll be informing. मतलब मैं join करूँगा obviously तुम लोगों को. But before that, I'll be explaining everything to Mr. Das. Okay. Meanwhile, you guys decide किसको किसके साथ रहना है, ठीक है? कैसे रहना है, रहते किसको किसके साथ नहीं, कैसे रहना है, and कौन सा room पे तुम लोगों को different room पे So जाना है. we figured out one room. I mean, we figured out that the main waiting area is where all the candidates are. No, the thing is, the only issue that we are facing is what we are figuring is that these floors are too thin. So we don't want we don't want any questions you're asking to one candidate for the second candidate to find out about those questions. So that's why we're just finding certain areas around the PD where the walls are not too thin. So there won't be any. 100% sure. अब हम लोग इधर जो बात कर रहे हैं वो नीचे वालों को सुनाई नहीं दे रहा है. वो confirmed है. So we found two spots. One is एकदम नीचे and one is another office on the right side here. But now we are finding a third spot so we can conduct 2 interviews at a time and just seeing, and we're testing that out whether the voice leaks or not. बस वही देख रहे थे हम लोग. Meanwhile तुम लोग वो decide कर लो. Meanwhile in the meantime मैं एक बार नीचे जाके बाकी लोगों से एक बार बातचीत भी कर लेता हूँ. And what I say, मैं दाश बाबू को एक बार समझा देता हूँ उनका responsibilities for today. ठीक है? Yes sir. All right, चल. And by the way, everyone, you guys can go off duty, or they can stay connected in a like particular what's a radio. वन पे रहते हैं. What do you guys say? Yep. हाँ वन पे रहते हैं. ईएमएस वाले कहीं कुछ बैकअप का कॉल दिया तो क्या पता. मतलब लेके बहुत घूम रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग. हाँ देखा था मैंने लोगों को कूट रहा था. Like you had said this room ना? Yes. This is one room. ग्राउंड फ्लोर वेटिंग एरिया. अभी सेकंड रूम किधर करें वो थोड़ा दिक्कत है. तो मैं आइडिया दे रहा हूँ सेकंड रूम के लिए भी दे रहा हूँ. मैं और जेक भाई साथ में लेंगे, तुम 3 साथ में ले लो. गुड है. ओके. नो वरीज. थैंक यू फॉर द 1 गिफ्टेड मेंबरशिप हर्ष. थैंक यू सो मच. आ जाओ इधर आ जाओ. अरे आ रहा हूँ ना, दूसरा रूम दिखाता हूँ. इधर आओ, कम विद मी. नहीं ये नहीं इसके नीचे वाले फ्लोर पे, इसके नीचे वाले फ्लोर में. सॉरी. देखो दूसरा रूम होगा दिस वे. इसमें कौन सा है? हाँ क्लासरूम में यूज ले सकते हैं. वो क्लास वाले ऑफिस में जा रही है क्या? ये आवाज ग्राउंड फ्लोर पे जा. यहाँ पे बोल रहा है गैंग डिवीजन में नहीं. गैंग डिवीजन नहीं, सॉरी गैंग डिवीजन नहीं है. नहीं ये डाइनिंग रूम और जिम है. I mean as of now we can utilize any room for whatever because it's just for like there's no set up department ना. ये जब कहीं पे भी ले लो फिलहाल. सर्वर रूम है ये तो. हाँ तो गैंग डिवीजन में ले लो, नहीं तो क्लासरूम 1 में ले लो. ये क्लास वाला जो ऑफिस है इसमें ले लो. हाँ इसमें ले लो. Guys I'll just go to that main office. Yeah, we'll go to that room. Yeah, go to that room and say normally, not shout. Just say normally. I'll let you know. And one officer also and Jim, go can to the you go to the area. waiting room? Yeah. Any of you can go to the waiting area. I'll be staying in this classroom and speaking normally. Jake will stay at the normal, like the upper one, and be speaking normally. And one officer go at the waiting area. I'm going wait. I'm at the topmost room. 10-4, thank you. I'm inside the office room, second floor. It's the first floor, sorry. I can hear Rave. Are you talking normally or are you whispering or are you loud or what? Normal. I can hear you very faintly, like come aa raha hai, but I can I'm hear down. Okay. Can you hear me? 10. 10 from my side. I mean, no. I'll speak after 3 seconds and let me know if you can.
can't. Can't hear you. We can whisper, 10-4. right? No, I was not whispering. I was speaking normally, you know. No, I'm just saying that we can whisper when we. So. Yeah. Spell But if the candidate is far, then you'll have to like repeat, ऐसा, you know. Okay, Rex, I'm going to just generally talk. Let me know if you can hear me where you are, okay? Hello. Yeah, Rex, can you hear me? Rex? Officer Rex? Oh, सुन सकता है क्या? Oh, I mean, Officer Rex. Could you hear me? Negative. Perfect. Yeah, otherwise we can also do like. We got 2 rooms for the interview and the waiting area as well. And is Jim okay or is he really down? He's downside. I'm okay. I mean, I thought you were down in the sense you were literally down. No. Whisper करके लेंगे ना. अभी आपको आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है. We got the rooms right. बस हो गया फिर. बिल्कुल. हाँ ठीक है. चलो हो गया. 10-4. 2 rooms done. Actually, we got 3 rooms now. जेक भाई. ओ जेक भाई. सैलरी कितनी आ रही है बताओ. देखो खाने तो एक बार देखना पड़ेगा. अभी तो आई थी. अब लोग कितनी सैलरी आ रही तो आएगी कैसे? देखा नहीं मैंने, देखना पड़ेगा. ऑफ ड्यूटी में भी आ रही है क्या सैलरी? ऑन ड्यूटी है हम तो. हाँ कर We सकता can हूँ. decide it 2 rooms. 10-4, sir. Okay, it's upstairs, right? 10-4. Classroom 1 and 2, and as well as 2 other rooms as well. We got 4 rooms, by the way. वेटिंग्स करते सैलरी की, देखिए कितनी आ रही है. सुनना we need either a sheet or a channel where I already did a sheet. He did. अच्छा है क्या? उसी पे ही एक और वो बना दिया. देखो इंटरव्यू का सेक्शन बना दिया और उनका नाम भी डाल दिया मैंने. I'm too fast, bro. You know. Too good. Where are you guys right now? We are the first I'm at classroom 1 right now. Second floor, I think is. जरा देख के आता हूँ मैं नीचे कौन आया, कोई नहीं आया क्या? कितना स्ट्रेस हो रहा है मुझे, सर घूम रहा है मेरा जोर जोर से. तो वीरो थोड़ा कम गुलू करो ना. गुलू से स्ट्रेस नहीं होता है, गाड़ी चलाने से होता है. यार क्या बोल रहे हो? नहीं यार, गुलू से भी होता है. सिंगल लाइफ में नहीं होता है, डबल लाइफ में होता है. सारा रिवीलिंग दे एरिया कर दो तुम. रिवीलिंग दे एरिया क्या होता है? लोग सच बोल रहा हूँ. ठीक है. वरना हमारे एक भाई कुछ सिंगल क्यों है? $650 आ रही है सैलरी. क्या बात है? मैं देखा ही नहीं फिर से यार. चलो मेरे को वही वेरीफाई करना था. सेम ही है. हाँ. मेरा कितना सैलरी आ रही है? What's the third room except classroom 2 and 1? The third room is near the room near the chief office and the room just below that room actually. We have classroom 2 and 1 also, right? Yeah, 10-4. कितना सैलरी आया था यार? एक ऊपर वाला सेम इनको कर रहे हैं. विस्पर करेंगे बस. एक अभी वॉल बैंग मारता हुआ आ रहा है. नॉर्मल पे ऊपर जा रही है आवाज. But Rave, I can hear you from here. Yeah, I'm talking normal. Okay. And whisper. You guys will whisper. 10-4. Got it. क्या है भाई, स्ट्रेस तो जा ही नहीं रहा. गंदा ये वाला इसके एक ऊपर वाला. Interesting. मतलब 4 रूम है या बस 2 ही है? 2 ही है सर, दोनों में. क्या आई नीड टू गो, मैं आता हूं थोड़ा. मतलब सर और एक बार मेरे को दिखा देना. कोई 4 दिखा है ना? मैं जाते वक्त आपको दिखा दूंगा. तुम लोग डिसाइड कर लो. देयर आर ऑलरेडी पीपल वेटिंग, सो आई विल बी टेकिंग देम वन बाय. One is this room. Waiting areas where all the chairs are kept down. Yes. And वो second room, वो second floor पे जहाँ पे रेक्स तो किधर खड़ा था? At the start. मैं. At the start, yes. Start in the sense.
इसके नीचे वाला है गेस। आ जाओ वो रूम पे आ जाते हैं। तो ग्रुप क्लासरूम डिसाइड कर ले कैंसिल क्या कर रहे हैं? कौन ले रहा है, सेग्रीगेट कर लो। छोड़ो क्लास, हाँ कर जय हिंद ऑफिसर। U3 एंड me and Jay। जय हिंद सर। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट चीफ? ओके चीफ तुम्हारे साथ है। May I come in? थोड़ी देर इधर जिम भाई चीफ हॉप कर। और डायरेक्टर ऑफिसर Rex, can you just show me the location of the second room? 10-4, come with me. I'm at the stairs. 10-4 simple। पीडी बहुत बड़ी है यार। आ जाओ, इधर हो, ये देखो इधर आओ, एक और फ्लोर नीचे आओ। आ जाओ, देखो या तो वी कैन वन गाय अदर ग्रुप विल टेक केयर। यहाँ मुश्किल है, यहाँ आवाज आएगा। हाँ नहीं तो देखो नहीं विस्पर पे नहीं आ रहा और वी कैन हियर अदर्स क्लियरली, या फिर देखो एक इधर लेंगे और एक इधर लेंगे। सही होगे, कुछ करोगे नहीं तो थकोगे ही। ठीक है डन से। ये वाला रूम था ना? हाँ एक ये रूम और एक ये रूम। दिस इज फर्दर अवे, ये वाला सही है। या सही है। ये दोनों में पैरेलल भी ले सकते हैं, पता है आवाज नहीं जा रही। ओके कूल, देन ये दोनों यही नहीं ले लेते हैं। एक्चुअली विल कीप इट ऑन नॉर्मल एक्चुअली, पता है नहीं एक्चुअली ना विस्पर पे ना वो होगा, थोड़ा भी तुम दूर नहीं रह सकते, चिपक के खड़ा रहना पड़ेगा। वो भी है, वो नहीं वो बेकार है, थोड़ा बेकार है। हाँ तो इसलिए यू गाइस टेक केयर, हम लोग ऊपर ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ठीक है डन। अरे तो गया, आज मैं और तू लेते जिम, आने दो लोगों। चीफ को ले लो साथ फिर। मैं एक बार नीचे देख के आ रहा हूँ, मुझे दिखता है कौन कौन है, कौन नहीं। आई वांट टू ऑब्जर्व। अरे ओ माय गॉड, तो हम भी इधर एक चीफ हैं, कितने चीफ चाहिए? बच रहा है। 4022 केविन सर। Bro, walk like cop 3, you know, it will be good. Like if you wanna join us, we are at classroom 1. 2 floors down your office. ऐसा बताना पड़ता है, क्लासरूम 1 खोजते खोजते। यहाँ पे हाँ वो बंदा है ना जिसके पास ब्लू बाल है। हाँ अभी भी उसको पुल ओवर किया, वेंजेलो की सीढ़ियों से गाड़ी चला रहा था। किससे चला रहा था? वेंजेलो को, उसको कुछ बेच रहा था उधर, वेंजेलो को के सीढ़ियों से गाड़ी ऊपर लेके जा रहा था। The guy in blue hair? हाँ। Oh my god। कोई नहीं, इंटरव्यू में भी देखेंगे ना थोड़ा, अगर हमारे पास आया तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 people so far। है? नहीं गलती से। I mean Rex, Jake and Rex, are you guys in your designated room? we'll be there in 2 mics. Oh, okay. Was getting some food and water from the vending machine. Yeah, you'll be in the glass door rooms, right? 10-4. Offices. Yeah, okay, fine. I'll be sending guys one at least for now, as I believe Pablo and Jim is ready, right? ब्रो यहाँ तो पानी का वेंडिंग मशीन कहाँ है? आजा। अचानक से थॉट आए। Oh, this one, yeah, okay. ये जिम खुद का नहीं लेता, हर समय मांग के पीता है। That's fine। मजाक कर रहा हूँ जानबूझ I get it। देखो यार, अभी जिंदगी ना, रुको, अभी जिंदगी अचानक सीरियस, हाँ जिंदगी अचानक सीरियस हो गई है। आपस में तो हम लोग कर ही सकते हैं, सेम वो है। हाँ ट्रू। आपका ऊपर जाना होगा, he will be actually assisting you guys। कहाँ पर?
Yeah, this way, Jake. ऊपर के लिए. मुझे एक बार आर्मी जाना है. आर्मी जाना? हाँ. क्यों? बॉडी कैम. मेरे पे है. राज बाबू आप एक करके उन लोगों को ले. I'll be recording the interview as well through my body cam. I've taken it. Yeah. मैं क्या बोल रहा हूँ बलराम जी, बताओ आप भी आगे जाके बैठ जाओ, फिर टाइम से होके आप सो जाना. अरे ना गाइस देखो टॉप राइट 101 एसएसपी ट्रूपर मिस्टर विलियम्स. देखो गाइस, यही चाहिए था लाइफ में. Pablo, get some food and water for me. 10 crore. You can get it from the ground floor vending machine, you know. Reception. वेट करो इधर. Okay. अबे किसने नहीं देखा? Rex and I are also in the room. Alright, I'll be sending one more. What was the salary, Rex? क्यों बताऊँ? You tell. I think the same only. That's why I'm asking. क्या पूछ? 650. है मेरा कम है? अरे तो you're not chief ना? Oh. 3 star, 5 star में enter होता है. कितना है? 630, 620. रुको फिर देना पड़ेगा. I think it was 560 or something. हाँ तो 3 star और 5 star में अंतर होता है ना? और 4 star में sorry. I'm 4 star, you 3 star, you know. But still you are a trooper तो ठीक ही है, मतलब एक ही rank. ठीक, high command. हम तो पागल हैं. Yeah, what will it matter to you anyways, huh? वही तो matter करता नहीं है. Anyways, I'll be giving more time to PD. I mean, you will be handling the more official stuff, ना trooper ऐसा बोल रहा हूँ. On field तो ज़्यादा मैं रहूँगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ. So guys, now we have a good watching. Can you guys complete my challenge? Will you guys complete my challenge? Promise करो if you all will then only. मेरे को interview देना है. We have to get someone 250 subscribers. तुम लोग कर पाओगे? शायद तुम लोग कर पाओगे? 250 subscribers. अच्छा, before this person comes, मैं जल्दी से काम करके आया, ठीक है? Okay, Rex, so. हाँ बिल्कुल. Just give me 1 second. बिल्कुल. Guys, यहाँ पे जाके ना. मैं उस तरफ चला जाता हूँ. Stay this side, I'll stand this side. Chair. देखते तुम लोग मेरी बात मानते हो कि नहीं, but let's see, okay? May I come in, sir? Yeah, sure. Yes, sir, you can. Just give me 1 second, alright? Can you hear me, right? Yeah, I can hear you. Yeah, I said if you want, you can sit. If you want, you can directly be standing. We'll be standing anyways. So whatever you are comfortable with. I'll stand with you, no worries. Oh. Your voice is too low now. You can hear me, right? And now I can hear you. Guys, on face cam, okay?
Okay, So, what's your name, by the way? My name is Benji Rossi. Is everything fine? Yeah, everything is fine. Alright, Just thank okay. my listener. Oh, okay. Your name is Benji Rossi, right? Yes. While I quickly open up, have you got your like resume and medical certification with you? Yes, that's actually a soft copy. Yeah, you can just email me that soft copy, no worries. You can use your phone and just drop Can me I do that it one right email. now? Yeah, that would be better if you do it right now. Okay, I'll be putting you an email. Guys 12k करना है, guys 12k करना है. Guys 12k करना है, मैं नहीं मानता, ठीक है 12k करना है. Can you please check your mail? Yeah, I've got your resume and I've got your medical certificate. While I just glance through it, like, can you just like tell us something about yourself? So my name is Benji Rossi. I'm 24 years old. Worked back then in the Crompton Sheriff Station, but had to shift from there to Los Santos because of some issues in that sheriff station. Because वो जल वल गया था वहाँ पे, वो इसलिए वहाँ पे shut down करना पड़ा, and family reasons की वजह से भी, so I had to move to Los Santos. So I just don't want my degree to get wasted. जो भी मैंने मेहनत करी आज तक in the West Point or my law degree from Harvard, from anywhere. So I'll be. I thought to apply for the SASP. Okay, and you said that like that thing got burned down or something, right? Yeah, actually, yeah, that too got, the fire station got blown up. Yeah. So then, sheriff station. I apologize to hear about that. I do feel sad about that. But then, why would you come to like Los Santos out of all the places? There are like a lot of places where you can utilize your skills, utilize your like whatever achievements you've made, and actually execute your duties. So why here? Actually, there is every according to me, every place has some aura and some positivity or anything. And if I stay at the same place, I don't feel I would be in the max of my positivity or my mindset. So I had to get out from that room. So if I've just shifted to another place, that would have been Los Santos. And by chance, the recruitment got started over here. So I just applied for the recruitment, like for my job and the SASP. Okay. So, I mean, since you said you have done your duty before and all of that, like, can you like just tell us in brief as to like what all did you do or how do you execute your duties or what was your normal day like? In my duty hours, I would say my upper hand would have been always in the report making and paperwork mostly of the department. I have never neglected that over there. And I had a bit better than decent driving skills and combat handling situations. But I would say my paperwork and reports were pretty better than other in the department. Okay. So I'll just give you a brief description of how we are subdivided here in Los Santos. All right. Okay, so we have the SASP, that is the entire state, San Andreas State Police. Under that, there are 3 sub-departments. Those departments are the Los Santos Police Department, the Brains County Sheriff Office, and the Park Rangers. They all 3 are led by different officers and different teams as well. So currently, like if you're seeing out here, me and on my name Jake Williams, on my right Kevin Butler, we are from the SASP, and Rex Davis is from the Park Rangers. So if eventually this interview does go well, and eventually we feel that you are capable of working with us, and you do eventually get selected, if you had to look at working for one of these 3 specific sub departments, what would you have any preference? So as I said that my upper hand was always in the paperwork, and I feel that the city area requires a more paperwork and report making because on analyzing what is going on. So I would say LSPD, but because I feel the other 2 ones are about like the ones who scout a bit. That is one of the main things, and if those departments require me, I'll be ready for them as well. So I just want to clear it out just in case we feel that there might be other officers who fit that job more, and we feel that if you do get selected and we feel you're capable enough and we assign you to either say BCS or Park Rangers, you would be okay with that, right? Definitely.
Sorry to interrupt, Jake. As you also mentioned something about being in a sheriff department or something, so why not that than LSPD? Just a change in preference, maybe because of whatever happened over there. Got it. Nothing serious, but yeah, I see. I won't mind कि अगर if I have been sent to the ranger station or the BCSO, it won't be like कि I'm declining or rejecting or opposing the decision. But yeah, I would really prefer LSPD because of the paperwork upper hand, which is definitely better for the department as well. Well, I'd really like to ask a question. What is your vision as a police officer? Vision towards? Yes, towards serving the city, obviously. Vision. What do you Uh, think? What are our responsibilities? what I feel is that to keep the city peaceful, performing proper duty, and handling the situations better if they go south. Trying to learn as much as more from my department only. Making my skills better in each and every field of the from each and every officer of the department. I would say that would be one of my visions. Some of my visions actually. I ask you, like, what skills is necessary, like, are necessary rather, in an officer? कौन सा skills necessary होते हैं? If In I being ask you. a proper officer. Being a police officer, yes. I feel the majority one is that since we are law enforcing officers, so first of all, each and every law should be clear in our mind. We should be physically fit, as it is mentioned in my medical certificate also that I'm perfectly fit for this job as well. I say if we are physically fit but we don't have any evidence, so I think we should be proper with our paperwork as well. That these are the things which I feel are the most necessary for a police officer. If things are not in format and if these go on, that means that you are not fine for the police officer. The main things are the evidence, and you're physically fit, you can handle the situations better, you're polite to people, your first weapon is your speech, that's it. Right. Okay, guys, Taking the continue. calmest decisions in every situation till the end. Vrinda, are you in my chat by any chance? Until nuisance formed by other parties. Okay, so I just want to understand, since you said you are good at paperwork and all of that stuff. So obviously you're aware about things like an MDT, right? Yes. So just think of any situation you've dealt with in life, whether it is like, it could be anything. It could be as small as a traffic stop. It could be as big as somebody trying to rob someone. So if that suspect was got into custody and you have to start making an MDT, just like run me through what you feel would be the right way to actually initiate the process. By the process, I do not really mean writing down the MDT, but I mean, what all would you keep in mind out there? How would you deal with the suspect? What would you do? So you want to know how would I make the paperwork, right? Yes, how would you eventually go on the paperwork? So first of all, in our device, which is given by the department, that which is called NDT, right? So first of all, mentioning about the criminal, the name, the crime by them, items confiscated by them, and these details at what was the major crime, the charges on them. Then you leave some space, you go write the subject about it, write about the crime, when it happened, what was the main thing, and just go down, leave some more space, write the proper debrief about it, that what was the total situation, then mention the officer's name who were there, mention all the evidences collected by the situation officers, and yes, put on the correct charges on the person, asking them that do they plead guilty for the same. I would say that would be one of the for good ways to deal with a criminal. Okay.
Tell me one thing. Like, I mean, this is probably since, I mean, I think you should know this since you have done duty before, but it is one thing that confuses a lot of people, whether they are experienced, inexperienced, or however they are. What is the difference between reasonable suspicion and probable cause? So reasonable suspicion is basically a doubt in the mind of the officer that this person has either done it, या करके आया है, कर रहा है या फिर करने करेगा. Reasonable suspicion and probable cause is that when you have the proper evidence on a person. This is the difference between them. Suppose that there was a burglary attempt in some area and there were like 5 to 6 people around, right? And so I would just have a reasonable suspicion on them because as they were near the places. But if I see maybe the camera footage of I see the person coming out of the house and I get the evidence in the proper time, and since I have the proof, everything, that reasonable suspicion has converted into the probable cause, or maybe the person tries to flee away. So that reasonable suspicion converts into the probable cause, and I can arrest the person. All right. Okay. Also, tell me one thing. I was going through your resume as well on the side while asking you these questions, and you've mentioned in your resume that you feel that the abilities you have obtained while you've commanded situations, while you've worked on your previous job, you feel that if these abilities and the experience that you've gained, you believe that these, if taught to other individuals, it can help them improve their duty as an officer. This is what you mentioned, right? Yes, sir. So do you think that you are a good person to train someone else? Like, do you think you have those capabilities in you that would allow you to actually make someone else a better officer? I would say that I feel there is no inferior or superior thing in this. But if I feel that someone junior my rank and if I have some capabilities in me, suppose if that I said paperwork, right? And if I'm able to teach them, yeah, it's nice. And maybe if I learn better things from my seniors or juniors, that is also nice. And in some areas, yes, I think I can train a person a bit according to the following the SOPs and everything, which I would say would be the paperwork. Okay, so do you by any chance know what the term FTO means? Field training officer, right? So what, according to you, what is like the duty of an FTO? To basically train the officers. But sometimes it's also like that you got to follow the hierarchy. If you can get the answers from nearby only and they're correct, right? FTO verified. So I feel that going each and every, it's nice to go to FTOs and bringing your concerns to them, but if you can solve it or get the answers from your colleagues as well, that is also fine. No negatives in that. Okay, since you mentioned about FTOs and other colleagues actually solve it out, I just want to understand, as per your understanding, what is chain of command and how does someone follow that? Chain of command is basically respecting the hierarchy and not directly approaching the high command or the seniors, but first of all asking your subordinates or one rank above. Suppose if I am an officer and I have something against someone, or maybe I have some confusion or any doubt in my mind or any complaint in my mind, I will not contact any of the high commands for that. I would just basically do inquiry from my one rank superior, I think, which is senior officers, right? So yeah, so it's just basically respecting the hierarchy, what is going on, the rank system and everything. That is chain of command. All right. Okay. I'm going to ask you two more questions, and I'm going to just see if Kevin or Rex have anything to say, and then I will go to the last segment of this interview. Okay. All right. So, since I have seen that you've commanded a lot of shootouts as per your resume and all of that. Just for my understanding, because a lot of people have a variety of meanings for this actual term, and I just want to know what you have been taught under your department. So, what is the actual meaning of the term code red? So code red is basically an area. It is not a situation or anything. It is just an area where which is announced by the EMS as well, where where a situation or maybe some blood related things are being done. That is a code red area. Code red is not a situation. It's just an area or a radius around.
All right. Okay. And the last thing that I want to just understand from your Can you end. hear me? Yeah. Am I audible? Yeah. Huh. Now. Yeah. I heard Not you. said I a heard LAN you. support I heard email. you. Yeah. I heard you. I heard you. And I just want to know, like, see, there are a lot of people who will actually commit a crime, like you mentioned about reasonable suspicion and probable cause. Sometimes sometimes your reasonable suspicion could turn into probable cause that would enable you to arrest someone, right? But Yes. sometimes you might not have appropriate evidences to actually arrest someone. So, what would ideally you say is the difference between actually arresting someone and instead of arresting, actually detaining someone? Sorry, can you just repeat the question? I said, what would you say? What according to you is the difference between arresting someone and detaining someone? Like, when would you actually arrest someone? When would you detain someone? I would basically arrest someone when I feel that when I have a proper probable cause on them, and detain once I have the reasonable suspicion, and cross question them what they were doing in the scenario. And I got to tell the Miranda rights in both of them because I won't take away their freedom of speech. Okay, so you know about the Miranda rights, right? Yeah, yes. All right. Kevin, sir, like, sir, do you all have anything to ask in terms of just general stuff? No. Might be for the situational. I'll ask something later All right. onwards. All right. So I'll just be moving on to the last part of this. I'm going to just send you, like, not send you, I'm going to like talk to you about a couple of situations. I just want to understand Okay. from your point of view, how would you actually handle them? What would you do in the situations if you were stuck out there? So again, now like just going back to the resume that you have shared and the way the conversation has been going. I understand that you do have experience and you do know quite a lot of stuff on how to deal with things. Obviously, I do not know how you are on field. So Alright. these would give me a slight idea. Now, since you mentioned that you've commanded multiple shootout situations, okay? Think of this that Yes. you are in a shootout situation and you have Air1 surveillance going on. The Air1 has clearly spotted 5 suspects on the roof of a building. Well, right. There could be more inside. There couldn't be more inside the building, of course. There could be more around. Who knows? But you'll have visuals on 5 of them. However, y'all are around from your end. Y'all are only around 7 or 8 officers currently on duty at that point of time. And while you are on duty, y'all are completely stacked up. Y'all have permissions for class 1, class 2 weapons. Y'all have permissions. You'll have access to all the utilities that the PD has to offer. There is nothing at the PD armory that you all cannot use. However, the people opposite, they probably have like Glocks or Walters or some form of pistols in their hand that you can see visibly. If they have class 2s, obviously that won't be visible to you. They might have it inside a bag or something. But what is visible is just their pistols. Well, right. And so the only way to go to that place is a one-way ladder. That ladder is the only way to that rooftop. There is no other way. How would you actually breach into that area? How would you neutralize the suspects? Or would you fall back? What weapons would you use? How would you approach this entire scenario? So basically, the thing is that you said we are 7 to 8 officers. There are 5 suspects as per the information from the Air1. First of all, get the evidence because shootout होने के बाद we say कि ये यहाँ पे लड़ रहे थे या फिर हमसे they were firing at us. That's no point, I guess. तो पहले तो first of all for get the evidence on the people. That is the primary thing. Then if there is only 1 or 2 ladders, I would say if we get 2 choppers and we locate the spot where from where we can just do an emergency landing on the building कि actually a rush landing on the building that कि हम वहाँ एकदम से land कर जाएं and we say three officers on each chopper and 2 officers from the ladder. So I would say that is how you got a breach in those types of buildings. Okay, and is there anything you would want to add to this? Like, what would you use against them and all of that?
Regarding the, I would say just as per them. If I, as per as you said that they might have in their bags or something, so I would suggest 2 or 3 of the officers to keep the better weapons with them just for the safety. Don't use them, and would tell them to escalate the force only if more officers go down, or if they started using it. That's it. I would just use the pistols then. No need of using such high level upgrade, these weapons to neutralize such kind of situations. We are trained enough. Interesting. All right. Okay. Now, I mean, I have understood that you out of commanded situations, you have done your paperwork, all of that is intact. But I also want to understand a little bit of basics. So I'll give you another situation where it's just a mere traffic stop where you've pulled over someone, and you pulled over someone just because that person was speeding. So it isn't anything major. Of course, that person was speeding is a crime. The thing is that that person ahead is armed. He's armed and he informs you about it. Not as a threat, but just informing that he has a weapon with him. And it is licensed, of course. Like that you don't know about, but yeah, that because he's informing you, it is an assumption made that there was a possibility that is licensed. So you pull that person over. He's one individual in the vehicle. And he has informed you that he is armed. You're driving your vehicle and you have one officer with you in your car. How would you actually execute that traffic stop? Would you call for additionals? If you would call for additionals, would it be a 77 call, a 78 call, a 99 call? Yeah, like so how would you like look at this? So basically, in the basic pullover, we tell the person to pull over on the right side of the road, half above, half on the or half on the road, as same as me. Won't come out. I would call for a 77 at whatever the location is. Give information on the radio dispatch, and yes, once my backup arrives, I would tell my partner to the officer with me in my car to go and talk to the person, and if things go south, I would we would do the proceedings. All right. I mean, Kevin sir, those are like the questions from my end. You can add on. ठीक है. Mind if I ask you something very personal? No worries. I would like to know your age. It's 24 and a half. All right. Do you have anyone in your family? Actually, yes, I do have. You do have, right? So I'll They give are you alive. yeah. Are they in Los Santos or somewhere else? Somewhere else. Okay. Suppose पकड़ लो, like I'll just give you an example, ठीक है? Your parents are in Los Santos, like they came to visit you, ठीक है? You were walking, you were like doing your job. Your parents actually somehow drive कर रहे थे car and they crashed into someone else, ठीक है? Alright. There was a mess created. Meanwhile, you were in a situation where there was a hostage inside a bank. You already got an information that your parents were there. Are you liking this interview way? अभी car crash हुआ है, accident. Are you liking how this interview is done? There'll be like there are EMS officials over there जो उनको लेके आने के लिए मतलब रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, मतलब उनको माउंट जोना में, ठीक है? How will you handle the entire situation? Would you leave the situation from there? Would you ask someone else to? Would you appoint someone else to handle the situation near the bank, or would you complete the situation and go and then after you'll attend your parents? So it's definitely that if my parents are going to the Mount Zone and I have the information, that is kind of a relief, right? And I won't really, yeah. So I won't really leave that bank situation, as there's another life at stake over there, which is a 72 situation, right? There's a hostage over there, so I won't leave that. But if I really want an early exit, I could really switch up roles by asking the commanding officer that can I be
the hostage unit, that I could just leave the hostage at the Mount Zona or wherever he wants and go to any other situations. I would deal with that like that way. And if he requires me in a primary or any other unit, I have to follow that then. And there is a relief that they are in the Mount Zona. My parents are all in the Mount Zona pillbox or in the medication center, so I won't think that I would leave any of the situations over there from of the bank. One more thing. Like as you have mentioned, like you've been to combat situations a lot, right? So you have been trained accordingly, right? Yeah, with some of weapons, yes. Yes. Can you please let me know when we use the weapon? For that we have a weapon license or some stuff. जिसके लिए हमारे पास एक weapon license है. What would be the necessary condition या फिर required condition The required condition. The when we required take out condition our is that weapon? the person in front has some some firearms or melee weapons with them, or if they just have something, or they just have they don't have anything, so I would just take out my taser on that. If I spot some of the firearms with them, or I get an information that they are pretty much armed, then only we take out the pistol. Alright. So इसके साथ ही continued एक situation बोल रहा हूँ. सोच लो कोई abandoned place में, abandoned place in the sense like जिसका बहुत दिन से constructions वगैरह नहीं हुआ है ऐसा, ठीक है? Alright. कोई investigation purpose में आप गए हो. You see you being a 24-year-old like young officer, you see a younger guy over there, ठीक है? Roaming around. आपके साथ Alright. सोच लो आपके कोई एक जूनियर ऑफिसर है, बराबर? हाँ जी. बातचीत करते करते you know the place is hostile, so you have taken all the like preferred secure what's say precautions like yeah जो भी होता है उससे पहले से आप लेके रखे हो. You have the units and all. So उस बच्चे से जब आप बात कर रहे होते वो नॉर्मली बात करते करते meanwhile he became very much ferocious. I'll tell you again, that was a underaged person, ठीक है? He became ferocious. He had a Ferocious bottle, as an angry, like a right? glass. Yes, angry. Due to whatsoever the reason. He had a bottle, a glass bottle. वो उसको ब्रेक करता है आपके सामने और आपको मतलब स्टैप करने का कोशिश करता है, बराबर? Alright. Would you ask your junior to shoot him down, or would you handle the situation in a He different? tries to stab me, right? Yes. Would tell him to tase the person. All right. If you're fully stacked up, you also have the tasers, right? Yes. I would tell the person to. I would tell my officer to tase him, or I would, if the area is a hostile zone, That we would. means you are saying me that you have the training of it, like you got the combat training only how to use guns. You don't know how to use your hands and all. You don't have that idea. Actually, How to tackle him. thing is, I would say that it's not always about if you have combat training, so you would avoid everything, right? So the person has a melee weapon, and that's kind of very sharp. And tasing a person doesn't mean that I'm harming him very much or something. That is just basically to stop him for some while, and we could just detain the person, put cuffs on around him, just restrain him on the side of the on the sidewalk, so that we can talk. That is What just a if way to neutralize that. what if the person couldn't actually stab you, and meanwhile like you tase the person, like नहीं आपका जो आपने जो command दिया था आपके junior को, tase the person, and due to that the like the younger guy went into trauma, because obviously electric shock depend करता है ना कौन कितना ले सकता है. Actually, that depends on the altitude of the suppose if you're on ladder, right? Or if that means you're on a pretty much height, and if you're on normal ground, the person has not entered the water, then only we just give them instructions to um what do we say, that to tase a person, right? If the person has behind into be अगर पानी में कभी गया था recently, in contact था पानी के, या फिर
he was on some altitude ki, maybe a ladder on or a top of a building or something like that. That's Tab why we don't taste. I told you one thing on the very first when I was explaining the entire situation. I told you something very precisely. That was an abandoned place. It was not a regular place. You understand the meaning, like what is abandoned place? I thought Abandoned is abandoned like place the actually abandoned उसको ही बोलते हैं ना कि जो जगह छोड़ी हुई होती है और maybe just यहाँ पे कुछ काम नहीं no. होता. That's just a plain Yes, area. construction हो रहा था, but it's not completed enough. Like कभी complete नहीं हुआ था. बहुत दिन से उधर ही ऐसे ही पड़ा हुआ है. Yeah, Due to I've whatever the mentioned reason. the two conditions for the taser as well कि like तो altitude पे ना हो और पानी contact में ना हो, then only you can tase a person. All right. Okay. And if the person was not able to stab me, just take out the gun and tell him. Yeah, just to tell the person and कि just put your hands up, restrain him or her, जो भी है, and talk to them and maybe warn them and leave them, or because that was kind of a hostile area as well, and we would just bounce off, or maybe arrest them on the on the basis of attempt to or assassinate or trying to stab an officer or something on those charges. According to the proceedings, we'll look at it. All right. Rex, you can go forward if you have any questions to ask. Actually, continue with this one. I'm hearing that actually one needed one. So Jake already asked that. Yeah. All right. So, Mr. Benji, right? Yes, sir. Yeah. So I mean that basically concludes this interview. We are going to have an internal discussion, and of course, then we will review this interview completely once again, and you will know soon whether you have been selected or not. We have kept into consideration about that if you have to choose a department, it will be LSPD. But if you do get selected, we are giving no guarantees of that. So as soon as the response is out, you'll know. I do not want to give you a time duration as of now. So because we have a long list of interviews that are going to be ongoing. So once all the interviews are complete, you will know. All right. All right. Okay. Appreciate your time. Thank you so much, sir. Yeah, you can leave. Have a great day, gentlemen. Thank you so much. Sinaloa के सूट में आता है. Where is the way out? It's kind of a Come, maze. I'll show you. Sir, coat कैसा है मेरा? Coat. It looks nice. I like the color blue. Wait, sorry, wrong place. This is also a maze for me. Not gonna lie. We have to go the other way. हाँ, that way. I forgot. मैं सो ही जाता हूँ, एक काम करता हूँ, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी. No. I can't just sleep inside the PD at a random floor, you know. ये समय अगर सो He गया was तो saying वैसे भी if you ढूंढ are नहीं showing पाएंगे. him the way, you can get one more candidate also. Send for sir. So yes, I would not be breaking the match of force, and I would be using my resources carefully. वैसे was the interview nice? Like ठीक बोला. That time will tell. If I give you the result right now, only what's the point, right? Result नहीं मैं वैसी genuine बात बोल रहा हूँ. One second now. हाँ यहाँ से अब यहाँ पे नहीं मतलब यहाँ से नीचे है. This is a slight maze, but yeah, if you're in, you'll get used to it at a point. Like how I'm slowly getting used to things. I mean about your interview, I mean you are experienced. I'll tell you that you know your stuff, but it depends because we aren't just going to hire everyone who has experience. नहीं मतलब कहीं क्या नहीं वो कोई दिक्कत है नहीं डिसीजन कुछ नहीं जानना मैं वो पूछ रहा हूँ हगा वगा तो नहीं ना. That I don't know. Oh. यार अगर अभी ही रिजल्ट चाहिए तो यार why would I be interviewing people, right? समझ गया ठीक है. चेक सर इनको मैं बुला रहा हूँ ठीक है. हाँ. आइए सर. आप जाइए मैं आपके पीछे ऊपर हाँ
क्या चल रहा है बाहर? I do not have to go ahead and cuff them, but I have to separate them and warn them that if you guys throw punches on each other again, I will have to go ahead and put cuffs on you. So that's how. खाना पीना कुछ नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ऊपर है, ऊपर ना बैड 2 floors. We'll go that way. Where is? Okay, ठीक है no. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, this is Rex Davis from SASPR, basically Park Rangers. And on my left is Jake Williams from SASP, he's a trooper. Welcome to the interview. Starting with the interview, do you have the medical certificate? Yes sir, yes. Yeah, share it with me, the medical certificate and the resume. On the mail? Yeah. By the way, can you just inform me about your name? मेरे को बोला सर आप? Yes. My name is John Keats. John what? Keats. Keats, alright. K-E-A-T-S. सर रेज्यूमे मैंने आपको भेजा है, मेडिकल सर्टिफिकेट एक सेकंड में भेज। हाँ। JQ got his resume? Yeah, I mean, I got it. मेरे को मिल गया है. हाँ, If you want, yeah, I can send it. I got it. Okay. Alright, so let's just start things off. Yeah. While we look at your resume and look at your medical certificate, just like tell us something about yourself. सर मैं इंडियाना पुलिस से आया हूँ और इंडियाना से यूएसए में वो छोटा सा टाउन है, वहाँ पे मैं मेरियन काउंटी शेरिफ में काम करता था एंड वहाँ पे जो है मेरी रैंक डेप्यूटी एंड फॉर सम फैमिली रीजंस मैं यहाँ पे मतलब शिफ्ट हुआ, तो मैंने देखा कि रिक्रूटमेंट चालू है तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आना लाइक मेरे लिए सही रहेगा, तो मैंने अप्लाई किया। Just 1 second, okay? Yep. यार ये इतने सारे टैब्स खुले ना, माइंडफक हो रहा है। अच्छा वैसे लाइक आप यहाँ पे किधर से आए हो आपने बोला? इंडियाना, राइट? इंडियाना पुलिस, या इंडियाना। And it's a small town. Yeah, I've heard about it. I just want to know कि यार like you've like why Los Santos out of all the places? Why not like try to execute duties anywhere else? I think यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सही है, सो मैं पहले मतलब जॉब के लिए आया था एंड मैंने कुछ जॉब्स ट्राई भी करी यहाँ पे एंड फिर मैंने मतलब काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पे लाइक डिलीवरी बॉय एंड गार्बेज काफ़ी सारी जॉब ट्राई की एंड जब मैंने वो देखा एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट तो मेरे को काफ़ी सही लगा, तो मैंने अप्लाई किया। अच्छा क्या आई कैन सी योर रेज्यूमे, बट तभी भी पूछूंगा क्या आपके पास कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है? यस। एंड कैन यू लाइक टेल अस अबाउट इट कि क्या कर रहे थे, हाउ वुड लाइक तुम्हारा एक रेगुलर डे उधर कैसा था? रेगुलर डे
like सब कुछ like about your past duty. what you used to do, how you used to do ऐसा. Like normal code ones and situations like वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रॉबरी केसेस आते थे, हाउस रॉबरीज. सो उनको रिस्पॉन्ड करना एंड टू कैच द सस्पेक्ट्स एंड उनको प्रोसेस करना, लाइक डेली रूटीन मोस्टली यही रहता था. एंड कभी कभी सीरियस केसेस लाइक हो जाते थे, लाइक फाइट्स या मतलब रॉबरी केसेस होते थे वहाँ पे काफ़ी. And any specific reason of leaving there, something, yeah, whatever? Yeah, my family shifted here, so I have to shift here. Okay. All right, okay. So the thing is, देखो, I don't know how this interview is going to end up going, ठीक है? But I always I want to know a person. तो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो सैन एंड्रियास स्टेट है, राइट, द स्टेट ऑफ सैन एंड्रियास, वी हैव द सैन एंड्रियास स्टेट पुलिस, and under that we have 3 sub departments. One is the LSPD, one is the BCSO, and one is the park rangers. Obviously all of them have a part कि एक part होता है जो all of them are executing the same duty, और obviously एक part ये भी होता है कि they have their own specific duties that they have to do. अगर ये इंटरव्यू सही गया एंड आपको एक मौका मिला टू चूज अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, आपका प्रेफरेंस क्या होता है? सर प्रेफरेंस BCSO को रहेगा क्योंकि पास्ट में मैंने BCSO में काम किया, लाइक शेफ डिपार्टमेंट में. सो प्रेफरेंस में BCSO को दूँगा थोड़ा सा. एंड अगर बाय चांस हमने लाइक आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कैंडिडेट्स वी फील दैट यू आर लाइक तुम LSPD में या पार्क रेंजर्स में एक बेटर फिट हो, तो वुड यू बी फाइन विद इट कि एक अगर हमें लगा, नॉट सेइंग दैट आप हो या आप नहीं हो, पर अगर हमें वो टाइम लगा, तो देन वुड यू थिंक दैट यू वुड बी फाइन विद इट कि यू वुड वांट टू स्टिक विद BCSO ओनली? यस सर, लाइक यू आर वेल एक्सपीरियंस, तो आपको लगता है अगर कि मेरे को ये ड्यूटीज़ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे लिए सही है, तो आई कैन टेक दैट. लाइक आप जो ड्यूटीज़ देंगे वो मेरे लिए सही रहेंगी. ऑलराइट, लाइक मेरे को कोई इशू नहीं है उससे. ओके, सो आपके रेज्यूमे में आपके स्किल्स में लिखा है अरेस्टिंग सस्पेक्ट्स, टेस्टिफाइंग इन कोर्ट. कैन यू लाइक explain these skills of yours, that how did you achieve these skills, or what made these your skills? सर लाइक डे टू डे मतलब मेरा रूटीन यही था कि सस्पेक्ट्स पकड़ना, उनको प्रोसेस करना एंड जस्टिफाइंग कोर्ट्स, मतलब बीच में कोर्ट केसेस है उसके बारे में जाना. मैंने लाइक मेरे साथ तो हुआ नहीं, बट कोर्ट केसेस में मैं गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है, तो मैंने जाना है कि कैसे कोर्ट केसेस होते हैं एंड लाइक क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर द कोर्ट केस एंड लाइक परफेक्ट लाइक ऑल द प्रूफ्स और ऑल द एविडेंस और कैसे करना होता है, सब मैंने जाना है इस बारे में. ओके, ठीक है, सही है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो. जस्ट गिव मी 1 second, ओके? Yeah. Okay, that is fine. All right. So how? Go ahead, Rex. No, go ahead. I thought you were doing something, so I was... So how long have you like performed your duty in the last county you were at, in that Indiana? Yeah, around 1 year. Okay, so I assume that since you have done duty for 1 year, your basics would be in place, right? Yes. So one question which I'm going to keep very simple, which I expect experienced officers to know, is what is the difference between reasonable suspicion and probable cause? और probable cause जो होता है, can I talk in Hindi? Yeah, हाँ, ज़रूर हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. प्रोबेबल कॉज जो होता है वो प्रॉपर प्रूफ्स के साथ होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई कॉल आती है फॉर द लाइक सस्पिशियस एक्टिविटी एंड अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पर मेरे को कुछ लोग दिख जाते हैं बाय द आई और मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है कि द सस्पेक्ट जो है वो यही सस्पेक्ट है, तो वो प्रोबेबल कॉज होगा. एंड रीजनेबल सस्पिशन होगा अगर उसी सिचुएशन में कुछ लोग खड़े हैं पर मेरे
मेरे पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि ये चीज़ जो है मतलब ये जो क्राइम है ये इन्होंने ही किया है कि नहीं, तो वो रीजनेबल हाँ रीजनेबल सस्पिशन में आएगा। एंड इनकी दो वो मतलब रीजनेबल सस्पिशन में हम सिर्फ फ्रिस्क कर सकते हैं लाइक फॉर द अपर बॉडी से, लाइक हम हेड डाउन कर सकते हैं एंड प्रोबेबल कॉज में हम प्रॉपरली सर्च कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। बहुत टाइम्स पे लाइक जब भी कोई भी ड्यूटी देता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबको ऑब्वियसली एक रेडियो दिया गया है फॉर टू कम्युनिकेट। हाँ जी। अभी कभी कभी अगर लाइक जैसे अगर मेरे लेफ्ट जो ऑफिसर है, ओके, इफ़ ही रिक्वायर्स सम असिस्टेंस, वो ही विल ऑलवेज टॉक टू मी इन अ कोड लैंग्वेज। ही वोंट टॉक टू मी कि यार मैं पिल बॉक्स पे हूँ, ज़रा आइयो, वो ऐसे। सो ही वी ऑलवेज टॉक इन कोड्स एंड आई वांट टू नो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाई डू दीज कोड्स एग्जिस्ट। मतलब एक कोड में हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि हम देखा जाए तो हम ऑफिसर्स हैं, वी कैन टॉक इन जनरल कॉन्वर्जेशन। आई कैन ऑलवेज से मैं आई एम पुलिंग ओवर समवन, आई नीड एन एडिशनल, या कोई आ जाओ। But why do we talk in, why do we say 10 11 and ask for 77? Why do we do all of that? ये जो 10 कोड्स होते हैं ये इसलिए बनाया गया है जिससे जो कन्वर्जेशन है वो शॉर्ट हो सके, लाइक फॉर द टाइम कंज्यूम होता है जैसे हम बात करते हैं, तो 10 कोड्स इसलिए यूज़ किया है जिससे हम कम से कम समय में ज़्यादा बात कर सकें, लाइक टू सेव द टाइम बेसिकली। ओके। क्या जब आपके लास्ट डिपार्टमेंट में थे आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया है? नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो फेस नहीं किया सर। आपका लास्ट रैंक क्या था? डेप्यूटी। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम्स फेस करते तो आप ये प्रॉब्लम्स के बारे में लाइक किसको बताते? टू द लाइक जो मेरा नेक्स्ट हायर होता है, हायर रैंकिंग ऑफिसर लाइक जो मेरा नेक्स्ट व्हाट वाज देयर रैंक? डेप्यूटी फर्स्ट क्लास। डेप्यूटी फर्स्ट क्लास, ओके, ऑलराइट ऑलराइट। Next, you can go ahead for the next few questions. Okay, so do you know anything about match of force? Yes sir. Yeah, please elaborate. मैच ऑफ फोर्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टू मैच द फोर्स, लाइक अगर हमारा जो सस्पेक्ट है इज ही इफ ही मूविंग इन द बाइक, तो हमें भी अपनी बाइक यूनिट से ही उसको चेज करना है। और अगर वो एक नॉर्मल कार में मतलब एस्केप करने की ट्राई कर रहा है, तो हमें भी एक नॉर्मल स्पीडिंग कार से उसको चेज करना है। और अगर वो कोई हाई स्पीडिंग कार है और स्पोर्ट्स कार है, तो वी कैन यूज़ आवर स्पोर्ट्स कार पास। एंड Why? And why is it necessary? Like, why do we have match of force actually? like it's necessary to like how we can I say uh, I'm not getting that word, but like आप हिंदी में भी बोल सकते हो if you want, if not getting that particular word बोल के आप explain कर सकते हो, no worries. like अभी मैं मतलब याद नहीं कर पा रहा उस चीज़ के अंदर, आई एम रियली सॉरी। मतलब मेरे को ठीक है, ध्यान नहीं आ no रहा worries. कैसे बताऊँ। Do you know, you said you have done a lot of like robbery case में आप वो किए हो, right? हाँ जी हाँ जी। तो फिर you can tell me when and how to breach in a robbery situation? breach in Yeah, like when in a and house. how? Like कब करते हो आप and कब, how to do it? Yeah. If फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाउस रॉबरी है तो वी कैन वेट, अगर वो रॉबर्स अगर वो बाहर आते हैं, अगर वो इन अ पर्टिकुलर टाइम बाहर नहीं आते हैं, तो वी हैव टू ब्रीच इन with the call like this is LSPD or this is BCSO breaching in, you have 3 seconds to come out or फिर count down and we breach in। and अगर कोई सिचुएशन है लाइक जिसमें हॉस्टेज है, हॉस्टेज वाली सिचुएशन है, तो वी हैव टू ब्रीच इन इफ अगर वो हॉस्टेज को लाइक इंटेंशनली चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी हैव टू ब्रीच इन कि हम हॉस्टेज को बचा सकें। Yeah, that's all from my side.
ओके, टेल मी वन थिंग, एक फेलिनी स्टॉप क्या होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है? फेलिनी स्टॉप होता है अगर सस्पेक्ट भाग रहा है और वो एक फेलिनी सस्पेक्ट है, मतलब जो उसने क्राइम किया है वो एक हाई ग्रेड क्राइम है, और वी हैव प्रॉपर प्रूफ कि जो सस्पेक्ट है वो वही सस्पेक्ट है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, मतलब 3 कार्स उसमें यूज होती है इन अ बटरफ्लाई शेप, एंड राज बाबू और एक कैंडिडेट को लाइक रेडी वो कर एक दो साथ बाहर प्लीज। निकलते हैं लाइक 3 to 1, और गन पॉइंट करते हैं उनके ऊपर, एंड वी से लाइक अपने हाथ ऊपर करो एंड आवाज की तरफ पीछे बढ़ो, लाइक वो एकदम से ना घूमे, जिससे लाइक ऐसे धीरे धीरे उसको पीछे लाते हैं एंड वी कफ हिम डाउन एंड वी अरेस्ट। ओके, आपने बोला कि अगर कोई मेजर क्राइम हो और एक बंदा भाग रहा है तो इट विल बी अ फेलिनी, राइट? यस। अगर क्या आपके हिसाब से एक गाड़ी चोरी करना इज इट अ मेजर क्राइम और अ माइनर क्राइम? लाइक इट्स कम इन द मॉडरेट लेवल, लाइक उसको हमारे उधर मिसडेमिनर कहते थे। तो अगर किसी ने गाड़ी चोरी किया है एंड यू पुल्ड हिम ओवर फॉर अ स्टोलन व्हीकल, क्या वो ट्रैफिक स्टॉप होता है कि फेलिनी स्टॉप होता है? अगर चोरी किया है, मतलब हाँ, मतलब अच्छा, इज अ मेजर क्राइम और अ माइनर क्राइम? तो या अगर लाइक गाड़ी, अगर हमें पता है कि वो गाड़ी चोरी किया है तो फेलिनी स्टॉप तुम्हें होगा। बस पता है कि वो गाड़ी चुराई गई है, तुम्हें ये नहीं पता कि जो ड्राइवर है उसने चोरी किया है कि नहीं, दैट यू डोंट नो, बट यू नो दैट द कार इज अ स्टोलन कार, तो फिर क्या करोगे? फिर भी फेलिनी स्टॉप होगा। ओके, एंड मुझे बताओ, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 वेपन्स में फ़र्क क्या होता है? क्लास 1 में पिस्टल्स आती है, क्लास 2 में मतलब नॉर्मल एसएमजी आती है, क्लास 3 में हैवी हैवी असॉल्ट राइफल आती ओके, एंड आपके हिसाब से कोड रेड क्या होता है? है। कोड रेड मेरे हिसाब से इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर द टाइम, जो कि हम कह हमें हम हमारे हम उस पर्टिकुलर एरिया को कोड रेड कर सकते हैं अगर हमें ऐसा फील होता है कि वो एरिया सेफ नहीं है फॉर द सिटीजन एंड पुलिस ऑफिसर्स। Do you know difference between detainment and arrest? दोनों यस। में what procedures do we follow? डिटेनमेंट में हम फ्रिस्क करते हैं, एंड डिटेनमेंट होता है बेसिकली पूछताछ करना, हम उनके हाथ पे जिप टाई लगाते हैं, हम उनको लेके जाते हैं एंड हम उनसे पूछताछ करते हैं। अरेस्ट इज़ अ प्रॉपर अरेस्ट, हम कफ लगाते हैं एंड उनको कस्टडी में लेते हैं प्रॉपर। So, Dispatch, am I trained to? while you detain someone, can you search him? No, we can't search. We only frisk for the our safety, like if he or she is carrying any lethal. Okay, and when is a detainment done and when is a arrest done? In what डिटेनमेंट circumstances? डिटेनमेंट जो होता है वो रीजनेबल सस्पिशन में होता है, एंड अरेस्ट प्रोबेबल कॉज एंड फेलन। Okay. And मुझे बस like I was just going through your resume also once again. Just give me one second. I had one thing to ask. I had some issue. Just give me 1 second. Where is it? भाई ये क्या इश्यूज हो रहा है लाइफ में भाई, इतने सारे टैब्स खोले ना, मेरा माइंड फक हो रहा है यार। Yeah, so what I was asking is that you've done your bachelor's in criminal justice and law enforcement, right? हाँ जी, हाँ जी। So have you ever considered also like being a lawyer ever in your life and not a Leo? No. And why is that? Since you have such a criminal justice background, and why not look at? या लाइक मैंने कभी ट्राई नहीं किया उसके लिए। Okay, you're just not interested in that, right? Yes. ठीक है. Officer Alex, I have no more questions from my end at all actually. Yeah, from the basic ones, I have also like. You wanna go for the situational ones? I mean, sure. If you want, we can ask him one situational question. Yeah. Okay, so I'll be explaining to you one situation. तुम्हें बस ये बताना है कि तुम सिचुएशन में क्या करते हो.
आई अज्यूम कि तुम्हारे प्रीवियस डिपार्टमेंट में लाइक अगर को किसी को कभी भी एयर निकालना हो या बाइक निकालना हो या कोई स्पेसिफिक यूनिट्स निकालना हो, उनको ऑथराइजेशन चाहिए था, लाइसेंसिंग चाहिए था, राइट? लेकिन उनको चाहिए था कि नहीं चाहिए था अगर किसी को निकाल? चाहिए था, लाइक लाइसेंस। हाँ, तो समझ लो कि आप एक रेंजर रैंक पे हो, ठीक है? या इन द पार्क रेंजर डिपार्टमेंट समझ लो, आप एक रेंजर रैंक पे हो और एक बैंक रॉबरी सिचुएशन चल रहा है। उनके पास एक हॉस्टेज है, उनका एक एस्केपिंग व्हीकल है जो एक BMW M5 हो, विच इज़ अ फास्ट व्हीकल। तो सीन ये है कि आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट द डिपार्टमेंट, बट देयर इज द स्पीड एनफोर्समेंट यूनिट। They basically have very good driving skills and they have the potential to catch these suspects. वो टाइम पे लाइक उधर कोई SEU लाइसेंस ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी है ही नहीं, तो तुम्हारे पास SEU का एक्सेस है ही नहीं ये चीज़ में। एंड कोई हाई कमांड भी नहीं है, कोई कमांड भी नहीं है, सो यू आर जस्ट अ रेंजर। तो उधर वो रॉबरी में एक सीनियर ऑफिसर को पता है कि यू आर अ गुड ड्राइवर, तो वो सीनियर ऑफिसर आपको बोल देता है यार ये सिचुएशन के लिए मस्टैंग निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं? सीनियर ऑफिसर मतलब मेरे से हाई रैंक? ही इज 1 रैंक हायर देन यू। नो नहीं निकाल। क्यों? लाइक ऑथराइजेशन तो उस मतलब मेरे डिपार्टमेंट में तो ऐसे नहीं निकाल सकते। मतलब जो FTOs थे, ओनली FTOs जो थे वहाँ के, उनके अगर उन्हें पता है कि हम अच्छे ड्राइवर है तो सिर्फ वही अलाउ कर सकते हैं, लाइक कोई सीनियर ऑफिसर या कोई। एंड अगर एक FTO बोल देता बाई चांस कि यार निकाल दो, आप निकाल देते, राइट? ओके, एंड अगर FTO ना हो और वो सीनियर ऑफिसर ने बोला आप नहीं निकालते एंड यू वुड टेक, अगर सस्पेक्ट भाग गया तो भाग गया? या लाइक आई कैन ट्राई माय बेस्ट फॉर एनीथिंग जो मेरे पास है, इवन अ स्लो स्पीड कार, तो मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर टू कैच। ठीक है, और नेक्स्ट आई हैव नथिंग फ्रॉम माय एंड एट ऑल। एक्चुअली बस मेरे लिए भी इतना ही है फिर तो। ऑलराइट, सो भाई यार ये रेज्यूमे, या सो मिस्टर जॉन, दिस इज द लाइक एंड ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है? अगर आप सिलेक्ट हो गए या नहीं हुए या जो भी है, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स सून। जब सबके इंटरव्यूज खत्म हो जाए देन यू विल बी इन्फॉर्म्ड, एंड अगर आप सिलेक्ट हुए द डिपार्टमेंट ऑल एवरीथिंग दैट विल बी इन्फॉर्म्ड टू यू एट अ लेटर टाइम। ओके, ऑलराइट, सो या थैंक यू फॉर योर टाइम, यू विल बी नोटिफाइड सून। थैंक यू सर। थैंक यू। One-on-one director Dashi? अरे नहीं मैं लेके आ रहा हूँ। Okay, disregard. वो थोड़ा पानी खत्म हो गया। सर मैं ले चल रहा हूँ। या कम आ जाओ सर। भाई थका हुआ हूँ।
क्या था आपका नाम क्या था पहले? Lieutenant था, forever lieutenant था. This guy here is a forever lieutenant. Hello, sir. Forever lieutenant? Oh, it was मेरे this से guy. सर आपसे Same guy who was trying to drive away a vehicle. Okay, yeah. What do you mean drive away, sir? I mean, Yeah, starting with the interview, I'm Rex Davis from SASPR, and on my right is Jake Williams from SASP. He's a trooper. Sir, I'm Mike Banning. रुको. Yeah, have you got your medical certificate? Yes, sir. Right. That's it. Resume as well. Till then, I'll be looking at your resume. Oh my God. Please, there. अरे. Lexi sent you the medical thing? Yeah. Alright, It's so like the EMS is undergoing. sorry, what? The EMS is sending that. हाँ, okay. I talked with the. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. All okay. So by the time we go through your resume and see what you have written out there as well, just can you like tell us something about yourself, about your past, about you? Yes, sir. So basically, I was in the Los Angeles PD. Prior to this, I was a lieutenant over there. I've had To 6 years of dispatch, you can experience on send the the force. next candidate. I resigned 10-4, I am for sending. some personal reasons. Afterwards, I was unemployed for 2 years. After that, then when this opportunity came up, I applied. Now I'm here. You said you were unemployed for 2 years, right? Yes, sir. Why like such a long break? Was there any specific reason for such a long break? I mean, it got a bit too hectic, you know. I got way too involved in so many matters, which were not really necessary. So I decided to take a break, recollect myself, whatever happened. Alright, so by chance you do get selected, and if you are like heavily loaded with work, it might give you the intuition to resign, right? Not really. I mean, I was, I got involved in some things which I really don't, I guess it was a wrong step I took. So this time I don't think I'm gonna do that again. Alright. Stick to. ठीक है. You said you were a lieutenant, right? Yes, sir. So like, can you tell me how a regular day in your life would be off duty? Regular day was, sir, I reported in the morning, 9 a.m. Afterwards, I had the morning briefing, the team, my squad. It was basically assigning cases to the detectives and my officers, what to get updates on their active cases. Guys, if Mikey gets selected, he's going to be the best driver we have in the department. I'll tell you that. Okay. I also had a sub-department under me, so I used to look into that as well, getting out. I was the head of the street racing unit. Oh, okay, interesting. Yes, so I was looking into that, getting out licenses for the speed enforcers. Okay, so you have an idea on about the licensing procedures for such sub departments, right? Yes, sir, yes, right. And just for my information purposes, I mean, I'll let you also know is that under the SASP right now, since we have 3 departments: the LSPD, the BCSO, as well as the Park Rangers. Right. I am not giving any guarantees, but if you do get selected and you had a preference, what would be your preference from these 3 departments? Probably, sir, SSPR. Oh, SSPR, okay. Yeah. And by chance, after we interview all the candidates and we feel you're a better fit in either the LSPD or the BCSO, would you have any problems with that? Not really. I'd be comfortable anywhere. I have a thing with the SSPR because it'll be a bit more the jungles and also peaceful compared to the city. Got it. So, as you mentioned about SSPR, you might be knowing about some animal things related, and you know about poaching? I do, sir. Can you tell me? Poaching What's is that? basically killing or hunting animals which are illegal, endangered animals, endangered species. Okay, we'll go with the normal one, then we'll proceed with that things later. Jake, continue. Alright, yeah. I mean,
I won't go around the mere too basic of questions because I mean, since you're a lieutenant, I'm expecting you to know it. I'll just understand it by asking at least like 2 or 3 basic questions just to see that if, because a lot of people come here and say they have achieved a lot, but they actually have not and come with a fake resume. So yeah. So the most basic question probably asked in each and every interview, which I'm probably sure you know the difference between reasonable suspicion and probable cause. Yeah. Right, sir. Reasonable suspicion is when you suspect a person or an individual that they're about to has committed or is going to commit a crime, but then you don't have any evidence against the person, so that's reasonable suspicion. When you have any sort of evidence, concrete evidence against a person who is going to has committed or is committing a crime, that's probable cause. All right, and since like again like now we all have a radio, right, and we do a lot of half of our communications are over radio. Right. So why like I mean I can easily go around and just be on the radio and say, "Acha, I'm pulling over this red Ferrari in front of me. It has one occupant and I don't require any additionals." But instead of that, we always hear in codes. And why is it that? Like, why is it that way when we can just talk to each other? Keep the radio chatter short, sir, because if we talk like how we talk normally, the comms would be way too long. And giving out codes is just numbers, right? To keep it short and simple, and so everyone can understand it clearly. All right, okay. I'm not really going to go into more of the basic questions because your resume really seems intact and I can see your experience out there. So I'm not going to just dive deep into that. I just want to understand that this street racing unit that you're taking care of, what was I like... used to take care of, sir. Yeah, you used to take care of it. Yes. I mean, right now, of course, you're not taking care of it. You want to do your break and yes. I don't even know if you're a good driver or not as of now. So... I mean, we'll see. Yeah, so I just want to know, like, what was the procedure according to you from their end to actually figure out if someone is an optimal candidate to actually obtain that license? Basically, sir, what we did was, whenever any juniors, I mean officers, patrol officers, whatever the rank was, we used to observe their driving. I mean, basically, whenever we were in pursuits, we would see how they would take up comms, how they would drive, how they would understand what the pursuit procedures, the rules were. According to that, if they wanted to apply for enforcers, we had special tracks around which you have to get a certain time limit, right? And you have to complete the track, the amount of laps you have to do. You have to finish it within the given time. If you could clear that, yes, you could get the license. And compared to the other officers in your department, how would you fare? Sorry? Like How was I compared, fare? like how would you fare as in compared to their lap records or whatever timings that you're seeing? If you have to compare Number yourself one, to sir, them. always number one. Nothing below. Number one. Okay, you claim you're the best in that department. Oh yes, 100%. Wow, cool, Mikey. I still probably have my records up there. I don't know. Okay, interesting, quite interesting. Rex, if you want to go for any like ranger related questions, I mean that would be more interesting. No, that would be the last, I think, actually, because he doesn't have the experience. He wants to join the department I want to try to. something new. Okay, I'm not going to dive deep into any more of the basic questions because I'm pretty sure you'll be clear with all of that. The way you've been describing your duties and all of that. So I'll just quickly give you a couple of situations, and I would want to know how would you deal with in that situations. So just consider yourself that yes, you were lieutenant. Consider yourself as one of the lowest ranks. Like after training, you would become say an officer. Okay. Right. I'll call it deputy because I would want to give it a BCSO vibe to it. Okay? Alright. Say you are a deputy in the BCSO department. You're on field and you get into a small argument with an officer, same rank, just a different sub department. Right. You both have obviously your own seniors, your own department, and of how things work. How would you like tackle a situation if you had to complain about it? Who would you talk to, and who would you go and report it to? So like, and that argument was in such a way where you all both got so annoyed with each other, where you were like, ah, shit, I fucked this, I'm gonna resign. So that argument led to that level. So if you had to talk about this to someone, about your seniors, who would it be, and why would it be them? So basically, whenever we face such problems in the department, we had a separate department, human resources. You know about it, HR. Yep. So if any officers, right, and they had a conflict, suppose I had a conflict with another officer, so we'd basically report to HR, and they'll probably look into it, what's what, and if it's something serious, it would probably go into internal affairs.
Alright, okay, fair enough. And I'll just put you in one more spot. Right. Think of it that you're a part of the park rangers like you want to be. Alright. Your highest in command is Officer Rex Davis. I mean, or Game Warden Rex Davis. And think of it this way: as there's a situation, there are multiple situations arising at one time. So there's a lot of radio chatter. Right. Now, during that situation, our SASP chief has informed you, whose name is Kevin Butler, has informed you that there's a hostage situation going on. So you need to respond to that immediately. On the other hand, Officer Rex is in the middle of a shootout, and there are suspects that are currently shooting at him. Right. He tells you on the other hand that you need to come and help me out. I'm getting shot at, and he knows that you can handle combat situations really well. So he's called for your assistance. And in the third scenario, you have someone who is probably the same rank as you. And there is someone, there's a third scenario where due to an accident, an officer has been downed. So that officer, the same rank, tells you, let's go save our officer first, because obviously downed officer is priority. Right. Whose call would you listen to, or how would you approach the situation? Because you're given 3 different calls from 3 different people. Alright, so first thing is whatever the SASP chief has said, I'll have to ignore it because there are 2 cases where officers are in distress. Okay. Second thing depends if Rex sir is in a radius where I can reach him faster, right? Mm-hmm. And I'll probably go respond to him first because the officer who's with me, who's asking me to help him out with the officer who was involved in an accident, I'll probably ask him to go over there and call EMS for help rather than including another officer who could go help another officer in distress who's being shot at. So yeah, I'll head to Rex Davies' situation first, help him out, because there's another officer who can look into the officer who's met with an accident, and there's EMS of course, they'll look into it. Okay. Just one last thing from my end, then I'll let Rex do the rest of it, is that if by chance you get selected and we observe, like since you've taken care of the sub-department and we observe you are actually good at what you claim to be good at, then would you be willing to, if we had something like that coming up and you would have to take on responsibilities, would you be willing to do that? I would, sir, but not completely. I'll ask for another on the same level as with me. Fair enough, okay. Alright. I mean, Rex, that's all from my end. You can take over. Officer Rex? Yeah, I'm hearing. Yeah, about the situationals and all, it's done. So, I'd go for the main part, depth of the park rangers things, because you've not experienced as a park rangers. Right. But yeah, so as I mentioned about poaching as well, you know about it. I'll go with the normal PD ones because park ranger is also a law enforcement officer only. Right. And you also handle. So, have you obviously you're a lieutenant, you have also attended robbery procedures, right? You also handled special task force, yeah. So can you tell me the process? It will be a basic one, but still, can you tell me the when do you breach in and the what's the process for breaching in? So to In a breach robbery in, scenario. for a scenario to reach for a situation to reach the scenario that officers have to breach in is when the hostage is harmed and we have confirmation about that. Then that's the moment we have to breach it. Also, yeah, that's the basic situation. And to breach in, I think that's a different. I mean, there's a tactical thing you have to go through. Do you want me to explain the whole thing? I mean, yeah, one procedure, like for example, when do you need to, and you told about that. So scenario where how to breach in actually. So how to breach in? I'm gonna need a complete blueprint of the the premises where I'm gonna breach in properly, so I can plan out. Sorry. Yeah, like suppose you are at a bank. Suppose you have seen the Pacific Bank, you know? I haven't, sir, not yet. Haven't. And the Legion one something? I haven't, sir, not yet. I haven't been to any of the banks in the city. Okay. It's a basic normal bank and It depends, sir. I need the blueprint, right?
I cannot do the. I just cannot go. Yeah, any of the blindly. like okay, you've been a lieutenant in your experience. You also might have a situation where you had to breach in, right? Right, sir. But that was the SWAT department, right? They were involved in such ये तो situations. अनुभव का ले रहा है. When it came to a breach, it was SWAT department. Because they had all the tactical gear, the shields, going into the corner. Yeah, that's what I wanted to know how that is carried out. Oh, yeah, You know, that's like how it ये is. तो अनुभव का ले रहा है. yeah, if you know about it or not. I do. Yeah. Anything? No, I didn't. I wanted to no, ask no, anything Michelin, else so than sorry, that. Ji, sir. Yeah, that's it. I didn't want it to. Yeah. Jake, Yeah. wanna ask something? No. I'm good with the question. I'm good with the answers I've got, and I've got things figured out from my end. Just one thing I just want to add, like if I mean you because of the experience you have, if we do consider you, I mean it wouldn't be one of the major responsibilities, but if we do consider you, I mean if you get selected, that is, we do consider you under the FTO side of things. Would you be interested in that? Would you be able to train people? Is like that's some. I just want to know your point of view on that point. I mean, so yes, of course, I have. I think I have the knowledge, and the experience to help our juniors. I will definitely. ठीक है. Then there's nothing from my end, right? So I'm clear with. Yeah, same. That's it. The interview is done. Yeah, I Thank you did so not. much, guys. I really appreciate it. Thank you so much. Yeah, yeah. Appreciate your time. So, can you show me the way out? I'm going to get lost. Yep. आओ लेके जा रहा हूँ सर. आइए. मेरा नाम है दास. You can send the next candidate on the topmost floor. कर रहा हूँ. Thank you. ऐसे लोग हैं. Oh my god. I have nothing to say. I put my reviews about him, by the way. जस्ट सेइंग हमने कुछ और वो किया था लेकिन ठीक है. मतलब क्या किया था? दो. You know, two peeps, 3 peeps. Oh, हाँ, sorry, हाँ, my bad. I forgot. Then then just edit mine also, na. I forgot that. I actually forgot about that. Yes. नॉक करके जाना, ठीक है? Yeah, come. You can come in. Yeah, you can come in. Sure. राम सर. हेलो. आपका नाम? जी मेरा नाम बलराम चौधरी. आपका नाम बलराम क्या? बलराम चौधरी. Balram Chaudhary. Nice to meet you. This is Officer Jake Williams from the SASP, and besides me is Officer Rex Davis from the Park Rangers. Nice to meet you. Okay. क्या आपके पास आपका resume and medical certificate है? है सर जी है. क्या आप मुझे like उसका soft copy you can just use your phone and email it to me? जी सर.
ये टेंशन मत लो चार, नाइट बोर्ड को मैं रोक लूँगा, नाइट बोर्ड को मैं रोक लूँगा। भेज दिया सर जी। Yeah, just give me 1 second, I'm just checking it. ऑलराइट, ठीक है। जब तक मैं आपका रेज्यूमे देखता हूँ, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देखता हूँ, आप हमें आपके बारे में कुछ बता सकते हो? जी मेरा नाम बलराम चौधरी है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, और मैं इंडिया से आया हूँ, हरियाणा से। यहाँ पे पुलिस की नौकरी लेना है, खास मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए। क्या आप कभी एक ऑफिसर थे या कुछ पीडी नौकरी की हो पहले? ना जी, पहले नहीं था, कोशिश तो बतेरी की थी, पर हरियाणा में ना नेता नुता के, एमएलओ के, उनके रिश्तेदारों को लगा दिया, हमारे अच्छा। को लगाया ही ना जी, नेपोटिज्म। तो फिर लॉस एंजल्स क्यों यार? ऐसे बहुत सारे जगह है दुनिया नहीं, में। यहाँ मेरा ना जी चाचा का लड़का भी यहाँ रहता था, तो उसने बोला यहाँ हो, यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ वो सब ना होता, और यहाँ जुर्म भी बहुत हुए हैं। अच्छा तो मैं यहाँ आ गया जी हेल्प करने, अच्छा। जो तो हो सके। अभी के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? नहीं है जी सर, कुछ एक्सपीरियंस ना है। अच्छा, तो मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अबाउट दिस हाँ कि जी। जो हमारा पूरा पीडी है, राइट, उसके स्ट्रक्चर में 3 हमारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट का नाम एलएसपीडी है, एक डिपार्टमेंट का नाम बीसीएसओ है, और एक डिपार्टमेंट का नाम पार्क रेंजर है। अगर हाँ बाय जी चांस सर। अभी मैं आपको ऐसे ही पूछूं, अगर आपका कुछ प्रेफरेंस होता इन तीनों में से, तो आपका प्रेफरेंस क्या होता? जी जिसमें काम ज़्यादा होता, तो आपका ऐसा जिसमें ज़्यादा मेरा यूज़ हो, मेरी एबिलिटीज़ का, मेरा ओके। हुनर का, जिसमें इस्तेमाल हो ज़्यादा। तो एज सच आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है? अगर आप सिलेक्ट ना हो गए जी तो ना। कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा, बोल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल जी, देश की सेवा करनी है जी, प्रेफरेंस के हुए है। एंड अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आप कब से हो लॉस एंजल्स में? जी मुझे हो गए अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा, 1 हफ्ता हो गया जी यहाँ पे। आप आजू बाजू बहुत लोगों के साथ घूमे हो, मुलाकात किया है, ये सब किया? हाँ जी वो सब तो कर लिया जी। अभी माइनिंग वाइनिंग ये सब कर रहे थे कमाने के लिए, तो पोस्टल माइनिंग। तो आपके हिसाब से अभी क्या क्या कौन कौन से क्राइम्स या कौन सी चीज़ें हो रही है शहर में? जी गाड़ी बहुत तेज भगाते हैं जी लोग, और ये ट्रक वगैरह भी, और हिट एंड रन भी करे हैं बहुत लोग, लाइट जंप कर दे हैं, अभी तो यही हो रहा है जी। अच्छा ओके। और मैंने ये भी सुना था, एक टैक्सी वाले को 3 लोग ले जाके माउंट चिड़ियाड़ पे लूट लेते हैं, ऐसा क्या? बता रहा था एक टैक्सी वाला। हाँ, तो ये सुन के पोस्टल आपने क्या में किया? जी हमने पुलिस में कंप्लेंट कराने के लिए आए थे, पर कोई था नहीं तब। अच्छा, ये कब की बात है? ये तो 2-3 दिन हो गए जी इसको। अच्छा ओके ओके ओके। तो लोग ओवर स्पीड कर रहे हैं, हिट एंड रन हो रहे हैं, और ये माउंट चिड़ियाड़ का सीन, राइट? हाँ जी सर। ठीक है। तो द थिंग इज दैट आपने लाइफ में अभी तक क्या क्या पढ़ाई किया है एंड क्या क्या काम किया है? हेलो, आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ आई कैन आ हियर रहा यू, सर, कैन आ नॉट रहा। हियर हिम। हाँ भी यार, हाँ। हाँ, मैं बोल रहा आपने क्या काम किया है इसके पहले? मेरे बापू का वो था टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस, उसमें काम किया था जी, और अखाड़े में भी करता था काम थोड़ा, तो मेरे गांव में। तो आपने 2 चीज़ें जो आपके रेज्यूमे लिखी है, वो हाँ है जी सर। गुड ड्राइविंग स्किल्स एंड वेपन हैंडलिंग स्किल्स। ये हाँ स्किल्स जी। कैसे लाया आपने? आपने क्या ये तो किया? जी मेरे बापू ने मुझे उसमें डाला था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उसमें सब शूटिंग रेंज और गाड़ी चलाना जी, टूर एंड ट्रेवल्स का तो काम ही था, तो गाड़ी तो वहीं से आ गई जी चलानी बढ़िया।
तो उधर से आपके ड्राइविंग स्किल्स आ गए और उधर से आपके वेपन हैंडलिंग स्किल्स आ गए। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो चला ही लेते हैं जी। ओके मैं आपको ऐसे ही कुछ जनरल सवाल पूछता हूँ। आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो इसलिए आई वोंट मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल में जाऊँगा नहीं। जी सर जी। आपको पीडी के बारे में कुछ भी पता है? जी इतना पता है, सब रूल्स के हिसाब से करना है और अपने से ऊपर वाले की सुननी है, जो भी रैंक्स में बड़ा हो आपसे। ओके जो मैंने अभी सब डिपार्टमेंट्स बोला एलएसपीडी, बीसीएस और पार्क रेंजर्स, क्या आपने इन डिपार्टमेंट्स के बारे में पहले सुने हो? बीसीएस और ये एलएसपीडी सुना था जी, पार्क रेंजर्स थोड़ा नया है। तो आप मुझे बता सकते हो फिर ये बीसीएस और एलएसपीडी का फुल फॉर्म क्या है? बीसीएस तो सर जी सर ब्लेन काउंटी वहाँ की होती है थोड़ी। नहीं पर उसका फुल फॉर्म क्या होता है, किधर की होती है? नहीं फुल फॉर्म उसका फुल फॉर्म तो नहीं पता सर। और एलएसपीडी? अच्छा जिस एलएसपीडी का भी फुल फॉर्म नहीं पता सर जी। लॉस सैंटोस पीडी है डिपार्टमेंट। हाँ उसका? जी लॉस, ये एलएसपीडी की आगे जी आज सर। लॉस सैंटोस नहीं पुलिस डिपार्टमेंट। ओके एसएसपी का पूछ रहा हूँ मैं, जिधर जिसके लिए एसएसपी आपने का अप्लाई है किया है। सैन एंड्रियाज। या फॉर इफ यू डोंट नो सैन एंड्रियाज स्टेट पुलिस, आप उसके लिए अप्लाई किए हो। हाँ जी स्टेट। अरे रे उसी के अंदर ये तीनों डिपार्टमेंट आते हैं। अनदर सब डिपार्टमेंट्स एज वेल। तो जी सर। जी कंटिन्यू आगे। हाँ वन सेकंड। हाँ तो क्या आपने कभी भी ये दो शब्द के बारे में सुना है कॉल्ड रीजनेबल सस्पिशन एंड प्रोबेबल कॉज? नहीं जी नहीं सुना है। ठीक है ओके थैंक यू सर। ऑलराइट जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके मैं आपके लिए बस वो मेरा आपका रेज्यूमे बस खोल रहा, मेरा थोड़ा ये टैबलेट अटक गया था। अच्छा मुझे बस क्या आपको पीडी कभी आपने ऐसा कुछ किया है पिछले एक हफ्ते में जिसमें आपको पीडी ने कभी रोका है या कुछ बातचीत हुई है कोई भी ऑफिसर से? नहीं जी ऐसा कुछ किया तो नहीं, जुर्म हमने। नहीं जुर्म भी नहीं, ऐसा जनरल कॉन्वर्सेशन कोई ऑफिसर से कभी बात हुई है? नहीं जैसे तो बात नहीं। ओके क्या आपको पता है कि हम ऑफिसर्स जब रेडियो पे बात करते हैं हम एक कोड लैंग्वेज में बात करते हैं? हाँ जी वो सुना है जी। हाँ तो आपके हिसाब से हम वो कोड लैंग्वेज में क्यों बात करते हैं? ताकि जी सामने वाले को पता ना चले कि क्या प्लान कर रहे हो आप। ओके ठीक है क्या आपने ये दो टर्म सुना है, डिटेन एंड अरेस्ट? हाँ जी सर जी ये तो सुना। क्या आप ये दोनों की मीनिंग बता सकते हैं मुझे? अरेस्ट तो हो गया सर जी कि किसी के खिलाफ प्रूफ मिल गया तो उसको अरेस्ट कर लिया, और डिटेन होता है कि उस पे शक है और पर प्रूफ ना है तो उसको डिटेन करके उससे बातचीत कर ली। ठीक है ओके सही है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अभी जब लोग एक सेकंड क्या पूछूं यार, इट्स लाइक आई नीड टू मेक हिम आल्सो फील कंफर्टेबल। तो हाँ क्या आपने कभी मिरांडा राइट्स के बारे में सुना है? नहीं सर जी ना सुना। नहीं सुना सर जी नहीं सुना। ठीक है ओके। तो अगर हम अरेस्ट कभी भी कर रहे हैं या कोई भी ऑफिसर कर रहा है तो अरेस्ट करने के टाइम ऑफिसर उसको क्या बोलता है? जिसको वो बोलता है कि आप पे पूरा अधिकार है लॉयर का और आपके शब्द आपके खिलाफ यूज हो सके हैं। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अगर उसको प्रॉपर्ली बोला गया है 2000% मिरांडा राइट्स, वही मिरांडा राइट्स कहलाया जाता है। अच्छा जी चलो नहीं बात बता दी सर जी आप शुक्रिया।
ओके तो मतलब जस्ट थिंकिंग, मैं आपको एक छोटा सा सिचुएशन देता हूँ, मुझे बस जानना है आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं। हाँ जी। सीन ये है कि समझ, बिकॉज आपके एक आपने बोला ना कि आपका जो वेपन ट्रेनिंग हुआ है आपका, राइट, जहाँ पे वो हाँ जी सर जी। ट्रैवल कंपनी में, तो जी समझ लो आपके सामने कोई बंदा है, उसके हाथ में एक पिस्टल है, एंड वो पिस्टल वो बस लाइक पता नहीं वो बंदा थोड़ा गुस्से में है, एंड वो ऐसे ही हवा में गोलियां चला रहे पिस्टल से एक पब्लिक प्लेस में, और आप एक ऑफिसर हो, तो आप क्या करोगे? जी, मैं उसको वार्निंग दूंगा पहले कि भाई साहब ये सब ना करो, और फिर भी नहीं मानेगा तो तब तो जी अरेस्ट करना पड़ेगा उनको, पर कैसे अरेस्ट तेज करोगे करके, उसको? तेज करके, ओके। तेज मार के जी पहले। एंड अगर जब बात से मानेगा तो बहुत बढ़िया। और अगर जब आप वार्निंग देने गए उन्होंने लाइक आपके ऊपर गोली चला ली, फिर आप क्या करोगे? तब तो पहले तो रेडियो पे बैकअप मांगना पड़ेगा जी, और फिर Surrender to dispatch, you can send फिर the तो next मुझे भी candidate. गोली चलानी पड़ेगी जी, तब तो 10-4 भेज रहा हूँ। बैकअप का इंतजार करना 20 पड़ेगा। rave. और ठीक है, ओके। एज ऑफ नाउ मेरी तरफ से इतने क्वेश्चंस थे, लाइक इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क। No, basics में I don't have any much. नहीं, आई हैव नो मोर क्वेश्चंस एट ऑल राइट नाउ, इफ यू हैव एनीथिंग। No, he has no experience, so like बस इतना ही मेरे लिए भी, हाँ like हाँ, cannot move into details. ऑलराइट। तो मिस्टर बलराम, आपका इंटरव्यू यहाँ पे खत्म होता है, आपका रिस्पांस आ जाएगा कुछ दिनों में जब सारे इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे, जी सर। ठीक है? तो वो टाइम तक रुके रहिए, एंड वी विल लेट यू नो कि ये इंटरव्यू का क्या स्टेटस है। ठीक है सर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्रिया सर जी, राम राम। हाँ, मिल गया। 222 dispatch, you can send the next candidate on the topmost floor. भाई ये तो बाकी सब में तो फिर भी ठीक था कि सिचुएशन में ये पूछ सकते हैं, नॉर्मल में ये पूछ सकते हैं, जिसको कुछ नहीं आता उस पे सोच ही नहीं पा रहे क्या पूछे। नहीं, वो पूछ तो पर यार सिचुएशन में जा ही नहीं रहा उनके पास ना, हमें आखिर में बेसिक अरे सिचुएशन में नहीं, इवन यू कैन नॉट गो विद लाइक मैचो फोर्स क्या होता है, इवन यू कैन नॉट गो विद क्योंकि ही हैज नॉट नेवर वो I will don't worry मैं लिख यू नो। पूरे भाई मेरा देख रहे हो, टॉफी खाओगे? हैं, तुम बर्गर खा रहे हो? मैं टॉफी खा रहा हूँ। इसमें से कोई खाली होता है तो मेरे को बोलना, ठीक है? और एक को लेके आऊंगा। Yeah, topmost floor पे the candidate is free. You can send the next one. इनको लेके आ रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, 10-4. इसका क्या होगा? मैं थोड़ी रिजल्ट अभी अनाउंस कर दूंगा स्ट्रीम पे यार, मैं स्ट्रीम पे रिजल्ट थोड़ी बताऊंगा। Yeah, hello, this is Rex Davis from San Diego State Park Rangers, and on my right is Jake Williams from San Diego State Police, the trooper. Good evening, sir. Myself, Barut Singh. आपका नाम क्या था? Yeah. Good evening, sir. My name is Barut Singh. बारूद सिंह, क्या आप हमें आपका रेज्यूमे एज वेल एज मेडिकल सर्टिफिकेशन भेज सकते हो? Yes, sir. कहाँ पे लेना है? You can just like give me a soft copy on email, you know, from my phone you can send it. Okay.
तो सर मैंने भेज दिया। हमने किसको भेजा है? आपको सर। शायद से टाइम लग रहा होगा टू लाइक रिसीव इट। अभी एक बार चेक करो ना आपका फोल्डर, लाइक मे बी और स्पैम फोल्डर या कुछ उधर गया होगा मे बी। है ये क्या बंद हुआ? कुछ तो टैब बंद हुआ मेरा। सर आपको भेज देता हूँ सर। आपका क्या है? I was the one who posted response. You will get it. बस वो रिस्पॉन्स सेक्शन में जाओ, उधर से ही विल। ये तो पूरा बोल हुआ था। लीना का वो सर हो गया? एक से तुम लोग लीना का वाईटी वाला बोल रहे हो, 12 के करा ही नहीं रहा हूँ। Yeah, I haven't received any of your medical certificate or anything on mail. What? Sent to me. जिसने इंटरव्यू के लिए आपको टैग किया होगा सर, चेक करो एसएससी इंटरव्यू रिस्पांस पे, उस मेल पे ही आपको भेजना है योर मेडिकल सर्टिफिकेट एंड योर रेज्यूमे। इफ नॉट तो सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दो, रेज्यूमे है। अब आया मुझे भाई। ये ईमेल भाई मैसेज रिक्वेस्ट में चले जाता है जो चीज़ है। ठीक है ठीक है। जब तक मैं आपका ये रेज्यूमे एंड मेडिकल सर्टिफिकेट देखता हूँ, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ? Okay sir, myself, my name is Bharat Singh. I am 25 years old. तो सर मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इन LSPD। वहाँ पे 5 महीने एज अ पुलिस ऑफिसर काम किया था। उसके बाद ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टेंसेस मुझे वापस इंडिया जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ इशू हो गया, उसकी वजह से मेरे पास इतना कुछ नहीं था कि मैं दोबारा LS जा पाऊँ, ठीक है। तो जितना कुछ था उसमें मुझे केवल मैं इसी कंट्री में आ सकता था और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, तो मैं फिर यहीं पे आया। तो लाइक यू वर अ पार्ट ऑफ द लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट? यस सर, मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 या 4 मंथ्स तक काम किया था। उसके बाद फैमिली सर्कमस्टेंसेस हुआ, कुछ क्या कहते हैं फैमिली में इशू आ गया था, तो हमें अर्जेंट ही वापस आना पड़ा इंडिया वापस। तो फिर इंडिया वापस गए तो वहाँ पे बहुत ही लॉस हुआ मेरा उस चीज़ में। तो फिर हम वापस LS नहीं आ सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और मतलब कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे इशू आ गया था, तो हमको फिर यहीं पे आना पड़ा क्योंकि इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाए थे वहाँ का टिकट। तो फिर अभी वापस अचानक लाइक लॉस एंजल्स कैसे आए हो? सर इसलिए आ गया क्योंकि सर आई विल टेल यू सर कि जहाँ पे मैं रहता था, तो सर जो मेरे मतलब मेरे पापा थे, तो वो एक समझिए गैंगस्टर थे बहुत बड़े। तो जब से उनका वो हुआ था, लोगों को पता चला था उनका रेट, तो मेरे को हर कोई पर्सनल टारगेट करता था कि तुम गैंगस्टर हो वो हो। तो मेरे को वहाँ पे कोई पर्सनल जॉब्स नहीं मिल रही थी क्योंकि मैंने वहाँ पे लिटरली सबके मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे UPSC की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि मेरे को सब एकदम उस नज़र से देखते थे कि तुम उसके बेटे, तो दैट्स वाई हमें वहाँ पे मतलब थ्रेट भी आते थे क्योंकि मेरे पापा ने बहुत लोगों के साथ गलत काम किया ना, कि इसीलिए वहाँ पे मतलब मेरे और मेरे भाई को बहुत लाइफ स्ट्रेस आते थे। तो मेरे भाई पे अटैक भी हुआ था, वो तो ICU में है अभी फ़िलहाल। तो फिलहाल मैं हूँ, तो मैं यहीं पे आ गया PD में क्योंकि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। तो आई विल
मैंने सजेस्ट किया कि पीडी करूँगा या फिर डीओजे करूँगा। तो जो आपका पापा का हिस्ट्री है जो भी है जो आपको ऑब्वियसली जी पता है, राइट? जी तो लाइक आपने कभी यू नेवर ट्राइड टू लाइक कांटेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट हिम? जी, बात ऐसी है कि हमारी जो फैमिली प्रॉब्लम की बहुत वो थी कि मेरे पापा और मेरे मम्मी में कहीं नहीं बनता था। हम ज़्यादातर अपनी मम्मी के साथ रहते थे। ठीक है, मम्मी ने हमको पढ़ाया लिखाया है। ठीक है, और बाकी जो पापा के थे तो पापा और मतलब बहुत ही मतलब एक तरह से मोस्ट वांटेड थे, तो वो हमसे भी नहीं मिलते थे। उन्होंने हमको मतलब हमें हमारी माँ ने हमेशा हमारे पापा से हमको बचाया, उनके उससे कि हम उनकी तरह ना हो। तो मैं अपनी माँ की तरह, मेरी मम्मी एक क्या कहते हैं एम्प्लॉय थी, सिविल सर्विस थी उनकी, करती थी वो एक छोटा सा। तो हम उन्हीं से मतलब इंस्पायर्ड है, अपनी मम्मी से ही। क्या तुमने कभी कोशिश किया है टू गेट योर पेरेंट डैड अरेस्टेड फॉर द क्राइम्स ही इज कमिटेड? कभी कोशिश किया है? जी, कोशिश की क्या बोलूं जी, हम उस मतलब ऑफ कोर्स कोशिश मतलब बोला गया है कि करते, लेकिन समझ रहे कि फैमिली वो है, तो मैं तो पहले ही कर दिया था कि मतलब उस चीज़ से मैंने मतलब कोशिश किया। ठीक है, मैंने अपने पापा को समझाया भी कि ऐसा मत करिए। ठीक है, लेकिन उनके अंदर पता नहीं क्या था, जस्ट उनका माइंड मेरे ख्याल से आई डोंट नो समझ नहीं पा रहे थे, और मल्टीपल टाइम्स वो अरेस्ट हुए, मल्टीपल टाइम्स वो जेल से भागे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कंप्लेन नहीं किया, मेरी मम्मी ने भी कंप्लेन किया। ठीक है, वो जेल में जाते लेकिन ही वॉज जस्ट अनस्टॉपेबल। ठीक है, उनके खिलाफ आई डोंट नो कितने वारंट्स निकले, कितने वो सब निकले। ठीक है, मतलब कंप्लेन हमने किया था एक तरह से। मैं उनको पापा बोलता नहीं हूँ, लेकिन मतलब हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं था उनका। ठीक है, उन्होंने मेरी मम्मी और मेरे भाई की दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन लोगों ने रिश्ता बनाना शुरू कर दिया कि हाँ ये उसका ही बेटा है तो ऐसा ही होगा। अच्छा, तो लाइक आपने कभी लाइक आप ये किधर की बात है? कौन किधर कौन लाइक तुम किधर से हो? मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, रामनगर। तो ये उत्तर प्रदेश की बात है, राइट? जी। तो लाइक आपने कभी ये नहीं सोचा कि लाइक आई विल ट्राई टू जॉइन दी उत्तर प्रदेश का लाइक जो पुलिस फोर्स है एंड? जी, आई वाज मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। जी, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि मैं मतलब जब रिवील हुआ कि मैं उनका बेटा हूँ, तो वो मेरे को इस नज़र से देखने लगे ना कि जैसे मैं उन्हीं की तरह हूँ। उस नज़र से, जो नज़र मैं कभी जिस नज़र से मेरी मम्मी ने बचाया कि कोई हमें ना देखे, उस नज़र से वो देख रहे हैं सर। आप वो समझ नहीं पाएंगे वो क्या होता है, वो हम ही फील कर पाएंगे। ओके, एंड अगर बाय चांस उत्तर प्रदेश जैसे आप आके ऑब्वियसली उधर कुछ दोस्त होंगे, कुछ लोग होंगे जो तुम्हें जानते रहेंगे, राइट? जी सर। अगर वो लॉस एंजल्स आए और उन्होंने ऐसा कुछ खबर फैलाया तो एक आप वो टैकल कैसे करोगे? बिकॉज फिर आपका इमेज लाइक देखिए सर, उधर ये था इन उत्तर प्रदेश सर, वहाँ पे पॉलिटिशियन का कुछ इशू था, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था। ठीक है, वी आर मतलब कोई भी आके कुछ भी कर सकता था, हम कंप्लेन करते थे, उल्टा हमें ही वार्निंग दे दी जाती थी। ठीक है, और ये लॉस एंटोस है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात सुनी जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट एविडेंस की आती है, यहाँ पे कोई वो नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ वाला कोई हो या वो हो। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस मैटर कर सकता है, फैक्ट मैटर किया जाता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे क्योंकि मैं इतने अपने लाइफ में आ गया हूँ ना, मुझे कोई कुछ भी बोलता है मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, क्योंकि मैं सह चुका हूँ वो चीज़ें। तो मेरा अब ये है कि मेरे लाइफ में ये है कि मैं अपना डिसिप्लिन और अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करूँ। सामने वाला मुझे कुछ भी बोले, मैं उसको प्यार से जवाब दूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूँ, क्योंकि मैं ही अभी सीनियर हूँ अपने घर में अपने भाई के बाद। यही है। ओके, तो आपके पास आपने बोला कि आपने अराउंड 6 महीने यू वर्क द एलएसपीडी, राइट? यस सर। तो आप मुझे बता सकते हो लाइक एक तुम्हारा लाइक रेगुलर दिन कैसा था? क्या क्या ड्यूटी करते थे? यस सर। सो मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है सर, तो मेरा ये रहता था, मैंने मतलब कैडेट फेज से स्टार्ट किया था एवरीवन स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले तो आई लव मुझे रिसेप्शन ड्यूटी बहुत पसंद थी। ओके। ठीक है, वहाँ पे एफआईआर लोग लिखवाने आते थे, मैं एफआईआर लिखता था। ठीक है, एफआईआर लिखता था, वहाँ पे काफ़ी लोग बहुत उस उम्मीद से आते थे कि पुलिस उनकी हेल्प करेगी। तो मेरे को उस चीज़ के लिए अवार्ड मिला कि मतलब एफआईआर सॉल्व करने के लिए। ओके। मतलब मतलब क्रेडिट में हम कोड वन पे नहीं आ सकते हैं, तो मैं रिसेप्शन ड्यूटीज़ करता था और हो सकता था एफआईआर सॉल्व करूं, कॉल्स पे ही करते उनको बुलाता था।
तो वो था। और बाकी अगर कोड 1 पे जाते थे तो वही कोड 1 पे आते थे, नॉर्मल 10-11 परफॉर्म करते थे। और जितने भी मतलब मेरा यही था कि जितना हो सके मैं अपने आसपास क्राइम को रोकूं, ठीक है। मतलब ना ही हो क्राइम, क्योंकि क्राइम से बहुत लोगों का लॉस होता है, इतना मैं जानता हूँ। जो जो कर रहा है उसका खुद का लॉस है, जिसका हो रहा है उसका भी लॉस है, काफ़ी फैमिली को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये क्राइम्स को थोड़ा वो करा जाए, मेरा मेन वही है। बाकी फिर प्रमोशन होता रहा तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर अपने अपने उस पर भी सीखने लगे कि क्या करना है क्या नहीं। तब भी फिर क्या कहते हैं, अपने लाइसेंस अर्न किया हमने ट्रेनिंग से, अपना मेहनत करके। कौन सा मेरे लाइसेंस? मेरे को मतलब SRU बाइक, SRU का लाइसेंस और एयर वन एंड व्हाट इज SRU? स्पीड यूनिट थी। लाइक उसका लाइक फुल फॉर्म? स्पीड यूनिट है। आपने SRU बोला ना? स्पीड यूनिट, स्पीड यूनिट लाइक जैसे वी हैव द SCU, दैट इज द स्पीड एनफोर्समेंट यूनिट। तो स्पीड रीइंफोर्समेंट यूनिट SRU है क्या? स्पीड क्या? स्पीड रीइंफोर्समेंट यूनिट। ओके, ठीक है। So A1 लाइसेंस ऑल्सो, एंड ऑल्सो मैं सिलेक्टेड हुआ था SWAT के ऑफिसर। ऑल्सो मैं SWAT का ऑफिसर भी था। ओके, सो आप बोल रहे हो कि आपके पास A1 था, यू वर SCA सर्टिफाइड, यू वर ऑल्सो लाइक had part of the SWAT डिपार्टमेंट। आपका SWAT में लाइक रैंक क्या था? I was not operator, I was SWAT operator. You were SWAT operator, okay. Yeah. एंड आपने कभी लाइक कोई SWAT ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए हैं? यस हमने किया है सर, हमने रेड किया था। ओके। तो विद हमारे मतलब वहाँ पे FIB भी थी, तो विद द हेल्प ऑफ FIB हमने घरों में रेड किया था। तो हमको एक्सपीरियंस है क्राउड कंट्रोल का एंड एवरीथिंग, कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। You mentioned about raids, तो can you tell me a procedure कि किसी बंदे के अगर घर पे आपको रेड करना है तो तो what is सर the मैं procedure बताता हूँ about that? सर। तो जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं। तो जैसे जो FIB डिपार्टमेंट होता है, तो उनका काम होता है एविडेंस लाना, ठीक है। वो एविडेंस इकट्ठा करते हैं, फिर उसको DOJ से अप्रूवल मिलता है। तो वो DOJ से जब अप्रूवल मिल जाएगा तो उस पर्टिकुलर घर में घर का ओनर नहीं आ सकता। वो घर का ओनर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सीज हो, मतलब जो घर है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए सीज हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में SWAT को और FIB को मिलकर उस घर में रेड मारनी होती है, विथ ऑल द एविडेंस कलेक्ट करना होता है। और SWAT का काम होता है FIB को गाइड करना, एंड जो वहाँ का एरिया है उसको मतलब ट्रेस पासिंग से बचाना, और वहाँ पे मतलब गार्ड करना एक तरह से। Anything else? एक सेकंड ना। तो लाइक आई एम नॉट श्योर, आपको पता लाइक सिंस यू हैव वर्कड इन लॉस सैंटोस, आपको पता होगा दैट वी हैव 3 सब डिपार्टमेंट्स, LSPD, BCSO एंड पार्क रेंजर्स, राइट? यस सर। एक बार कैन यू टेल मी व्हाट इज द LSPD एंड व्हाट इज द BCSO? देखो क्या है। LSPD लॉस सैंटोस PD डिपार्टमेंट एंड BCSO ब्लेन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट, जो काउबॉय होते हैं मेनली वो लोग। शेरिफ डिपार्टमेंट, हाँ, ब्लेन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट। वो BCSO ना वही तो होते हैं। BCSD नहीं होगा फिर, अगर वो ब्लेन्स काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट होगा तो? BCSO यस। नहीं, मेरे को तो ये ब्लेन्स काउंटी यही आता। BCSO ये पलीटो साइड के होते हैं, वो इनको सर उनको वो हमने नॉर्मली वही बोला कि आपने डिपार्टमेंट से D होता है ना, तो जैसे तो BCSO है ना, तो O से आई मीन ठीक है, कोई नहीं। एंड यू नो अबाउट SASP? यस, स्टेट सैनिटरी स्टेट पुलिस। ओके। आपको ये बेसिक्स पता है अबाउट डिटेनमेंट एंड अरेस्ट? यस सर। बिफोर वी गो टू दैट, मुझे बस पहले एक चीज़ पूछना था कि अगर बाय चांस ये तीनों डिपार्टमेंट से आपको, अगर आप सेलेक्ट हुए जी, एंड आपको ये ऑप्शन मिले कि यू कैन चूज एनी वन ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, आप कौन सा चूज करते हैं? जी मैं जो मैं बोल रहा हूँ ब्लेन काउंटी वाला करूँगा, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि सिटी के बाहर ज़्यादा क्राइम होता है सिटी के अंदर से, क्योंकि वो थोड़ा गांव वाला इलाका है ना। तो वहाँ पे समझ रहे हैं, वहाँ पे इतना अच्छा वहाँ पे सोर्स नहीं है कि यहाँ पे कैमरे लगे हैं वो लगे हैं।
तो अगर हम वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो सिटी में भी क्राइम कम होगा, क्योंकि सिटी का जो सोर्स होता है वो हमेशा बाहर से होता है। तो अगर हम बाहर ध्यान देंगे कि अगर बाहर का ही सोर्स बंद कर देंगे तो सिटी में कोई सोर्स ही नहीं आएगा क्राइम का, तो इट विल बी ईजी फॉर बोथ डिपार्टमेंट। एंड अगर बाय चांस हमने लाइक वो सारे इंटरव्यूज होने के बाद रिस्पॉन्सेज आने के बाद हमें हमें फील हुआ कि तुम बेटर फिट हो LSPD या पार्क रेंजर्स में, और हमने आपको वो कोई डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो आपको कोई दिक्कत होगी? नो सर। अच्छा, ओके ओके, नेक्स्ट यू कैन गो अहेड। Yeah, as mentioning about that, आपको detainment and arrest का पता है? Yes sir. In what scenarios you go for a detain and what scenarios you go for a arrest? And in detainment, what can you do and what you cannot do, and in arrest, what you can do and what you cannot do, ऐसा? Sir, in reasonable suspicion we can detain. ठीक है, just an example I am giving you कि अगर we just got call of 10:13, ठीक है, गन शॉट्स फायर्ड वहाँ पे होता है और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक बंदा वहाँ से जा रहा है उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वो है हमारा RS रीजनेबल वो है, ठीक है, तो हम उसमें उससे डिटेन कर सकते हैं, ठीक है, उससे डिटेन किया जा सकता है कि हाँ उसने कुछ किया नहीं है, और इन डिटेन अगर उसकी विद इन्फॉर्मेशन हम उसका GSR टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो आप बोल रहे हैं कि अरेस्ट का क्या होता है, तो प्रोबेबल कॉज होता है। इन दिस हम हमारे पास एक एविडेंस होता है, हमारे पास आई विटनेस मतलब एक एविडेंस है जिससे हम उसको कर सकते हैं। जैसे मतलब उसी पर्टिकुलर जैसे 10:13 का ही बोल रहा हूँ, गन शॉट चला और हमने देखा उसने अपने आंखों से गन शॉट्स किया, भले एयर किया या फिर कहीं और पे, तो वो एक प्रोबेबल कॉज है, उसमें हम उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। Anything else? Okay, what do you know about level of forces? Level of forces, तो level of forces means थोड़ा वो बताइए, I will just लेवल ऑफ फोर्सेस मतलब जैसे किस कैटेगरी में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देख कितने लेवल ऑफ फोर्सेस होते हैं? एक कोई बोले फिर मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, मैं कैच नहीं कर पा रहा बोल रहा लेवल ऑफ फोर्सेस। लीथल फोर्स होता है, नॉन लीथल होता अच्छा है, लाइक कितने लेवल ऑफ फोर्सेस होते हैं? सर आपने बोला लीथल्स हो, मतलब लीथल्स में सर मैं थोड़ा उसमें मतलब आंसर देने के वो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। Okay, never mind. What is match of force? मैच ऑफ फोर्स का मतलब वही है कि सामने वाले से अपनी फोर्स मैच करना, मतलब अगर सामने वाला कोई मतलब अगर उसके पास क्लास 3 है तो हम क्लास 3 यूज़ करें, अगर उसके पास रॉबरी में कोई मतलब एनी फास्ट व्हीकल है तो हम उसके लिए फास्ट व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, उससे मतलब मैच फोर्स करें, बराबरी करें उसकी। ओके, मुझे एक चीज़ बताओ इसमें कि अगर आप अकेले हो, क्या आपके सामने 3 लोग हैं, ओके, वो 3 लोगों के पास बस एक पिस्टल है और कुछ नहीं, जी एंड यू आर अ वेरी हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर, जी, एंड आपके पास इक्विपमेंट है ऑफ AR असॉल्ट राइफल, जी, जो और लाइक कोई और ऑफिसर को लाइक एक्सेस नहीं है ये सब, एंड दोज पीपल आर कमिंग टू शूट यू डाउन, वो टाइप पे आप उनके पास बस पिस्टल्स है, आपके पास पिस्टल भी है, वो राइफल्स भी है, टेजर्स है, बैटल्स है, लाइक सब कुछ जो भी पीडी इक्विपमेंट है, आप वो टाइम पे क्या करोगे? सर अगर मैं लास्ट इट्स अ कोडेड, अगर मैं लास्ट ऑफिसर हूँ तो सर कोड रेड नहीं है, बस अच्छा, 3 लोग हैं एंड दे आर कमिंग टू टेक यू डाउन, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता है, कोड रेड कुछ नहीं है, तो लाइक आप क्या करते हैं, कैसे लाइक क्या करते हैं? आई हैव बैकअप्स की नॉट ओनली मी, यू आर अलोन। सर जहाँ तक मेरे को इतना पता है सर, अगर एक शॉर्ट ऑफिसर तो शॉर्ट ऑफिसर 1v4 करने का वो रखता है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल ऑफिसर हूँ मेरे पास AR है तो फिर अगर मैं वो हूँ तो मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए आई कैन यूज़ AR, क्योंकि फिर वो होगा कि उनके पास मैन पावर ज़्यादा है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ फिर AR। ऑलराइट, ओके ओके, सो ठीक है, ओके, I'll just ask you another question. So the thing is, मुझे अभी just to understand कि जो आपने ड्यूटी पे किया है, एक ट्रैफिक स्टॉप होता है, राइट? Pressbaj, you can send the next candidate. वो ट्रैफिक स्टॉप आप एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे करते हो? Like what do you exactly do?
ये क्यों asking something? आवाज़ आ रहा है? हेलो हाँ हेलो। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो एक ट्रैफिक स्टॉप होता है, राइट? Generate whisper or Hello. speak normally, please. Can hear you here. एक सेकंड, 10-9? I was just Say to telling send it, Generate send to it. speak 10 normally or either whisper. ओके, तो आपको 10 कोड्स का नॉलेज कैसा है आपका? मेरे को लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन जो पुराना वो अच्छे से। ओके, मुझे पता है एक चीज़, देखो, अगर मैं एक सिचुएशन में हूँ, ठीक है, जी, और वो सिचुएशन समझ लो एक बैंक रॉबरी है, अच्छा, एंड मेरे पास लाइक मतलब अगर मुझे ये ऑफिसर एक्स को कुछ बोलना है, मैं आराम से रेडियो पे दबा के बोल सकता हूँ कि यार ऑफिसर एक्स, यहाँ पे बैंक रॉबरी हो रही है, ये गाड़ी बस लेके आ जाओ, जल्दी रिस्पॉन्ड करो, ये बोल सकता हूँ। पर मैं तभी एक्चुअली मैं वो नहीं बोलता, मैं 10 कोड में बात करता हूँ। ऐसा क्यों? सर आप ऑफ कोर्स सर, जो 10 कोड्स होते हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं तो सर, ताकि क्विक कम्युनिकेशन हो ऑन रेडियो, क्योंकि सर रेडियो पे अगर हमारा जो डिस्पैच होता है उस पर मल्टीपल ऑफिसर होते हैं, अगर आप पूरा बोलेंगे तो इट विल टेक टाइम, तो सर जो अदर ऑफिसर्स होंगे उनका जो इमरजेंसी कॉल होगा तो वो देने में दिक्कत होगा। तो अगर शॉर्ट्स कॉल रहेगा तो इट विल बी इजी टू एवरीवन अंडरस्टैंड कि देयर इज अ एक्टिव 1090 एट लीजन नीड 78, ठीक है। तो इट विल बी इजी, तो अगर आप ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे लीजन पे बैंक रॉबरी हो रही है, हमें एडिशनल की जरूरत है, इट विल टेक मोर टाइम, चैट चुप हो जाओ, बुली मत क्योंकि करो। डिस्पैच एक ही होता है। अगर मल्टीपल सिचुएशन में हम चेंज कर सकते हैं अगर अलग होता है, लेकिन इट विल बी मोर इजी टू एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड क्विक। ओके, तो जो मुझे ये जानना है कि आपने जब बोला है कि अगर वो बंदे आपको लाइक वो पिस्टल जस्ट पॉइंट कर रहे हैं, यू सेड दैट इट इज़ अ कोड रेड सिचुएशन, तो आई जस्ट वांट टू नो आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय अ कोड रेड, लाइक व्हाट्स अ कोड रेड? सर कोड रेड मीन्स सर, अगर वो हम पे फायरिंग करते हैं तो इसमें कोड रेड सर, जैसे अगर वो मल्टीपल वार्निंग्स देते हैं तो वो एक तरह से इनिशिएट करना चाहते हैं कोड रेड, एंड अगर उनकी तरफ से शूटिंग पहले होती है तो इसमें सपोर्ट रेड। ओके, एक ट्रैफिक स्टॉप और एक फेलिनी स्टॉप में डिफरेंस क्या है? ट्रैफिक स्टॉप इट्स अ नॉर्मल स्टॉप एंड फेलिनी स्टॉप इज अ हाई ग्रेड, मतलब एक हाई ग्रेड क्राइम का जो वो होता है उसको हम लोग फेलिनी कहते हैं। यूएस उसमें कैटेगरी है, तो उसमें हाई ग्रेड जो है तो उसको फेलिनी कहते हैं। फेलिनी स्टॉप इज ऑल्सो, द कोड में बोले तो उसको कोड 5 कहते हैं, इन विच हमको पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आइडेंटिफिकेशन मैच करती है देन वी हैव टू कॉल 78। आफ्टर 78 हम उसके ऊपर ब्रीच इन करेंगे पर्टिकुलर सस्पेक्ट के ऊपर। ओके, सो आपने बोला हाई ग्रेड क्राइम, राइट? या felony is a high grade crime like murder, bank ओके, robber. सो क्या आपके हिसाब से किसी की गाड़ी चुराना इज अ हाई ग्रेड क्राइम, और आप किधर रखते हो उसको? Sir, it's a I will think it's a, according to me it's a average crime. It's a crime but in category of it's a average. Okay, एक व्हीकल उसने किया है चोरी, तो इट्स नॉट एन felony, क्योंकि felony मीन्स हाई ग्रेड, इसमें उसने बहुत वो किया है, जैसे बैंक रॉबरी किया है या फिर किसी को मर्डर किया है या फिर बहुत बड़ा मतलब स्मग डीलर है या फिर समझ रहे जिसने मल्टीपल टाइम्स पीडी को चकमा दिया है। ओके, तो फिर मुझे बताइए एक चीज़ कि अगर एक लोकल ने 911 किया कि उनका एक ऑडी R8 चोरी हो गया जी, एंड आपको वो ऑडी R8 दिखा जी, आपको आइडिया नहीं है कि उसके अंदर कौन बैठा है, उसके अंदर को क्यों बैठा है, उसके अंदर वो एक्चुअली उसे चोरी किया है भी कि नहीं किया, आपको कुछ आइडिया नहीं है। जी, शायद से जिसने 911 किया हो उसके बेटे ने गाड़ी निकाल दिया हो उसको बोले बिना, ये भी हो सकता है। बट आपको रिपोर्ट आया है कि इट्स अ स्टोलन व्हीकल। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल परफॉर्म 1011 ऑन इट, ठीक है। आई विल चेक द नंबर प्लेट, अगर उस नंबर प्लेट पे लिखा रहता है कि ये कोई रॉबर की मतलब कहीं यूज़ हुई है या फिर, तो सर आई विल कॉल 78, अदरवाइज आई विल कॉल 77 फॉर दैट ओनली कि इट्स अ नॉन इमरजेंसी। तो आई विल जस्ट मैं 1011 परफॉर्म करूँगा नॉर्मली। अगर मुझे लगता है कि ये कोई मतलब अगर नंबर प्लेट में लगता है कि हाँ ये व्हीकल रॉबरी में यूज़ हुई है या समथिंग इन दैट, तो सर आई विल लेट मी मूव, आई विल कॉल इट्स अ कोड 5 कि यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ है, तो बैकअप विल।
10-8 after CORSAIR. Otherwise it will be normal 10-11 and only 77 needed. वैसे मैं ये नहीं पूछा था कि क्या करोगे. I was just going to ask कि is it a traffic stop or a felony stop. Like I would recommend कि It will be a traffic spot. I would recommend कि आप पहले वो पूरा सवाल सुन लो at least before jumping into an answer. Okay. हाँ, so would it be a traffic stop or a felony stop? Sir, it will be a traffic stop. Okay, it will be a traffic stop. Sir, after मतलब वहाँ का वो scenario जान के it will be converted into code 5 or something. क्योंकि sir we don't know that हम छोटी चीज़ पे मतलब कोड मतलब 78 नहीं वो कर सकते हैं कोड 5 क्योंकि it's a वो बहुत इमरजेंसी चीज़ होता है. Are you saying stealing somebody's vehicle is a छोटी चीज़? नहीं मतलब जो हाई ग्रेड क्रिमिनल्स होते हैं नॉट क्राइम होता है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. लेकिन जस्ट कि जो चीज़ हम हैंडल कर सकते हो उसके लिए हम बाकी ऑफिसर्स को नहीं परेशान करें या फिर उनको डिस्टर्ब ना करें. अगर हो सके तो विल कॉल 77 फॉर इट अनटिल अनलेस वो हमारे हाथ से ना वो हो. अगर वो हमारे हाथ से काबू हो देन विल श्योर कॉल 78. ओके, ठीक है. तो ओके आई विल मुझे बता क्लास 1 क्लास 2 एंड क्लास 3 वेपन्स का डिफरेंस क्या है. सर क्लास 1 इज नॉर्मल जो आपका रजिस्टर गन होता है. क्लास 1 होता है जो आपको गन एमुनेशन से मिलता है और जो क्लास 2 होता है वो आपका सेम काइंड ऑफ हैवी पिस्टल या मिनी एसएमजी समथिंग. एंड जो क्लास 3 होता है वो आपका एआर हो जाता है कॉम्बैट जो दैट बिग गन्स जो वो होता है वो क्लास 3 में आता है. मेरे को नाम अभी सबके गन के नहीं आते लेकिन आई कैन आइडेंटिफाई. दैट इज ओके. तो मुझे बता एक चीज़, अगर एक एमुनेशन स्टोर इज गिविंग आउट लाइसेंसिंग फॉर अ स्मॉल एसएमजी, यस, क्या वो क्लास 1 होएगा या क्लास 2 होएगा. सर अगर वो लाइसेंस दे रहा है तो पीडी से ऑथराइज ही होगा लाइसेंस. ऑफ कोर्स यस, ऑथराइज है. जी हाँ, तो फिर अगर वो ऑथराइज दे रहा है तो इट विल बी क्लास 2. अगर वो मिनी एसएमजी है तो इट विल बी क्लास 2 सर, क्योंकि वो ऑथराइज दे रहे हैं तो पीडी ने ऑथराइज करा होगा. तो यस दे कैन कैरी क्लास 2 अगर वो लाइसेंस है देन दे कैन कैरी. अगर वो ऑथराइज बट दे कैन नॉट मिसयूज. क्लास 1 और क्लास 2. अगर वो ऑथराइज नहीं है तो वो गन इलीगल गन होगी, उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा. मतलब जो जितनी भी हाँ क्या गन कॉन्फिस्केट किया जाएगा वो अलग बात है. तभी भी अगर चाहे वो गन लीगल हो इलीगल हो, सारे गन्स फॉल अंडर अ क्लासिफिकेशन. तो वो क्लास 1 होगा क्लास 2 होगा, वो पूछ रहा हूँ. अगर वो बिना सीरियल नंबर के. यस, विद नो सीरियल नंबर. इट विल बी क्लास 2. अच्छा, ओके. आर यू श्योर अबाउट दैट? अगर वो मिनी एसएमजी पिस्टल है तो इट विल बी क्लास 2. अगर वो सीरियल नंबर के साथ भी क्लास 2 है तो विदाउट सीरियल नंबर इट विल बी क्लास 2 ओनली. ओके, ऐसा नहीं है ना कि वो क्लास 3 होगा विदाउट अ सीरियल नंबर. नो सर, क्लास 3 मतलब एसएमजी हो जाएगा. फिर वो मिनी एसएमजी इज काइंड ऑफ पिस्टल लुक जो ऑटो गोली मारती हुई ना. ओके, मुझे बताओ अगर अब द डिफरेंस बिटवीन 1077 1078 एंड 1099 और कब यूज़ करोगे. 1077 होता है नॉन इमरजेंसी बैकअप, ठीक है. इट विल मेनली यूज इन 1011, ठीक है सर. और 1078 मीन्स होता है कि इमरजेंसी बैकअप. इट विल यूज अगर कोई फर्स्ट यूनिट रिस्पॉन्ड करती है एट 90 तो वो बुलाएगी इससे एक्टिव 90 नीड 78. और 1099 होता है ऑफिसर्स का कॉल होता है. 1099 जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका कॉल होता है. 99 ऑफिसर्स, डायरेक्ट ऑफिसर्स. एंड 1099 कौन सा टाइप की सिचुएशन में यूज़ होता है. 1099 बेसिकली मीटिंग में यूज़ होता है या फिर कोई बड़ा सिनेरियो होता है उसमें यूज़ होता है. इसमें सारे सिनेरियो का एग्जांपल दे सकते हो. जिसमें जैसे अगर कोडेड चल रहा है तो अगर सारे ऑफिसर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा जो पैनिक हो जाते हैं तो जो हमारे लीडिंग ऑफिसर होते हैं वो एक बार 99 करते हैं. तो एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो इसीलिए 99 बुलाया जाता है. 99 कॉल मतलब सबको इंक्लूड होना है जो वहाँ पे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट ऑफिसर. एंड अगर लाइक एक कुछ भी सिचुएशन हो रहा है, जैसे एक शूट आउट हो रहा है एंड सामने समझ लो तुम लाइक सामने 4 सस्पेक्ट्स हैं. जी, शूट आउट हो रहा है, सामने 4 सस्पेक्ट हैं. जी. एंड आप हाईएस्ट इन कमांडो, आप सबसे सीनियर ऑफिसर हो. जी. और आपको अपनी टीम की कैपेबिलिटीज़ पता है. तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाउ मेनी ऑफिसर्स वुड यू रिक्वायर.
जी अगर 4 हैं तो आई विल से कि 8 ऑफिसर्स विल बी इनफ. ओके. अगर 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 वो शूट आउट करें, इट्स अ गैंग फाइट, सो विल नॉट इन्वॉल्व अनटिल एंड अनलेस वो बॉडीज या फिर कुछ ऐसे हरकतें करते हैं कि हमें इंगेज करना पड़े. Okay. कि अगर या So have you been a part of like gang related shootouts? नॉट सर, लेकिन मैंने अपने उसमें देखा था कि अगर गैंग फाइट्स होती है तो हमको एक साइड करना होता है अनटिल अगर वो लोग बॉडीज को लेने जाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ वो करते हैं तो सर वी कैन चार्ज ऑन देम अनलेस अनलेस हमको साइड में रहना पड़ता है क्योंकि सर गैंग्स में मेरे को इतना गैंग सिचुएशन का आइडिया नहीं है. नहीं पर like क्योंकि आपने ही बोला about gang related shootouts like so it wasn't us so but ठीक है. Okay. सर जितना आई गेन द नॉलेज फ्रॉम माय लास्ट डिपार्टमेंट से वो मैं आपको बता रहा हूँ. Okay. And आपके लास्ट डिपार्टमेंट में आपके पास like कौन से लाइसेंसेस थे? मेरे लास्ट डिपार्टमेंट सर कार, बाइक एंड एयर1 एंड ऑल्सो मतलब स्वॉट ऑफिसर. SWAT ऑफिसर की SWAT कुछ और? ऑपरेटर इसमें हाँ ऑपरेटर. ओके. एंड ये जो लाइसेंसेस है ये एक्वायर करने के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? सर एक्वायर करने के लिए सर ट्रेनिंग हुई थी, टेस्ट हुआ था तो हमको टेस्ट पास करना पड़ा था. दो टेस्ट हुए थे. एक हुआ था मतलब रेसेस टाइप का टेस्ट था, उसमें हमको लिमिटेड टाइम में उस चीज़ को पार करना था. एंड सेकंड था कि जो हमारे जो उस डिपार्टमेंट के जो मतलब वो थे सुपरवाइज़र, उनको हमें चेस करना था और एक टाइम लिमिट में हमको उनको मतलब उनके पे आए रखना था. ओके, समझ गया. ठीक है. आई मीन दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ माइंड. रेक्स, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? Officer Rex? He might have had some urgent paperwork or whatever. तो okay, your interview ends here. आपका जो रिस्पॉन्स है जब सब सारे ऑफिसर्स, यू गॉट अ लॉट ऑफ फॉर्म्स, तो जब सारे ऑफिसर्स के इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा. तो क्वेश्चन बोलो. जैसे आज 20 लोग का हुआ है तो इस 20 के मतलब अभी के बाद होगा कि जब पूरा हो जाएगा तब? जब पूरा हो जाएगा तब. मैंने अभी बोला लाइक आफ्टर ऑल द इंटरव्यूज आर कंप्लीट तब आपका रिस्पॉन्स आएगा. Got it. I thought the batch one. Okay. नहीं. Got it. Yep. Anything else? Sir? No, nothing else. Like, thank you for your time. Thank you so much, sir. Yeah. जाना कैसे? You can take the left staircase down. क्या हाल है रोनित? क्या हाल है? Want to dispatch, you can send the next candidate. 10 for. Just for information purposes, how many candidates are waiting? कितने लोग हैं? 5. 10 for, copy that. No bullying. ओमका तू आ रहा है? But you know your shit, man. Like bullying you is अलग बात है, but you know your shit अगर तू आ रहा है तो. अब नहीं, नेक्स्ट में भी. अच्छा. आई मीन यू नो योर स्टफ. कैसा था रोनित इंटरव्यू? रोनित कैसा गया इंटरव्यू? रेक्स? ओ रेक्स? यप. हाँ है ना तू? हाँ ठीक है. Should I call the next one? Already called. He should be on his way. Oh, actually, I had an important one. कोई दिक्कत नहीं. कुछ खाना पीना चाहिए ऑफिसर आप लोगों को? नहीं सर, आई एम गुड. नहीं. ठीक है, थैंक यू सो मच. जी सर, थैंक यू सो मच. आ जाओ, नॉक करके जाना, ठीक है? Who's this? Yeah, you can come in. Can I come in, sir? Yeah, आ जाओ. Yep. Oh, Spencer. Sorry, I'm not aware of the time, sir. Good afternoon, good evening. No worries at all. Good evening, yeah. Good evening.
Myself, I'm Officer Jake Williams. On my left is Rex Davis. We are the High Command of this department. Can I know your name, please? That would be Spencer Johnson. Spencer Jones. Would you mind sending me a soft copy of your resume as well as the medical certification? Of course. Please allow me a minute. No please. worries. Take your time. Just put the bag over here. Yeah, that's complete. We can have a seat also if you like. Okay, thank you. Appreciate it. Yeah. Arfi! Meanwhile, he unpacks. I'll be back in like 30 seconds. Okay, Jake? Yeah, no worries, no worries. Yes, I've the digital copy. Yeah, but got that the would be my copy. resume, my medical certificate. Yeah. That Thank was also correct. Thank you so much for that. So while I actually go through your resume once again, I've already gone through it because you had sent it to us before as well. So I'll just be going through it once again. Meanwhile, can you tell me something about yourself? Am I audible? Yeah, I'm audible, right? Yes. Yeah. First of all, thank you for the opportunity, Officer Williams and Officer Davis. So myself, Spencer Jones, and I'm from India. I'm an Anglo-Indian, and Anglo-Indian for very long, since Okay. since the war which actually broke out, and then the British left. So that's how it is. My mom and dad actually are both from India itself, and they were a small family. I'm the only son, so I like hobbies are cricket or just roaming around, traveling, music, etc. I'm a very enjoyable person myself, in terms I keep myself entertained if I don't feel bored, right? So the activities can be sometimes challenging, so it's fun, right? Sometimes it can be as simple as things which keeps me happy. I do that. Okay. I never get bored. So, and apart from that, I like to help people a lot, which may include I'm actually helping out local old age homes or something like that, or probably going to charity events, etc. to help the poor. And that's about at this moment. All right. Where did you say you're from, by the way? I'm from Kolkata, sir. Kolkata, India. So, West Bengal. what brought you to Los Angeles? Dreams and money, sir. Well, fair enough. I mean, yeah, Los Angeles is Actually, I don't want to hide anything, because I think the trust is the most important thing that we can have in the department. Even if I get an opportunity, the trust will be the primary ceiling factor. So
in all trust, I'm just trying to actually buy the dream things, for my mother and father because they deserve it. Fair enough. That is nice. So, I mean, I can see on your resume that you do, but I will still ask you. So you have Please. past experience, right? Yes, sir. Yes, sir. So, like, can you tell me about a general day in the life of you when you were like working? Of course. I mean, thank you. So I mean, a day in life of a policeman in Kolkata is always very, very hectic, to be Okay. honest. You start your beginning of the day with generally reporting to work. You have your senior command, available for the huddle, for the meeting. Mhm. They give you the brief of what exactly is happening, any past cases which are there, any that requires immediate attention, all Mhm. those things. Then we have any current situations or the FIR that we have in the day book so far, Okay. in the early hours or the late hours that we have got. And then we also think about any other activities, from community perspective that we are doing as a team. So all those important things are discussed. If there are any VIP visits which are happening, we also take care of that as well. So all those debriefing is being done, and then we push off from that situation in our normal day work. But when it comes to me, I have to report alongside my senior command, who is going to be on the streets, who actually manages the certain localities or regions. Mhm. He's head of that district. So I be alongside him. My job is to make sure I'm assisting him in his normal day patrol. His Okay. normal day patrol also involved in checking out different posts if people are actually attending to civil situations, or let's say any criminal situations also at prompt levels. Also at the same time, if we have optimum force on the field or in the district, etc., etc. So I keep a check on all of that. Finally, evidence collection is also one of the things that I do, Mhm. and also at the same time reporting whatever I have collected and documenting it accordingly. All right. So Okay. yeah, that's what is for the Fair moment. enough. If it requires any criminals or something to be caught and like putting them behind bars, I do that, but usually it has been done by other officers as well, so I don't want to take Fair enough. credit for that. Well, that's completely fair. So just about us, I'll just tell you one small thing. We Yes, sir. are currently under the SASP. We are subdivided into 3 departments. One Yes. is the LSPD, the Los Angeles Police Department. Yes, sir. One is the BCSO, Blaines County Sheriff Office. Yes, And one yes. is the Park Rangers. Yes, I read a little bit Yeah. about the departments as well. So if this interview does go well and you do get selected, would you have any preference of a specific department you would work under? The straight answer is no. The second thing is that I don't have any preference as such, Mhm. and the reason why is because I think the reason why this interview is happening is because of a requirement which is Yep. available in various departments, and if my expertise can show some tangible differences in any of the departments, I'm more than happy to go in that. All right, fair enough. So, I mean, I'll just go quickly through Sure, some sir, of the please. questions that we have. Please. I mean, they might seem basic because I see that you have a lot of experience, but still, like, That's fine. there are a lot of people that come into the department and try to have a variety of things written on the resume, and it might be true, might not be true. But looking at your experience, these are very basic questions. So I'll just like a 3 or 4 questions just to see your understanding. What is the difference between reasonable suspicion and probable cause? Thank you, sir. That's a great question. A reasonable suspicion is that we have a reasonable belief that a crime is about to happen or happen, and it just gives us the benefit, not a benefit of doubt. It gives us the opportunity to investigate the thing of a crime, Mhm. right? A probable cause is something wherein we have a logical reason that a crime has happened or will happen, and we have a supported evidence with that. All right, okay. So a lot of Dispatch, can you send the other just one candidate? second. Yeah. I'm sending. Yeah, so a lot of people have a very high misconception about one thing. So that's why this is that one question I probably ask every candidate. I Sure, sir. want to understand what, according to you, is the meaning of the term code red. Sir, a coded is that's a good question again. A coded is basically wherein an area is actually under the it's a violent situation, right, Mhm. which is actually happening. Our primary job is to protect and serve the civilians of the city, right? Correct.
And let's say, for example, like I'll take an example of this particular parking lot itself, which is we can see from a great view that we have from here itself. Mhm. So if a shootout actually happens in that area, I do see that there are other barriers as well on the left hand side, right? But this entire area can be considered, termed as a code red, and we can block this complete area for other civilians to know as well. All right. Okay. Yeah. So, okay, now another thing is that a lot of, like, sometimes when we talk on the radio to each other, right? Of course, Right, you know, like the radio communication is Yes, always sir. something that helps us do our duty more efficiently. Yes, sir. Now, the thing is that if I am in a situation where I'm, say, performing a traffic stop, Right, sir. I can pick up my radio and say something like, I'm just pulling over this vehicle in front of Burger Shot. Can somebody come and help me out? But instead of that, we use codes. Yes, yes. According to you, like, why codes? Why can't we just talk to each other in a general conversation and make life easy? That's a good question again. A good question. Officer Williams, it's actually precise and concise. Okay, that is why we need to be very precise on our conversation that we are having on the radio, and we need to be spot on as well. The reason is that if we keep on blabbering about we are doing this, we are doing that, we are actually confusing the other officers as well, which might be involved in various other situations. The best part is to be precise and concise, and you just mention it through the radio comms, so that because our radio comms actually term a specific to it, right? So if you say a specific term, then it actually the other officer gets to know, okay, this is actually happening, right? And they are spot on with that. So all right, okay. So you said you were heavily like involved in a lot of paperwork and a lot of like figuring True, out sir. evidences and all of that, right? True. So I just want to understand from your point of view, as once there was an active situation going on, you can take a situation of your choice, or Right, let's consider it a robbery of a bank, which is Right, a sir. very major crime. Right, sir. The suspects have been caught into custody, Right, sir. but they haven't been brought to the PD as of now. They're still at the end point of the situation, where where their vehicle is, you are with the suspects are in cuffs. From that point to reaching the PD, in terms of evidences and creating of an MDT, like what would be the procedure you would follow, and how would you go about it? Good question again. I would say that's a great question. Actually, not a good question. Officer Williams, first of all, if I get this right, the suspects are already been cuffed. Correct. Right? We have a very great probable cause that the suspects are there and the crime has happened. We have all that, Absolutely. right? But we understand that. But our, the Department of Justice, or for example, like whatever charges we are going to put forward, they Mhm. don't know it yet. So for Correct. that, we need to provide evidences. Absolutely. So in order for our system to understand that, we need to provide the evidences. So we need to gather the evidences. The first things first, we need to take on-scene evidences, right? Whether the crime has happened, we need to know who was the hostage. That is number one. Who is the major VIP over there? Because I need to secure that person first, right? Robbery has happened, for example. Okay, so which bank the robbery had happened, right? Who was involved? Where it happened? What cars was involved, right? Who is the owner of that car? What all things were used in that particular robbery? Was it an armed robbery? Was it a non-armed robbery? How the hostage was actually kept under, hostage situation, right? Was any person harmed? All this information, as far as the on-scene evidence is concerned, we need to take care. We also need to make sure that who are the persons who are involved. So we need to have photographic evidence as well of that particular situation. So that actually helps us to understand, okay, these were the perpetrators who were involved in the robbery situation. We take it further from there. Then we can take them to the cells, but in case, obviously, if they require any medical attention, we can take them to the I think it's Mount Zuna here, which I Correct. have been to a Yep. couple of times. So Mount Zuna can help us in various norms, not just treating them, but also in case if we have any probable cause, or that they might be consuming something, we can request for a blood examination as well, whether the robbers were actually in influence of any narcotics at all. So that way it will help, for us to generate much more, factual evidences and support the case as well, and put it in our evidence. And then we can bring them to the cells for further questioning, interrogation, and if required, provide lawyer. And then, after all that, take the fingerprints, biometrics, and everything. Got it. Okay. Right. And if they require a lawyer, we will definitely put it forward for them, because as per their Miranda rights, they are supposed to know. It's a warning that
these are their rights and they are supposed to know it, and if they utilize that, then it will help them. If there is a lawyer available, they will go through that. If not, then we can just prosecute them as per the charges. All right, okay. So I was just looking at your resume, and Right, I sir. read about that you've led the county sheriff department, right? Apologies, sir. No worries, Yes. no worries. Yeah. Yes, sir, I have. So that means you are very like familiar with training people, right? Yes, I'm familiar with training people. Actually, I was in a terrain environment, sir. Okay. So I was never involved in these city situations, mostly because the terrain environment has been something very, very personal to me, because that is where my mom and dad actually come from, and we started our livelihood from. Right? So those suburban areas, the rural areas, I would say, those are very closer to me. So that's why, the terrain environment is something that I have always been under. But of course, couple of times when there have been a VIP visits, etc., they have called me. And for that, I have been in the city. Rest, it's all terrain, sir. Sara terrain mein hi tha almost. All right. So, I mean, I've been looking at your experience, and I just, out of curiosity, what I wanted to know is that since you have led a department, since you have done, I mean, you have a lot of qualifications. So, if by chance, I mean, if we get selected and by chance there's a consideration that we feel that you're fit enough to train other officers, would you be up for the challenge? I would be say it is a great opportunity, but I also want to share my shoulders with other trainers as well, in case if they can, someone can train me as well, because I think there is a area of opportunity for me to improve, and therefore I would ask if someone can give me a little bit of orientation. That will also be really, really helpful, so I can get abreast with the current situation here, what all things are happening in the office and the department, and then I can definitely train the other people as well. But if the straight answer, yes, I'm up for the challenge as well, sir. Okay. Thank you for considering me so, in case if that happens. Yeah. So I mean, I have two situations I want to ask you about. Sure, but sir. before I jump to the situation, I just have one question which Please. I feel is probably the most difficult to answer for a normal person, like for anyone basically. Even if somebody asked me that, I would have found it really hard to answer. What, according to you, is your biggest weakness? Sir, my biggest weakness is trusting people. Okay. So, I mean, do you think that will ever affect your duty? Because you would be working with a lot of officers. Some of them you would trust, some of them you might not trust. But they all would be working with you. Sir, give me a moment, sir. Actually, there's a little bit of commotion. So, sir, as far as the trust is concerned, it's a two-way street. Okay. So, I might be trusting the other person, but that person might not be trusting me. That is the reason only why I feel that, that trust is something that is the biggest weakness, because I might be putting it to the other person, but Samne wala is actually having a different thoughts altogether. So, fair enough. That is the challenge, sir. All right. Rex, you have any basic question, anything, any those type of questions before I jump to situation that you want to ask? Oh, sorry. Now we should jump to situation as we having the experience, so already asked the needed ones. All right. Okay, so I'll just take you to this first situation, then you can tell me how would you handle it. Okay, I'll try my best. Yeah, I mean it's so just think of it this way, that just give me 1 second, okay? Please take your time. Would it be okay if I take a glass of water, please? I'm just a little nervous. Yeah, sure. Apologies. 1 second. Do you want a bottle of water? Would you have one? Sir, I have it. All right. Sir, Okay. if it's Yeah, okay if I yeah, can sure. Go ahead. No worries at all. All right. So, consider yourself to be a part of the LSPD department. Okay. Right. There are multiple situations happening side by side. Right, sir. At the start, the SASP chief, who is the highest in command in the entire department, Right, sir. he has informed you to respond to a hostage situation. Okay. On the other hand, since you're a part of the LSPD, Right. the LSPD chief, he is getting shot at, and he asks you for immediate assistance. Right, sir. And on the third side, there's an officer who's the same rank as you. So say Right. your rank is an officer, his rank is also an officer. Right, sir. And he tells you that in a close proximity, there's a downed officer. Let's go Right. save him first, because he's injured. Right. Whose command would you listen to and why? Sir, that's a very great question, actually. The first one, if I understand, is from my department, like where I am
for example, the second is from an LSPD department you mentioned, and the third is actually from a downed officer. He's very in a very near close proximity. No, so I'll just rephrase that. The first one is actually about the thing is we have the San Andreas State Police. Yes, correct. And that is subdivided into 3 departments. 3 departments, yes. Okay. So you are part of the LSPD, the Los Santos Police Department. Okay. So the SASP chief is the San Andreas State Police chief. Got it. And the LSPD chief, the one who is getting shot at, is your immediate, your basically high command. Right, sir. So yeah. So in that case, sir, I will actually go ahead and follow the chain of command and respond to the SASP chief command. All right. Okay. And the reason why? is only the chief. Oh yeah, I was going to ask you why. Yeah. Sure. So the reason is that because we are supposed to actually follow the chain of command. That is the difference between any other organization and our organization. A law enforcement organization works on chain of commands, and if the chief of SASP is actually giving me an order, it's a direct order. I just have to follow it. Okay. There is no questions asked. All right. Okay. That's it. And probably the last question from my end. Please. See, I mean, your experience, I'm not going to go around and ask you any questions about the 10 codes because there are differences from where people work and there are real differences. But yes, and that since the experience and the answers you've given, I think that even if there are any differences, it won't take too long for anyone to adapt because it just happens over time. So I won't dive deep into if you know the 10 codes or what are the 10 codes because I'm pretty sure you're clear about that. Sure. So I'll just ask you this one last question from my end. Okay. So think of it that you're performing a normal traffic stop. Okay. The person in the vehicle ahead, he's armed. Okay. But he informs you he's armed. And he informs you not as a threat, but just providing information to you that I do have a weapon with me and I have a weapon license, but I'm just informing you. Okay. Okay, and it's a normal traffic stop. The person was just speeding, nothing major. He was just a speeding vehicle. Right. Would you generally and you are riding along with only one officer, so it's you plus one. Okay. Would you proceed with the traffic stop normally? Would you call a 77? Would you call a 78? Like, what would you do? And if you would call or if you wouldn't call, why? So first of all, again, that's a very, very great question that you've asked. First of all, I get it that he's in a situation, but you are supposed to also know what all I'm actually doing before that, right? So while I'm actually sitting in the car, I'm actually already performing, a vehicle plate, number plate check, etc., using the radar, trying to understand which car is there, what exactly it is, and already informing my radio, stop comms that I'm performing a traffic stop, right? Meanwhile, the traffic stop is happening. If something changes, I will definitely radio it over to my fellow colleagues as well that I require a 77 or a 78 if required, right? But by the time the plate check is happening, I get to know that this guy is actually armed because he calls it out very clearly, right? If he's armed, sir, no matter what happens, I'm going to call the 77 and perform a felony stop. I will tell him very bluntly that I get it that you have a weapon. You're not firing, you're not shooting, but it's our protocol. We will actually perform a felony stop. So please, just comply with us. That's it. And this will be all due respect to the civilian. You'll be very, very clear with that, sir. Okay. And it'll be a felony stop. Yeah. All right. Okay. Officer Rex, do you have any questions? Officer Rex? Yeah, do you have any questions? No, you only gone with that. I was hearing about that only. About that, I can ask one of the people mistake it often, even though they have. So about the forces, what do you know about the level of forces? How many are there, and why is it necessary to have a mature force? Actually, in our law enforcement organization, if there is no level of force, right, it will be a big problem. It will be the major chaos in the city. So there are actually different type of forces you can, and they are segregated into no force. You can say there is no force required at all. And they have a, let's say a non-lethal force or a lethal force. Now again, lethal force can be divided into various categories, right? But I'm just going to make it very easy that there are no force, non-lethal, and lethal. So I'll consider it in that way at the moment. Right? Again, if there are any other differences in the department, I will definitely go through the
standard operating protocols, and I will read it through. But what I understand is like no force, non-lethal, and lethal force. That's what I understand, sir. At this moment, these forces are concerned. If you want me to elaborate, I can do so as well. Fine. Okay. Wanted to know about that. So as far as the no force is concerned, let's say for example, like we are actually asking a civilian to step out of the vehicle, right? For any reason for that matter, and that person actually complies with our discussion, right? There is no aggressiveness from that person. He's just like complying and everything, right? He's obedient, right? He is understanding the verbal commands that we are actually giving. He can, he's stepping out. We don't require any force, sir. Nothing at all. Now, the next is talking about the non-lethal force, right? Wherein the person is actually, armed. I can see that guy is actually armed, but he's not using it. But still, he's just like running away, not listening to our discussions. He's like giving us threats a little bit. Hey, can you please go off? I don't want you. Get away from me. He's resisting a little bit, right? Then we have a little bit of not that little, but still like bait and or something like that. We have that with us. Okay, hey, can you please comply? That is non-lethal, right? In terms of lethal, when we go lethal, right, wherein a person is actually resisting, right, and he's running away continuously, he's actually probably showing a bat or something to us that I'm going to actually hit you or something like that. We consider it as a lethal, right? We can utilize our tasers. The final option for us would be, which I didn't mention about earlier, is the absolute deadly force, wherein a person is not compliant, have a very, very aggressive behavior, right, and they are a threat to anybody and anybody in that vicinity. Then we utilize our threat or the most deadly force. So that's how it is. Do you have anything to ask? No, I'm good with the answers I got. Right, sir. Okay, I'll be going with one scenario question. Please. Do you have any failures in your career or anything? Like in my careers? Yeah. And any of your greatest failure you wanna mention or something? Lieutenant, can you whisper, please? Sir, again, good question. I won't say that it's a failure. It's an opportunity for me. I've actually, again, going to the first point, Officer Williams, which I mentioned about trust. I shared about some certain things personally with you as well. I had all the, the capability, right? And there were certain times wherein, I was not taken into situations because of the trust factor that I had, Okay. with other officers. And they considered that he has trust issues, so we should not take him. And it was an opportunity for me to learn better and be amongst them, in that team, right? There were various VIP, escorts which were actually happening, and I was not a part of it, wherein I could have got a direct access due to various reasons. And sometimes you have these social connects with a lot of higher ups, which actually helps you to utilize that relationship sometimes in the future, right? So I think some people had some different ideas because they were my heroes, right? And it was just an opportunity for me, sir. So not a failure. I would term that as an opportunity, but it has happened with me in the past. So that's how I would like to put forward. But I've learned. I've improved myself, actually, to be honest. Yeah. Like about that, you have mentioned about the community and like public welfare, public affairs. Yes. So as a police officer, what actions would you take to maintain a good relationship with the community you patrol in, as you mentioned about the public welfare and all I saw in your resume? Thank you. So
Obviously, Davis, the first and prima facie thing that we do, our modus operandi is that we go हाँ, ahead इंटरव्यू से थक गया मैं and सच बोले protect तो and serve this, the civilians, right? We are the public servants that we call it, कितने इंटरव्यूज right? लिए मैंने That is आज what I'm used to. So my prima facie thing is to help protect their livelihood. If they are an earning members, they are there in the 4 या 5 society. या So 6 first of all, people connect is more important, right? So for me, the most important thing is to connect with the people around in the district that I'm actually patrolling, know them, get to know them, get to know their business, what they are, right, and how they they follow the process, or if they have any process as such. So people, process, procedures, I will follow these So 3 P's Benji, and Mike just Bannon, get the things done. If it requires for Balram, me to take John out some time, sir, Keats, right, go 10-7 or take for a break Spencer or some, Jones, a little Babu early, Singh. Yep, 6. release This is my 6th from the interview. office. I will go and actually spend some time with the 6 interview, community, 6. try to understand their real challenges that they're actually facing. It may be, sometimes it's just general connect, Officer Davis. Someone wants a little bit of pat on the back. Someone wants to talk about how they would like to, approach a police career. Someone wants to be in this city and they want to have a police career. I'm sure someone will be asking me questions when I'm going in the city that, hey, how was the experience like, in the department? I see this broad PD over there, so how everything is going. So the primary facie thing will be, people connect. Officer Davis. Yeah, that's it from my side. I don't want to ask anything. Thank you. Alright. Jake, you have it? No, all right. So I mean that's the conclusion to this interview. Thank you for your time for this. Once we interview all the candidates that we have accepted, that's when we will be posting out the results as well to see who all have finally been selected. So you will have to wait until then. Sure. So yeah, thank you for your time, and we'll keep you updated with the further proceedings. Thank you, Officer Williams, and thank you, Officer David. Yes. Appreciate that time and help, sir. Thank you. Don't give me the call on radio. I'll go and select one. Okay. Yeah. पूछता देखता हूँ कोई सामने से खुद ऐसे करे तो, and I'll get my some food Thank you, sir. Have a great Thank you time. so much. You It's too. my All the last best. bottle Yeah, of thank you. water. Yeah. Yeah. I'll get my last bottle. You need something to eat? I wouldn't mind some water actually. जैसा क्या ठीक है मैं ले आऊँगा. ये किसको लेने गया है? ये किसको लेने गया है? ये किसको लेने गया है? मुझे जानना है. मैं भेज दूं क्या और एक मैं भेज दे रहा हूँ नहीं मैं पानी लेने जा ही रहा था साथ में थोड़ा ऐसे कि थोड़ा अच्छा अच्छा तो तुम रेस्ट नहीं लोगे रे लगातार ले रहे हो 3 घंटा 5 नहीं 3 Whisper, please. Dispatch. At 10-4. मुझे एक को भेज दो क्या ऊपर ऑफिसर एक्स उधर नीचे आ गए थे आपके पास. आई थिंक ही इज लुकिंग इनटू दैट. हाँ.
हैं? क्या हुआ बंदा? क्या हुआ? हाँ 2 फ्लोर और काफी पीडी अंदर से कोई नहीं, क्वेश्चंस भी होंगे इंटरेस्टिंग। हाँ सर, आई एम यू नो आई एम रेडी। रेडी हो? ठीक है ठीक एक है, और सही है, ऑक्सीजन अच्छी में बात क्या? है। अच्छा, हेलो सर। हाँ गुड इवनिंग आफ्टरनून, पता नहीं क्या चल रहा है इवनिंग। आज एक 2 ही लोग बचे थे वैसे। I mean sir, it's आप बाहर देखोगे so it's a Sorry. हाँ आज एक is a bottle. Yes, thank you so much. Just Yo, give me the Rex. just give me 1 second, alright? I'm just gonna like slowly have this bottle of water. Just give me 1 second. Yeah, take your time, sir. You want something to eat? No, I'm fine. Yeah, sir. अरे यार रुको, guys इसको तोड़ना है क्या? हैं? That's it? हमारे पास बस 30 मिनट है? Rex? I needed more. Yeah, true. Same. Yeah. I guess मैं 15 मिनट में खत्म भी कर दूंगा सारे आंसर क्वेश्चन में ना, whatever. No, I mean I was talking about normal work. आपको क्या लगा? आपका ये इतनी importance है? ना, I was just concerned about me, so. Alright, वैसे आपका नाम? Sir, myself अभिषेक है। Abhishek है. Alright, nice to meet you. I am Officer Jake Williams, and on my left is Officer अभिषेक या अभिषेक? अभिषेक। Alright, before we start, can you just like send me a soft copy of your resume as well as your medical certificate? Sending. इसका फॉर्म किधर है? रुको। सर भेज दिया। I just wanted to know before we start, like अगर मैं बाद में मिसअंडरस्टैंड ना करूँ तो आप थोड़ा बहुत तोतलाते नहीं हो ना? Just wanted to know. नहीं सर, मैं क्यों तोतलाऊंगा सर? नहीं, वो आपने अभिषेक पे थोड़ा सा तो हाँ ठीक है सर। अभिषेक आपने भेज दिया ना उनको? हाँ भेज दिया सर, भेज दिया एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। या ठीक। हाँ सर, दोनों भेज दिया। रुको लेट मी जस्ट चेक। सर ये तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट है? जी सर, काफी फिट बताया था उन्होंने मुझे। सर ये तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट है? जी सर, देखो लिखा होगा फिट एंड फाइन। सर जरा आप देखना अपने लाइक यू नो व्हाट हैव यू सेंट मी? मे बी आपने गलत फाइल अटैच किया हो। एक सेकंड ना। हाँ मेरे को भी भेज दो। सर ये एक्चुअली वो मैम थी जिन्होंने मेरा लिया था, वो गलती से मैंने मैम की फोटो भेज दी आपको। क्या? माय बैड सर, माय बैड। आई एम अगली बार तो पता चला एविडेंस में आपने पेशेंट का कुछ और भेज दिया मतलब। नहीं वो Rex sir, I have just sent you a draft of an email. Just take a look at it. Are you sure ये मिस थी वहाँ पे? I mean ये मिस के बाजू में खड़ी थी तो मे बी यस। आपके लिए स्पेशली वो लॉस एंटोस आई थी? सर मे बी। One sec. हाँ नहीं मैं मेरे को लग रहा है जेक ये मतलब मेंटल ट्रीटमेंट का भी थोड़ा सा कराना चाहिए था एक्स्ट्रा मतलब। नहीं सर, एक्चुअली मुझे पता नहीं फोटो कहाँ से है, लेकिन सर मैं थोड़ा नर्वस हूँ ना इंटरव्यू में, तो जल्दी में जो फोटो थी भेज दी सर। तो यही देख रहे थे क्या फोटो आने से पहले? आपके मेडिकल रिपोर्ट में मैंने बस पढ़ रहा हूँ कि डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन नॉर्मल बताया गया है, बट आप एक फाइल नहीं पढ़ पाए और फाइल का लाइक इमेज नहीं देख पाए। लाइक आर यू श्योर दिस इज नॉट लाइक आपने पैसे वैसे देखे ये बनाया? नहीं सर, वो फोल्डर में था ना सर, तो मैंने फोल्डर भेज दिया देखे बिना सर। वो थोड़ा नर्वस हूँ ना, यू नो आज रिव्यू है काफी लॉन्ग टाइम बाद, तो यू नो। लॉन्ग टाइम बाद ऐसे सर लाइक
6-7 महीने हो गए ना सर लास्ट वाली पीढ़ी छोड़े हुए, तो आई मीन। अच्छा, वैसे लाइक while I look at your resume, एक बार like can you tell me something about yourself? Yeah sir, sir myself Abhishek मैं and I like Ravi. पहले मैं लिबर्टी में सर वहाँ कॉप था एज अ सीनियर ऑफिसर, was my last rank. Okay. Before leaving and अब yeah now I'm here for the interview. आप like आपने ड्यूटी किधर की है? लिबर्टी में, राइट? तो लॉस सैंटोस क्यों? लाइक व्हाई नॉट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड? I mean सर जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती वहाँ हम सर। अच्छा। And why did you leave your job? सर एक्चुअली यू नो लाइक कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी घर पे, लाइक मेरी मॉम बीमार थी एंड तो उनकी डेथ हो गई है, तो उस समय सर यू नो आई हैड टू। Okay. So you have past experience, right? Yeah, I do, sir. अच्छा, can you tell me like आपका like how would your day be like, a general day for you while on duty? क्या क्या करते थे आप? How was duty? जनरल डे सर पहले तो मैं आके ऑन ड्यूटी वाला कॉल देता था कि आई एम ऑन ड्यूटी, डिस्पैच को पता चले। उसके बाद सर क्या बोलते थे? सर मैं बोलता था कि वहाँ मेरा कॉल साइन था 402 ऐसा कुछ था। Okay. आई वाज लाइक डिस्पैच दिस इज 402 1041। Okay, ठीक है ठीक है। मतलब 41 वहाँ पर ऑन ड्यूटी का कॉल था। That's similar here. We have similar 10 codes compared to Liberty. So. Yeah. And then you know फिर like सुबह like हम जब जाते थे तो वहाँ पर पहले तो मीटिंग होती थी जिसमें सर यू नो रोज जो सिटी में चल रहा था उसके बारे में बताते थे एंड यू नो कुछ और नई नई चीज़ें बताते थे। एंड देन सर कुछ पेपर वर्क्स करता था मैं, जैसे कि एमडीटी ऐसा कुछ, अगर जो लास्ट क्रिमिनल हमने पकड़े थे उसके पेपर वर्क्स करते थे एंड फिर राइड अलोंग करते थे सर, इसके बाद और एक पेट्रोलिंग करते थे नॉर्मल, और कोई क्राइम हो तो वहाँ रिस्पॉन्ड करते थे। Okay. Okay, so about I'll just inform you about us one thing, that we have the main department, that is the SASP. Under that there are 3 sub departments: LSPD, BCSO and Park Rangers. अगर आप सिलेक्ट हो गए, if this interview goes fine and अगर आप सिलेक्ट हो गए एंड अगर आपको एक ऑप्शन मिला कि to choose one of the sub departments, तो what would be your preference? Sir, I was before in LSPD, so I'll choose to continue in LSPD. You were in the Los Santos Police Department before? You said कि you were in Liberty. LPD, sir, LS नहीं था ना, LPD बोला मैंने। आपको LS सुनाई दिया क्या? सब दोनों को LS सुनाई दिया सर, मतलब आपने बोला है। रूम में बातें गूंज रही सर, मुझे आपने जो मुझे बोला ना वही आपने सुन लिया सर। वो LPD, लिबर्टी। Oh, alright, okay. Liberty PD, okay. Okay. As far as I've heard, they were LCPD, but okay, but ठीक है, okay. I mean that's, I think they have. LCB तो बोला, LCPD. Yes. सर आप हमारा हियरिंग एड निकाल रहे हो, मतलब दोनों का? नहीं सर मैं जस्ट यू नो बाहर एक गाड़ी को ठोक के जा रही थी, उसको देख के सर थोड़ा सा यू नो वैसे like ट्रॉमेटाइज हो गया। ट्रॉमेटाइज, एग्जैक्टली सर। Out of curiosity, have you like recently got a haircut and all? Yeah. सर वो मम्मी ऑफ हो गई ना तो बाल वाइट करा लिए। अच्छा, बट क्या आपका हेयर स्टाइल यही था पहले? नहीं सर, बाल वाइट कराने के बाद खड़े नहीं हुए हैं, मतलब सर बाल खड़े नहीं हुए, बाल यू नो बैठ गए कलर कराने के बाद। No, I was just wondering क्योंकि जो आपका हेयर स्टाइल इन योर CV एंड जो अभी है, क्या सर उसमें थोड़ा अलग होगा, कलर भी अलग होगा ये। यप, सो इसलिए मैं थोड़ा क्यूरियस था। तो आपके वर्क हिस्ट्री में जो आपने लिखा है इन योर रेज्यूमे, आपने बोला कि आप ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर, बट फिर आपने लिखा है वर्कड एज ट्रूपर। हाँ, वर्कड एज ट्रूपर, सक्सेसफुली कंडक्टेड द फॉलोइंग टास्क। सर मैं बताता हूँ सर, मैं वो गया था ना, क्या बोलते उसको, साइबर वाले पे। हाँ। सर उसको जब मैं ये रेज्यूमे बनवा रहा था उसकी लाइट चली गई थी, फिर उसने बोला आप घर चले जाओ मैं आपको भेज दूंगा। तब मुझे नहीं पता सर ये ट्रूपर क्यों लिख दिया उसमें। मैं बात करता हूँ उससे, सर कुछ हक दिया होगा उसने। अच्छा, so you were not a trooper, right? No, I was sir senior officer last. Okay, आप senior officer थे, alright. You should verify before applying these things. It's matter of your job. Wrong info के लिए reject हो सकता है। टाइम नहीं था ना सर, टाइम नहीं था ना, लास्ट मोमेंट पे मैंने सब करा है, you know सर, क्योंकि traveling and everything। सर पीडी में most of the things you have to act as an emergency and बहुत जल्दी respond करना होता है।
टाइम नहीं के सर चक्कर में तो फिर आप तो कुछ का कुछ कर दोगे। सर जैसे कि रिज्यूमे में लिखा है मैं फास्ट लर्नर सर, आई विल इम्प्रूव। ऑलराइट ओके, ये किधर लिखा है? क्या? अच्छा ओके, skills, yes, I was just finding it. लिखा है लिखा है I was just finding the word. Okay, yeah, yeah. that's right, that's it. Oh yeah, looking at the skills, I just thought I would ask you one question. Yeah. Since you have knowledge about firearms and weapons, what is the difference between class 1 and class 2 and class 3 weapons? The class 1 are like all type of pistols, class 2 are semi and autos, and third one is like big guns like RPG, heavy rifle or advanced rifle, something like that. Alright, okay. क्या आपको पता है the difference between reasonable suspicion and probable cause? Yep sir, reasonable is like a crime is being like committed, but उसका like enough proof नहीं है, it's like a guess or something। तुम्हारा इंटरव्यू, तुम तो मेरा इंटरव्यू लोगे हो। crime होने वाला है तो but इसका like enough proof नहीं है, so it's like a reasonable, and probable is like we have a belief that जो हमारा belief है उसके like हमारे पास enough proof and everything है, so हम उसे arrest कर सकते हैं उस पे probable पे। You can arrest someone on probable cause but not on reasonable suspicion. No sir, reasonable पे we can detain, but we can't arrest him, like you know, not proper proof and things. Okay, ठीक है। I'm going to mix this up in a way कि I am going to ask you questions because मैं generally क्या होता है, we ask a lot of these basic questions and then we move on to situational questions. But I'm going to mix it up where वही है कि basic and situational questions and mix it up a little, ठीक है? So what according to you is chain of command? Chain of command is like sir जो एक हायरार्की होती है कि एक like होता है रैंक वाइज होता है, जैसे मैं ऑफिसर हूँ, मेरे पास सीनियर ऑफिसर आते हैं एंड जो भी चीज़ें होती है लाइक जैसे अगर सीनियर को कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने सीनियर से कांटेक्ट करेगा और सीनियर से हैंडल ना हो तो ऊपर देगा। दैट इज व्हाट चेन ऑफ कमांड इज लाइक, वर्किंग इन अ चेन। ओके, एंड क्या आपको लाइक ये पता है कि जनरली लाइक से फॉर एन एयर वन और फॉर अ बाइक और फॉर अ हाई स्पीड इन्फोर्समेंट यूनिट लाइक वी हैव उसके लिए यू नीड लाइसेंसेस, यू आर अवेयर अबाउट दैट? या ओके, सो जस्ट गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन, ठीक है? ओके, समझ लो आपका रैंक ऑफिसर है और एक बैंक रॉबरी हो रहा है, इट्स अ वेरी वेरी बिग क्राइम। उनका एक व्हीकल है जिसमें वो एस्केप करने वाले हैं, दैट इज अ BMW M5, अ वेरी हाई स्पीड व्हीकल। ओके, वो टाइम पे कोई भी स्पीड इन्फोर्समेंट लाइसेंस्ड ऑफिसर्स अवेलेबल है ही नहीं। वो टाइम पे कोई हाई कमांड भी नहीं है, कोई कमांड भी नहीं है, कोई FTO भी नहीं है। It is just a mix of officers and senior officers handling the entire situation. Okay. See, ये है कि you are probably one of the best drivers in the LSPD, but you do not have the license as of now. आप like maybe you're in the applying phase या जो भी हो, but तुम्हारे पास license नहीं है। But वो situation में एक senior officer बोलता है, who's one rank above you, कि Abhishek, remove the Mustang, we need it for the situation, we need to catch these guys. So how would you approach the situation? क्या करते तुम? लाइक मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है और मेरे से सीनियर ऑफिसर ये लाइक उसने मुझे ऑर्डर दिया है, उसने तुम्हें कमांड दिया है, who's one rank above you, कमांड दिया है या कि टेक द मस्टैंग सर, आई विल फॉलो हिज ऑर्डर बिकॉज़ यू नो ही इज अ सीनियर टू मी। सो एंड राइट नाउ अभी अगर लाइक कोई अवेलेबल नहीं है या अगर कोई उससे ऊपर में अवेलेबल होगा तो मैं उससे एक बार पूछ लूंगा कंसर्नली है कि नहीं, बट दो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, आई एम नॉट, बट इफ अ सीनियर आस्क मी टू डू, क्या तुम्हें पहले तो मैं हेली चलाना सीनियर को आता है? बताऊंगा कि नहीं सर। अगर तुम्हारा सीनियर बोला कि नो मैटर व्हाट वी नीड अ हेली, लेके आओ, आप लेके आते? नहीं सर, मैं उनको बोल रहा हूँ मुझे चलाना नहीं आता, आपने बोला जिस चीज़ में तुम बेस्ट हो। नहीं, वो आपके हिसाब से बेस्ट हो। हाँ, तो द थिंग इज दैट वही है, मतलब लाइसेंस की आप बोल रहे हो, देयर इज नो वैल्यू। नो, लाइसेंस की वैल्यू है सर, मैं वही बोला, मैं अपने सीनियर को पहले बताऊंगा कि आई डोंट हैव अ लाइसेंस, प्रॉपर लाइसेंस, बट आई नो लाइक मैंने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए, तो बेसिकली। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके, मुझे मैच ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? यू मीन सर यूज ऑफ फोर्स और नो, मैच ऑफ फोर्स, मैच ऑफ फोर्स। Match of force is like is a term. The match of force is like matching the force with another, like, और क्या ही होगा इस term का मतलब? Like I know about use of force. तो एक एग्जांपल दे दो ऑफ मैच ऑफ फोर्स।
officer is back. मैच ऑफ फोर्स देखिए लाइक अगर Yeah, एक 10 बंदा 4 let him pass. व्हाट वी से एक लाइक 10-9 ऐसी गाड़ी में वो चेज कर रहा जल्दी ले है आओ, जो है अभी लाइक time कम फूटो है. टाइप, हाँ हाँ अब उसके लिए सर मैं मस्टैंग वस्टैंग नहीं ले आऊंगा, लाइक कोई मस्टैंग वस्टैंग से उसको चेज नहीं देंगे. इट्स लाइक अगर वो फूटो से कर रहा है तो हम अपने सीवीपीआई से चेज देंगे. इट्स लाइक इट इज अ मैच ऑफ फोर्स, लाइक वो एकदम. ओके, तो अगर आप बाय चांस एक शूटर सिचुएशन में हो, सामने आपके 5 आइडेंटिफाइबल सस्पेक्ट्स है और वो एक रूफटॉप पे है, एंड यू स्पॉटेड 5 पीपल. अगर और है नहीं है वो नहीं पता, बट देयर आर 5 दैट यू नो अबाउट. ओके 5 एंड तुम लोग बस 7 ऑफिसर ऑन ड्यूटी एट दैट पॉइंट, एंड तुम लोग कंप्लीटली स्टैक्ड अप हो, तुम लोग के पास सारे लाइसेंसेस है, यू गाइज हैव एक्सेस टू SMGs, तो वो भी दिक्कत नहीं है. ऑलराइट, द पीपल द सस्पेक्ट जो रूफ पे है, जो तुम लोग को दिख रहा है फ्रॉम द कैमराज ऑफ एयर वन एंड एवरीथिंग, तुम लोग को जो दिख रहा है, यू कैन ओनली स्पॉट क्लास 1s ऑन देम. तुम्हें क्लास तो हो सकते हैं उनके पास, बट यू कैन स्पॉट इट, आपको पता नहीं है उनके पास क्या है. एंड वो रूफ ब्रीच करने के लिए एक ही लैडर है, तो हाउ वुड यू Dispatch, no one अप्रोच left right now anymore. और लाइक वो 5 बंदे टेरेस पे है. हाँ, टेरेस पे है, एक एंट्री पॉइंट, दे हैव पिस्टल्स दैट यू कैन सी, एंड अगर SMGs है देन यू कैन लाइक, वो पता नहीं है अभी, वो लाइक इफ दे रिमूव फ्रॉम देयर बैग और समथिंग, यू नेवर नो. और हमारे पास क्लास 1 है फिलहाल के लिए. उस You have no, you have stacked up completely. You have class 1 and class 2. You have Class 1 and class 2. हाँ, मतलब you have it with you. Okay. Because you have authority to take it on code 1, so you have it with you. Okay. हाँ. तो सर एज फार एज कि अगर मुझे उनके पास दिखा नहीं है, वो निकालेंगे बाद में, इज नॉट माई कंसर्न. पहले जो गन उनके पास है हम वही गन लेके जाएंगे, एंड अगर प्रॉब्ली बाद में लाइक लेटर अगर वो कुछ बड़े गन्स निकालते हैं तो विल टेक द सेफ्टी लाइक सेफ्टी जो भी वहाँ पर वो होंगे एरियाज, और वहाँ पर जाके फिर गन स्विच करके ताकि फोर्स बना रहे. अच्छा, और उतने में इफ ऑल द ऑफिसर्स को अनकॉन्शियस देन, आई मीन उतने में सारे ऑफिसर डाउन हो जाते हैं. नहीं मतलब अगर ऐसे ही लाइक मेंटालिटी रखोगे कि यार उनके पास क्लास 1 है तो हम क्लास 1 ही रखेंगे और हमारे फिर ऑफिसर्स चल जाते हैं, तो नहीं सर, तो वो तो हम चेक करेंगे ना, लाइक अगर हम लाइक अगर थोड़ा क्लोज इन होते हैं तो उनको भी पता चलेगा ना. तो लाइक ऐसा थोड़ी कि हम उनकी डायरेक्ट मुंह पे घुस जाएंगे. सर विल मेक सम डिस्टेंस एंड लाइक पीक वीक जो होता है वो लेंगे. लाइक अगर थोड़े टाइम बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, ऐसा नहीं कि लाइक फुल रश है, थोड़ा होल्ड करेंगे एंड वेट करेंगे कि क्या पता क्या गन्स दिख रही है हमें और क्या गन्स वो चला रहे हैं, एंड देन पॉसिबली अगर वो थोड़े टाइम तक हमें लगा कि पिस्टल ही फायर हो रही है, देन विल गो विद द पिस्टल्स ओनली. एंड बट हमें ऐसा पता चला लाइक थोड़ा मूवमेंट के बाद कि वो थोड़ा इम्पेशेंट होकर उन्होंने अपने दूसरे गन्स निकाले, तो वी कैन स्विच द गन्स एंड यू नो मूव ऑन विद दैट, या फिर रेडियो पे कॉल दे देंगे कि क्लास 2 गाइस, क्लास 2. ठीक है. 2 मेजर थिंग्स दैट आई सॉ इन योर रिज्यूमे, मुझे बस जानना है उसके बारे में, अबाउट यू बीइंग यू वर्किंग विद K9 and you working with the bomb squad. Like how was your experience? Like इसके बारे में कुछ बता सकते हो? सर एक्चुअली हुआ क्या था कि K9 के साथ मैं एक ऑफिसर के साथ काम करता था, लाइक नॉट माय ओन, एंड बॉम्ब स्क्वाड का भी वही सीन था. जब लाइक ये था कि वो जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो उसके थोड़े बेसिक आइडियाज पता है, फिर तब तक मैंने लीव कर दिया था लाइक सर. सो आई हैव बेसिक नॉलेज लाइक K9 एंड अबाउट. सो आप ये बोलना चाहते हो कि में था मैं, जो ये K9 एंड बॉम्ब स्क्वाड का सीन है, आप किसी और ऑफिसर का क्वालिफिकेशन अपने रेज्यूमे डाल रहे हो? नहीं सर, उनके साथ काम किया मैंने. अच्छा, उनके साथ काम. तो आई हैव बेसिक नॉलेज. अच्छा, और आपने अभी क्या बोला, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? LCPD. नहीं आपने अभी आई थिंक यू यूज द टर्म SWAT राइट, विद बॉम्ब स्क्वाड. हाँ, वो उसमें लाइक सर SWAT लाइक उसमें था मैं, रिक्रूट में था वो. अच्छा, यू वर अ SWAT रिक्रूट. ऑलराइट, ओके, फेयर इनफ. हां, फेस में था उस SWAT कैडेट होता है ना सर, जो स्टार्टिंग उसमें. अच्छा, मुझे अभी बता एक चीज़. लाइक देखो, अगर मैं एक यहाँ पे नीचे एक ट्रैफिक स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने एक ऐसी रैंडम सी एक गाड़ी है, आई कैन जस्ट टेल रेक्स ऑन रेडियो कि रेक्स देयर इज अ रेड कलर फरारी इन फ्रंट ऑफ मी, इट्स उसमें एक बंदा बैठा है बर्गर शॉट के सामने, जल्दी आ जाओ. बट हम लोग वैसे बात नहीं करते, वी ऑलवेज यूज कोड्स. हाँ. क्यों? हम लोग को लाइक इतना आसानी से मैं रेक्स से कन्वर्स कर सकता हूँ, इतना कोड्स क्यों याद रखूँ मैं यार? उसका फ़ायदा क्या है? सर आसानी तो नहीं लग रही मुझे सर. आप इतना लंबा चौड़ा कॉल दोगे तब तक तो बंदा समझ के खुद ही निकल लेगा. आप लाइक पहले कोड्स तो बेसिकली ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है कॉल कोड्स, एंड दूसरा कि लाइक जैसे आप कोड्स दे रहे हो
कि ये इस गाड़ी का ये कोर्स है, तो फरारी वाले को तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला है, एंड ही लाइक वो वहीं खड़ा रहेगा और बाकी हमारा जो ऑफिसर है वो कोड समझ के फटाफट वो कर देंगे रिस्पॉन्ड, तो फिर इट्स ना विन विन। अच्छा ओके जी सर। वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो tell me one thing, what is a felony stop? फेलिनी इज लाइक या तो उसका ड्राइवर वो हो किस चीज का सस्पेक्ट, या फिर गाड़ी फ्लैग्ड हो। नेगेटिव। Thank God. I'm not going to lie, you're the first person to answer this question correctly. Thank you, sir. Haha. Not correctly as in like one mistake that everyone made, you didn't make that mistake. मैं वो उतना बोल सकता हूँ। मैं ये भी नहीं बोला कि बाकी सब सही बोला है, बिकॉज पता नहीं कुछ चीज़ें तुमने क्या बोला है पता नहीं मुझे, बट ओके ओके। Rex, you have any questions? क्या? Rex, you have any questions, Rex? हेलो Rex सर आवाज थोड़ी कट रही है। हाँ हाँ। मैंने सर कुछ खाया नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं टिक पाऊंगा, अगर यू नो बहुत भूखा हूँ मैं। Sure, I'll help you out with some chocolates and I'll give you some energy. क्या है सर, क्या है? Some chocolates. सर मैं मीठा नहीं खाता ना ज़्यादा। Okay, Rex, you have some sandwiches on you? सर सैंडविचेस में सब्जी ज़्यादा होती है। Rex, you can just like leave the cheese in the sandwich and you can give him bread and cheese. तो फिर कोई ब्रेड चल जाएगा। Rex, तेरा आवाज़ ढंग से नहीं आ रहा। ब्रेड खा लूँगा। खा लूँगा ब्रेड। अब रो क्यों रहे हो सर? Like we're just offering you food. I'm very happy sir, इतने प्यारे ऑफिसर्स को देखे जो खाने वाने का भी ध्यान रखते हैं, you know. I mean, yeah, you no one cares. अब no one cares क्यों? सर हमारे पीने में फर्क ही नहीं पड़ता था, खाने पीने में कुछ है कि नहीं। तुम ये कह रहे हो कि अगर किसी ने कोई बैंक लूटा है और वो आके सेल्स में आपको खाना दे दिया, पिघल जाओगे? नहीं सर, ये कहने का मतलब नहीं है सर, जैसे लाइक आपने कैसे खाने के लिए पूछा एंड एवरीथिंग, हमारे वहाँ पर ऐसे कोई पूछता नहीं था खाने वाने के लिए, लाइक पीडी में बेसिकली। ये थोड़ी कोई खाना दे तो पिघल जाऊं, अरे हाँ चलो, अरे खाना दे दिया ये ले गले जा मेरी, ऐसे थोड़ी हो। तुम रोने लगे हो क्या? ओके ठीक है, इसलिए पूछा। सर वो थोड़ी मम्मी की भी याद आ गई ना, मम्मी आपकी तरह दिखती थी। क्या? मतलब बाल ऐसे ही पीछे रहते थे मम्मी के, जैसे आपके ना। नहीं बाल से दाढ़ी, बाल ऐसे ही पीछे रहते थे, ऐसे ही चश्मा पहनती थी मेरी तरह। जी सर, आपकी तरह चश्मा पहनती थी। I reminded you of your mom. क्या सर? मम्मी? बस ये बोल सकता हूँ, if I wasn't an SASP trooper, I would have said something else, but I respect people, okay? अगर आप ऐसे आवाज नहीं आ रहा है रेक्स सर, आपकी आवाज अटक रही है और मैं चाहता हूँ 10 मिनट तक कट के। रेक्स सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही होगी आवाज? हाँ अब आ रही है। आई गॉट नहीं, अभी भी दिक्कत आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं अब इट्स क्लियर। कुछ बोलना सर रेक्स सर? नहीं यार, एक्चुअली दिक्कत है। किधर? तो मेरे को लगता है इंटरव्यू डन। Are all the interviews clear? Yeah, done. Done for. इंटरव्यू क्लियर बोला आपने? थैंक यू सर, आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, माय मम्मी, माय डैडी। ऑफिसर, अरे कैंडिडेट्स खत्म हो गए आज के बोल रहे हैं। ऑफिसर मेरी आवाज आ रही है? हेलो नहीं, बहुत कट रहा है तेरा आवाज रेक्स। हाँ बोलो। इसने बोला कि आई रिमाइंड हिम ऑफ हिज मॉम। मॉम? हाँ, आई रिमाइंड हिम ऑफ हिज मॉम, आई डोंट नो व्हाई। ओह माय गॉड, कुछ हो था क्या तुम्हारा वो? अरे मतलब मम्मी के बाल ऐसे थे सर, और इयररिंग्स भी ऐसी थे, और चश्मे भी ऐसी पहनती थी। जेक सर का कुछ होगा उधर टाका। मैंने इनको यही बोला कि अगर मैं एसएसपी ट्रूपर नहीं होता कुछ बोल देता, पर आई एम रिस्पेक्टिंग पीपल। पर अगर जेक सर का टाका मेरी मॉम से भिड़ा होता तो मेरी मॉम जेक सर की तरह थोड़ी दिखती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, छोड़ो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एक सेकंड, मतलब व्हाट? मतलब उसके ऊपर में गया इन द हायरार्की? मुझे लग
सारा चेन ऑफ कमांड यही निकल गया सर, ये क्या हो रहा है? तो आप जैसा कि देख सकते हैं सर, अगर मैं पीडी में आऊंगा सर, मैं एक फनी एनवायरनमेंट लाइक यू नो, तुम्हें लगता है हम यहाँ पे मजाक और कॉमेडी कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में नहीं तो सर, फिर पूरी पूरी नहीं सर, पूरी बात सुनिए। हाँ हाँ। आई मीन लाइक आई विल डू माय ड्यूटी, एंड जब हम रेस्ट कर रहे होंगे तो आई विल मेक अ गुड एनवायरनमेंट सर अराउंड मी, एंड यू नो, एंड आई विल बी अ गुड कॉप सर। रेस्ट कहाँ पे? मैं रेस्ट रूम में। अच्छा, और कहाँ बीच सिचुएशन में रेस्ट हम थोड़ी रेस्ट करेंगे कर सर। रहे होंगे बाहर जगह, तुम आ जाओगे। अरे सर ऐसी बात नहीं है, मैं जिनके साथ रेस्ट कर रहा हूँ, आप रेस्ट अच्छा, करोगे, आपके तुम- मुंह पे जा कूद के एक पंच लाइन थोड़ी मार दूंगा। अच्छा वैसे 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 ना अभी सीरियस अभी अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है? ठीक है। नहीं पर अभी भी थोड़ा मैं कह रहा हूँ सा अगर एक ऐसा कट रहा एक सेकंड हाँ आपके पास कभी लाइक यू हैड एनी ऑथराइजेशन और लाइसेंसेस इन योर पास? सर आई हैड अ बाइक लाइसेंस एंड आई वाज लाइक, पूरी पीढ़ी में तारीफ होती थी कि आई एम अ वेरी गुड यू नो बाइकर। पूरी पीढ़ी में तारीफ होती थी। ओके ओके। एंड फिर लाइक थोड़े टाइम बाद सर मैं उसी का हेड भी बन गया था, लाइक ऑफ द बाइक। ओके, यू टेकिंग केयर फॉर डिपार्टमेंट। यप, लाइक So- बाइक डिपार्टमेंट का, कि हाँ। लाइक उन लोग के लाइसेंस अप्रूव कराता था मैं। सो लाइक व्हेन यू वर अप्रूविंग किसी का भी लाइसेंसेस या वो सब, तो लाइक क्या देखते थे उनमें, लाइक व्हाट वाज द क्राइटेरियाज? सर हम पहले सर उन्हें लाइक वो कराते थे, उनकी ड्राइविंग देखते थे, उन्हें कुछ लैप्स देते थे और एक टाइम देते थे कि इतने लैप्स में बिना ठोके और एकदम अच्छे से उन्होंने कर लिया कवर। तो आई मीन लाइक दे आर गुड। एंड फिर लाइक ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लाइसेंस दे दिया, उसके बाद सर एक प्रैक्टिकली वो कराते थे, लाइक ऑन फील्ड चेस कराते थे बाइक का। जैसे मैं बाइक लेता था और वो बाइक लेते थे, तो अगर उन्होंने मुझ पे अच्छे से लाइक विजुअल्स रखे एंड लाइक एवरीथिंग लाइक कॉल्स एंड एवरीथिंग परफेक्ट, तो हम उनको लाइसेंस अप्रूव करा देते थे। ओके, मतलब आप लोग लाइक एलीवेज में जाते थे, ब्रिजेस से कूदते थे, ये सब? यप जंप्स एंड एवरीथिंग। और अगर किसी को चोट लग जाती तो? सर अब ऑफिसर है, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना सर। मतलब रिस्क टू गेट अ लाइसेंस, मतलब लाइसेंस ले आप अपनी जान गंवा दोगे, अच्छा लगेगा? नहीं सर, इतना भी नहीं रखते थे कि कुछ एकदम मेजर्स लाइक जो एकदम ऐसे जिसमें जान ही चली जाए, लाइक नॉर्मल जो नॉर्मल हो जाए ऐसा। अब क्रिमिनल्स तो सर होते ही पागल है, कहीं से भी कुदा देते हैं, हम ऐसा थोड़ी करेंगे फैमिली टाइम सब बोल रहे थे, तो टाइम दे पाते थे अपने डिपार्टमेंट को, लाइक कि लाइक सर सब अब तो डिपार्टमेंट फैमिली रही नहीं ना सर। कौन सी वाली? अब तो आप ही फैमिली हो, मतलब बन जाओगे सर। वो मॉम थी ना मेरी फैमिली में बस। अच्छा ओके ओके। बस जी वो भी जेक सर से एसोसिएटेड ना? जेक सर जैसी। वैसे I'll just give you one suggestion. देखो, I don't know whether how your result will be, accept होगा deny होगा, वो तो time will tell. I'll just say that if by chance ये opportunity arise नहीं आता है, और batches भी खुलेंगे, but तब तक there's this wonderful place in Los Santos called Tequilala, which has an open mic. I mean, if you're an entertainer, you can also like you know like do that as a side business as नो well. सर मैं ऐसे नॉर्मली एंटरटेन नहीं करता सर। आई लाइक यू नो मतलब आई एम सर वेरी interested in this cop field only sir. I don't want to like do a open mic stand in Tequilala sir. Oh, okay. Now I was just giving a suggestion. I mean, there's always like an open. Yeah, I got for your point job sir, but I don't think so opportunities sir. Tequilala is meant for me. I like only PD sir. This PD good, you good, everything good, wow good, go good. I guess sir we have only 2 minutes. What do you mean? No, we have, you're not coming back to this place? We still have a lot of questions. You still have? I'm coming. Why not? No, on a serious note, that's all for your interview. Like, I mean, we appreciate your time and आपका response sir. जो भी है, जब सबके interviews खत्म हो जाएंगे, तब आपका response डल जाएगा. That's when you will know the status of your interview. I'm grateful sir. Thank you so much. Do you have any questions by the way from your end? Sir, I have one question only. कि आप off duty क्या करते हो? Like, why do you want to know about my private life? Sir, I mean like अगर आप free हो तो we can hang around, you know. I mean, I'll be very honest. You remind me of your mom. That is very awkward for us to hang around right now. Sir, you can be my mommy off duty. No, I cannot be your mommy off duty. I'm sorry. It's all right, sir. I'll manage myself. I'll hold on to it. You're not my mommy. I don't know. Why you are like making awkward with my very good friend and. Sorry. I'm just you know getting emotional again and again. चलता हूँ रोने ना लगता हूँ. Mommy. What the? तुम लोग मारे क्या उसको? नहीं उसकी बस मम्मी की याद आ गई थी उसको. अरे भाई
ये क्या था एंड ये क्या एंड था? ओ माय गॉड. क्या था ये? What is this? That this is I was watching my mommy. Said, do you have something to eat or drink? I'll die. I'll die. Jake मम्मी William ने Murphy. लंच बॉक्स नहीं भेजा क्या तुम्हारा? I'm not going to lie. Interviews hectic थे, but this was a good fun last interview. हाँ अच्छा हो मैं आ गया Oh my इधर. god. भाई AVG भाई. वो लास्ट वाले में देख के आते हैं. Bro, take my interview. Apply, bro. रवि This was. I'm not gonna lie. AVG का interview was the most fun interview. What do you mean by escalation of force? Escalation of force, okay. Yes. So I have a personal experience for this. Like I will be giving this example. जल्दी from my बताओ personal escalation of force. Yeah. So when we are in a situation, we do not have any idea of how many, what classes of weapons the criminals had. We were in a chase. The person eventually had class ones, which were visually confirmed by one of the officers, and later we came to know that the Later we came to know that. Yes, correct. I'll put on face cam, guys. अरे यार. यार गाइस अटेंडर मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार. क्या मैं HTRP जाऊँ, VLT करूँ, क्या करूँ गाइस. इट वाज फन भाई. AVG बहुत मजा आया. मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ. थोड़ा बुली किया AVG को, बट उससे बहुत मजा दिलवाया. चैट बोला से 12 के सब नहीं हो रहे भाई. हाँ यार, एक चैलेंज मतलब मैंने बोला एक चैलेंज फुलफिल करो. चैट वो भी नहीं कर पा रहे तुम लोग. एक छोटू सा चैलेंज दिया था. हाँ, एक छोटू सा चैलेंज बोला था, वो भी नहीं कर पाए तुम लोग. अभी तुम लोग समझो लोग क्या बोलेंगे भाई कि देखो यार, जो लोग पास में देखते हैं वो ऐसे है. तुम लोग कुछ वो चाहते हो कि लोग ऐसे बोले तुम लोग के बारे में. उनका फटने गया सवारी साड़ुआ. तुम लोग चाहते हो कि मैं HTRP जाऊं, पहले वो चैलेंज फुलफिल कर लो. ठीक है चैट, सब लोग स्पैम कर रहे हैं ना HTRP. तुम लोग अभी अगर चाहते हो कि मैं HTRP जाऊं, पहले मेरा वो चैलेंज फुलफिल कर लो यार. इतना नहीं कर पा रहे मेरे लिए.
कोई खाना दे हो तो सकता पिघल है जाऊं। अरे हाँ चलो, अरे खाना दे दिया, ये ले गले जा मेरी, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं तुम रोने लगे हो क्या? ठीक है, ऐसे सर सर वो थोड़ी मम्मी की भी याद आ गई ना, मम्मी आपकी तरह दिखती थी। क्या? मतलब बाल ऐसे ही नहीं था खाने वाने के लिए, लाइक फीडिंग बेसिक। No, ABG, man, ABG. Your interview, bro. I can legit wait. You know what? Wait. You know what I'm gonna do? I'm gonna do something with chat. Wait. I'm going to watch ABG's interview once again to see from. कर दे, क्वेश्चंस भी होंगे इंटरेस्टिंग। रेडी हो? ठीक। गुड इवनिंग आफ्टरनून पता नहीं। अच्छा Just give me 1 second, alright? I'm just gonna like slowly have this bottle of water. Give me 1 second. Yeah, take your time, sir. You want something to eat? No, I'm fine. Yeah, sir, I don't have any. रुको, न्यूक्लियर ने कुछ भेजा था क्या? That's it? हमारे पास बस 30 मिनट है? Right? 30 मिनट I needed more. Yeah, Why, true. sir, why? Same. Yeah. I guess मैं 15 मिनट में खत्म भी कर दूंगा सर सारे आंसर क्वेश्चन में ना, whatever. No, I mean I was talking about normal work. आपको क्या लगा? आपका ये importance है? ना, I was just concerned about me. Bro, most fun interview तो भूल ही today. गया ना, बहुत सीरियस हो गया। Alright, वैसे आपका नाम? Sir, myself अभिषेक है। Abhishek. Alright, nice to meet you. I am Officer Jake Williams, and on my left. अभिषेक या अभिषेक? अभिषेक। अच्छा। I want before we start, can you just send me a soft copy of your resume as well as your medical certificate? Sending. हैं? Dynamic? क्या बोल रहे हो तुम? अंडरस्टैंड ना आऊंगा सर। आपने भेज दिया ना? ऐसे दोनों भेज दिया। वैसे गाइस, तुम लोग को देखता है कि जब ये हुआ था और इमेज ने मुझे इमेज भेजा, देखो तुम लोग को पता है क्या भेजा? हाँ, तुम लोग को पता है बच्चों ने क्या भेजा? मैं दिखा दूंगा स्ट्रीम। चेक सर, ये तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट है? जी सर, काफी फिट बताया था उन्होंने मुझे। सर, ये तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट है? जी सर, देखो लिखा होगा फिट एंड फाइन। सर जरा आप देखना अपने व्हाट हैव यू सेंट मी? मे बी आपने गलत फाइल अटैच किया हो। या एक सेकंड ना। हाँ मेरे को भी भेजना। सर ये एक्चुअली वो मैम थी जिन्होंने मेरा लिया था, तो गलती से मैंने मैम की फोटो भेज दिया। क्या? माय बैड सर, माय बैड, आई एम रियली सर। अगली बार तो पता चला आपने पेशेंट का कुछ और भेज दिया। नहीं वो just sent you a draft of an email. Just take a look at it. वाओ, सनी लियोन का फोटो भी तो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट भेजा है बंदे ने। Are you sure ये आपके लिए स्पेशली वो लॉस एंटोस आई थी? मतलब तो जल्दी में जो फोटो थी भेज दी सर। मैंने बस पढ़ रहा हूँ कि पढ़ पाया और फाइल का इमेज नहीं दिख पाए। नहीं तो लास्ट वाली पीडी पहले मैं लिबर्टी में अब या नाउ आई एम हियर फॉर तो लॉस एंटोस एनीवेयर। एंड व्हाई डिड यू लीव योर जॉब? मेरी मॉम बीमार थी एंड ओके
Yeah. So you have past experience, right? Yeah, I do, sir. अच्छा, can you tell me like आपका how was The duty? general day, कैसे sir, you know, क्या बोलते थे? I was like dispatch का call. तो वहाँ पर पहले तो मीटिंग होती ही नहीं थी, सब कुछ अगर थे। SPD, BCSO, सर LS नहीं था ना, LP. You were in the Los Santos Police Department. So what would be your preference? Sir, I was before in LSPD, so I'll choose to continue in LSPD. You were in the Los Santos Police Department before? You said you were in Liberty City. LPD, sir, LS नहीं था ना, LPD बोला मैंने. आपको LS सुनाई दिया क्या? I think some problem. दोनों को LS सुनाई दिया सर, मतलब आपने बोला है. रूम में बातें गूंज रही थी, मुझे लग रहा आपने जो मुझे बोला ना वही आपने सुन लिया. सर वो LPD, लिबर्टी PD. Oh, all right, okay. Liberty PD, okay. Okay. As far as I've heard, they were LCPD, but okay, but ठीक है, okay. I mean that's, I think they have. LCB तो बोला, LCPD. Yes. सर आप हमारा हियरिंग एड निकाल रहे हो मतलब दोनों का? नहीं सर. अगर पासा को कॉल जल्दी है क्यों? बाहर एक गाड़ी को ठोक के जा रही थी, उसको देख के सर थोड़ा सा वैसे ट्रॉमेटाइज हो गया. Traumatized, exactly, sir. Out of curiosity, have you like recently got a haircut and all? The history में जो आपने लिखा है in your. But if a senior asked me to ब्रीच करने के लिए एक ही लैडर है. Like not my own, and बॉम्ब स्क्वाड का भी वैसे था जब ये था कि वो जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो उसके थोड़े बेसिक आइडियाज पता है, फिर तब तक मैंने लीव कर दिया था लाइक सर. सो आई हैव बेसिक नॉलेज लाइक K9 एंड अबाउट बॉम्ब स्क्वाड. आप ये बोलना चाहते हो कि जो ये K9 एंड बॉम्ब स्क्वाड का सीन है, आप किसी और ऑफिसर का क्वालिफिकेशन अपने रेज्यूमे डाल रहे हो? नहीं सर, उनके साथ काम किया मैंने. अच्छा, उनके साथ काम. तो आई हैव बेसिक नॉलेज. अच्छा, और आपने अभी क्या बोला, आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? LCPD. नहीं, आपने अभी आई थिंक यू यूज द टर्म SWAT, राइट? वी ऑलवेज यूज कोड्स. You didn't make that mistake. मैं उतना तुम ये कह रहे हो कि भाई आज ना मुझे लेजेंड AVG was the only person जो एक फेलिनी सबका एक पॉइंट सही बोला. That is that stolen vehicle. और किसी ने नहीं बोला अबाउट दिस. And I hope ये सुन के भी लोग कल के इंटरव्यूज परसों के इंटरव्यू में ये वर्ड ना यूज करें अभी. बढ़िया, और किसी ने नहीं बोला. अगर किसी ने कोई बैंक लूटा है, मतलब नहीं है सर. जैसे लाइक आपने कैसे खाने के लिए पूछा एंड एवरीथिंग, हमारे वहाँ पर ऐसे कोई पूछ लो, अरे सर वो थोड़ी मम्मी की भी याद आ गई ना. मम्मी आपकी तरह दिखती थी. क्या है? मतलब बाल ऐसे ही पीछे रहते मम्मी थे मम्मी के जैसे क्या ना. नहीं बाल ये क्या मल्टीवर्स है? बाल ऐसे ही पीछे रहते थे, ऐसी चश्मा पहनती थी. जी सर, आपकी तरह चश्मा पहनती थी. I reminded you of your mom. क्या सर, मम्मी? बस ये बोल सकता हूँ. If I wasn't an SS. रैज भाई का इंटरव्यू देखो, फुल देखो. जो भी बोल रहा है, रैज का इंटरव्यू देखो, रोनल का इंटरव्यू देखो, स्पेंसर का इंटरव्यू देखो. These guys will give very very good answers. मुझे यहाँ पे फनी चीजें देखना है. These guys know how to give the answer. These guys know what to say, when to say, how to say. मुझे यहाँ पे हंसी मजाक देखना है. मुझे यहाँ पे फन देखना है. मैं थोड़ी जाकर देखूंगा, अरे वाह यार, इसने तो एकदम सही आंसर बोला, फक क्या बढ़िया आंसर बोला. थोड़ी वो देखना है. अगर मुझे बढ़िया आंसर्स होते हैं, मैं अनुभव को बोलता है देखो क्वेश्चंस है, मैं खुद आंसर कर लेता हूँ यार. बढ़िया आंसर्स हो जाएंगे क्योंकि मुझे पता है मैं आंसर्स बढ़िया देता हूँ. It's like fun, you know. If Chopra, I would have said something else, but I respect. अगर आप ऐसे मैं बोला मुझे फन देखना है, उसने बोला अपना फेस कैम देखो. Guys, 1 second, मैं अभी सबसे पहला रिजेक्शन अपलोड कर ही देता हूँ. किधर गया? डिस्कॉर्ड, SASP रिस्पॉन्स @rackplays.
आवाज आवाज नहीं आ रहा है। लाइक दिक्कत आ रही है। माय मम्मी अरे माय मॉम कुछ हो था क्या तुम्हारा वो? हैं? अरे मतलब मम्मी के बाल ऐसे थे सर और इयरिंग्स भी अच्छा, ऐसे थे और लगा चश्मे भी ऐसे पहनती थी। जेक सर का कुछ होगा उधर टाका। मैंने इनको यही बोला कि अगर मैं एसएसपी ट्रूपर नहीं होता कुछ बोल सर का कुछ होगा देता। आई एम रिस्पेक्टिंग पीपल। पर अगर जेक सर का Guys, tell me one thing. मुझे बस एक क्वेश्चन है, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा लोगन से। लोगन इज एसएसपी चीफ, उसके नीचे इज एसएसपी ट्रूपर, उसके नीचे है तीनों डिपार्टमेंट। सो एसएसपी ट्रूपर के पास परमिशन होएगा to change Park Ranger game model, right? एसएसपी ट्रूपर को पास परमिशन होएगा टू चेंज पार्क रेंजर्स का गेम मॉडल? टाका मेरी मॉम से भिड़ा होता तो मेरी मॉम जेक सर की तरह थोड़ी दिखती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, छोड़ो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अरे एक सेकंड, मतलब व्हाट? मतलब उसके ऊपर में गया इन द हायरार्की। सारा चेन ऑफ कमांड नहीं निकल गया सर, ये क्या हो रहा है? तो आप जैसा कि देख सकते हैं सर, अगर मैं पीडी में आऊंगा सर, मैं एक फनी एनवायरनमेंट लाइक यू नो नॉट ऑनगोइंग सिचुएशन। मजाक और कॉमेडी कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी। नहीं सर, नहीं सर, पूरी बात सुनिए सर। आई मीन लाइक आई विल डू माय ड्यूटी एंड जब हम रेस्ट कर रहे होंगे तो आई विल मेक अ गुड एनवायरनमेंट सर अराउंड मी एंड यू नो एंड आई विल बी अ गुड कॉप सर। रेस्ट कहाँ पे? कह रहा अगर हैव यू हैड एनी ऑथराइजेशन और लाइसेंसेस? ओके, प्रूव कराता था, वो कराते थे लाइक थे ब्रिज से कूदते थे ये सब। मेरा पता नहीं यूसेज बढ़ गया अचानक से, चोट लग जाती तो कुछ बैकग्राउंड में मैंने ऑन कर दिया, समझ रहे हो? सो मतलब रिस्क वो हगास हो रहा है, नेट लैग नहीं हो रहा है। आप अपनी जान गवा दोगे, अच्छा लगेगा? नहीं सर, इतना भी नहीं रही, जो तो फैमिली रही नहीं ना सर। कौन सी वाली? तो आप भी फैमिली हो, मतलब बन जाओगे सर। वो मॉम थी ना मेरी फैमिली। कॉल टकी आई एम सर फॉर माय या आई गॉट योर लेटर। What do you know? You're not coming back to this place? तब आपका रिस्पांस मिल जाएगा। Like, why do you want to know about my private life? Yeah. But I mean, like, अगर आप free हो तो we can hang around, you know. I mean, I'll be very honest. You remind me of your mom. That is very awkward for us to hang around right now. So you can be my mommy off duty. No, I can't be your mommy off duty. You can be my mommy off duty. अरे यार. Sorry. It's all right, sir. I'll manage myself. I'll hold on to it. You know. You're not Hold my on. mommy. Sorry, I was pretty cheap. like making awkward for my very good friend and sorry. Just you know getting emotional again and again. चलता हूँ रोने ना लग जाओ. Mommy. तुम लोग मारे क्या उसको? नहीं उसकी बस नहीं मम्मी की याद आ गई थी उसको। अरे भाई ये क्या था एंड ये क्या एंड था? ओ माय गॉड। Something to eat or drink. I'll die. जेक विलियम मम्मी ने
लंच बॉक्स नहीं भेजा क्या तुम्हारा? I'm not going to lie. Interviews hectic थे, but this was a good fun last interview. हाँ अच्छा हो मैं आ गया दाल भाइयों पे तुमने मारा क्या उसको? वो लास्ट वाले में देख के आते हैं। गाइस बस तुम्हें पता है एक चीज दिक्कत है लाइफ में, तुम लोग को वो दिक्कत पता नहीं है। लाइफ में एक दिक्कत है, वो तुम लोग को दिक्कत नहीं दिख रहा है। इस बार HTRP में एज ऑफ टुडे, मतलब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जेक का बकचोदी लेवल बहुत कम होने वाला है, क्योंकि आज के पहले आई वॉज एन ऑफिस, आई वॉज अ हाई कमांड। आज के पहले आई वॉज जस्ट अ हाई कमांड। एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, आई एम ऑफिशियली SASP ट्रूपर। अगर SASP ट्रूपर होके मैं सीरियस ना रहूं तो मेरे खुद के डिपार्टमेंट के लग जाएंगे। तो नाउ आफ्टर गेटिंग द रैंक थोड़ा सीरियस बनना, इसलिए बिसाइड द लास्ट इंटरव्यू, क्योंकि रीस्टार्ट का टाइम था 10-15 का, एवरी इंटरव्यू आई वाज वेरी सीरियस। तो यार वो बकचोदी का टोनालिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। इट्स ओके गाइस, आई कॉम्प्लिमेंट अप टू अ लिमिट। देखो यार ऐसे लोग शरीफ वाले बन जाते हैं भाई, बकचोदी करना है। ये लोग ये हमारा गेम वार्डन, ये हमारा शेरिफ, उनको बकचोदी करना है। ये स्टैंडर्ड होमकर का इंटरव्यू बचा है क्या? फिर मैं थोड़ा PD से आके उसकी लेता हूँ, फिर माइकल पे जाता हूँ। आ जाओ क्या? What will be your post here? My post is SASP trooper. SASP trooper is currently like the second highest post in the department. And then for Anubhav, Sendit and Pablo are like the chiefs of their own departments. Like Anubhav is Park Rangers, Sendit is BCSO, and Pablo is LSPD. And then there's Tanmay, who is like at a very, very high rank in LSPD. He is second in command at LSPD. And then there is Ravdar, who is second in command in BCSO. So that is how the PD is segregated right now. And right now, मेरे ऊपर है is my chief, that is Logan. सैलरी कम है, सैलरी कम नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे सैलरी से फर्क नहीं पड़ता है। ऑनेस्टली बता ना, मुझे सैलरी से फर्क नहीं पड़ता है, कॉप कैरेक्टर है। Yeah, I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change 'cause I can now. Here I stand now. सबका बदलेगा, अच्छा? No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. क्या करूँ guys? What do I do? एक काम करता हूँ गाइस, मैं 10 मिनट जेल से जाता हूँ, ये ओमकार का इंटरव्यू खत्म करता हूँ, फिर वैसे भी मेरे पास VIP है तो मैं आ जाऊँगा वापस। है ना? वैसे भी लास्ट इंटरव्यू है, VIP है, हो जाएगा। Look at this guys.
एक सेकंड गाइस, इंपॉर्टेंट कॉल। Hello 570. Hello 570. ठीक है यार, इग्नोर कर रहे हो। ओके यार, जा रहा हूँ मैं। No guys, I am not going anywhere. Huh? Triple two to Jordan, your interview Is here. 101, show me 41. 10-4. Welcome up. यार कितना अच्छा लगता है बॉडी कैम। true. I'll be there. सोच रहा हूँ कस्टमाइज करवा लूँ। है बॉडी कैम? हाँ, क्या दिखा तेरे में? ये बॉडी कैम का जो फुटेज दिखता है ना टीवी में, अपना मस्त नाम वाम लिखा अच्छा हुआ। वैसा। हाँ, उसको कस्टमाइज कर। अच्छा नहीं, मुझे अब अच्छा लग रहा है, लिख रहा है ऐसे SP2 पर मिस्टर, यू नो, अच्छा लगता है। नहीं, वो भी लिखा रहेगा बट वो कस्टमाइज अलग सा डिजाइन। रिप्लाई कर दिया। ओपी टॉन्ट मुस्ती गेमिंग, थोड़ा ऑन स्ट्रीम नहीं खोलना मुझे। ये क्या आउटफिट है, एकदम वो लग रहा है छपड़ी सा। तब वो विदाउट दैट अच्छा लगेगा। द स्कार्फ, द स्कार्फ इज मेकिंग यू लुक लाइक अ छपरी। शरीफ बन के तो कुछ भी पहन लेगा। हाँ, छपरी ऐसा लग रहा है वो स्कार्फ तेरे पे। ऑनेस्ट ओपिनियन। स्कार्फ उतारने बोला, शर्ट नहीं। नेक चेंज, नेकलेस, नेक वाले चीजें उतारो यार। हाँ देख, अभी सही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है गोइंग टू प्रपोज एक विलियम्स। होगी भाई वो एक हैं? अभिषेक अम्मे की मम्मी। क्या आवाज नहीं आ रही। कुछ बोलेगा? आवाज नहीं आ रही।
आवाज नहीं आ रही मिस्टर जॉर्डान सेंड इट। शर्मा गया देख लो। ये किधर गया लास्ट कैंडिडेट? फिर मैं जा रहा हूँ। बाहर है, बुला देता हूँ। ये बोल नहीं पा रहा ना, इसलिए नहीं बुला अच्छा रहा था। अच्छा अच्छा। He is standing just outside. आ रही है ब्रो, आ रही है। आ रही हाँ है। अभी आ रही है, बुला रहा हूँ उसको। ला मिले यार जरा। वो भाई है हमारे एलटी, उनको अमेंडमेंट्स नहीं आता, केसलेस नहीं आता है। हाँ, आगे तुम देख लेना, ठीक है? मैं देखूं सच्ची में? देखो देखो। रुको आई थिंक आ रहा है, रुको रुको। क्या देख? वो भाई एलटी है आगे। हेलो सर। Hello. So here is SSP Trooper Jake Williams and that's Game Warden Rex Davis. They'll continue with the interview. What all have you asked me now? Case laws, amendments, chain of commands, basically the SOP thingy, not situational सर data. लेकिन वो थोड़ा हरी हरी में था, तो लेट्स स्टार्ट ओवर ना पूरा। You want to start starting the से if you interview want to. fresh? नो नो आई मीन इट्स अप टू यू। वो क्योंकि ना सुनामी आ रही थी तो हमने थोड़ा No, I आंसर mean, सरश करे थे। it's up to you. Depends on your how comfortable you are. I am fine with anything, sir. Go ahead. What would you prefer, to continue the interview as it is, or would you want to start it afresh? Up to you, sir. Up to you. Whatever you feel right. I mean, I've given you an open slate, so if you feel you have messed up, it will start on a fresh slate. Yeah, sure. Let's start with that. Okay, so you did feel you messed up. Okay. Because no, actually I had to rush in a few answers because time कम था ना. Okay, so अगर कोई situation होगा और time कम होगा, तो you will rush into the situation. You will not think straight. No, not like that. सर जॉर्डन सर ने बोला मेरे को कि थोड़ा जल्दी आंसर्स दो क्योंकि सुनामी आ रही है करके। तो आई कुडंट आंसर ना। आंसर के साथ साथ स्टोरी भी सुना रहे थे, that's वो सब पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहे थे ना इसके। Okay, so just like, I mean, if you're starting afresh, can you just tell me something about yourself? Yes, sir. Sure. So I am Sher Shah. I am from India, and I used to live in Mumbai. I was a part of the Indian Navy Special Forces, and I was in the Marcos Marine Commandos. So I shifted to Los Angeles after a tragic incident in my special forces. I was decorated with Paramveer Chakra for my bravery in the field, and I later shifted to Los Angeles. I saw an innocent person die because of a gang-related shootout. So I was doing a regular job, but I could not find a job in which I would be 100% interested. So I saw an innocent person die right in front of me because of a gang-related shootout, and I then decided to join the LAPD. I joined in as an officer, and then I was later, like, step by step promoted up till the rank of lieutenant, and I was also a SWAT leader. Okay, and then what happened to that job? Nothing. I just decided to shift to Los Santos and apply here for the PD because I personally feel that this city has a lot more to offer than LAPD. I mean, you achieved. You were a what? What SWAT? What you said Uh, something? a lieutenant and SWAT leader. So you were a lieutenant, SWAT leader. So many achievements. You gained such awards. Then, like, there would be some reason why you decided to just leave such a high reputed post, right? Well, officially I wanted a transfer, but they would not let me go. So then I decided to resign from there because they just would not let me go. I was a valuable asset to the department. And any specific reason why you wanted to transfer? It is a personal preference. I just felt I had more opportunities in this city than in Los Angeles. So should I consider that one day if you feel that in California you have more opportunities, you'll just leave Los Santos and head there? No, not like that. Well, actually, I have been here in Los Santos before when I was in the service in Indian Navy. When I came here for a vacation, I have been to Los Santos, and I feel it's a beautiful city. I have always wanted to live here, but because of the plague, I could not. When I retired from the Navy,
there was the plague going on. That's why I Mhm. shifted to Los Angeles. But now that the city is open again, I decided to come back here. Okay, okay. Just for my understanding, if you were like, I'm pretty sure you know about the sub departments we have. That is LSPD, BCS, and Rangers. Yeah. If you do get selected and everything goes well, and you were given an option, you could pick a department. What would be your preference and why? Well, my personal preference would be LSPD. And why? It is because in Los Angeles, I was in the city department like Brooklyn 99, and I have more experience inside city. But I am fine with any department, like even if it is BCSO, it's still basically you have to serve. Okay. That's all that matters for me. So are you saying that okay, if you are a part of LSPD, you would be happy. If you are a part of BCS, you wouldn't mind, but you don't want to be a part of Rangers. Uh, Not particularly, but I would not prefer Rangers because for Rangers you need to have a lot of extra knowledge about wildlife and the animals there and poaching rights and all that. And me personally, I do not have idea about that, so I would not prefer it. But if I still get allotted that department, I'm open to learning new things. All right, okay. Okay, fair enough, fair enough. So, like, since you have been already working and all, and you have had a lot of past experience, what would be a regular day in your life while on duty? Okay, so first thing we used to always have a morning briefing where we would talk about like past incidents, what happened yesterday, and what mistakes we did yesterday, what the officers did. There used to be a briefing, and then we would work on serving better and improving the past mistakes for the rest of the day. And in the morning, then the sergeants used to brief me about all the squads, and the next thing we would proceed with the airborne checkups, and we would make sure that helicopters are perfectly tuned and ready for operations. Okay. And after the like helicopter checkup is done, like all the equipment testing is done, then I would proceed with the normal patrolling. Like a regular day would usually not involve a lot of shooting, but in Los Angeles, we do have the south part of the city which has a very high crime rate. Okay. So my patrol used to be all over the city. Usually like people requiring normal help and normal sometimes there used to be some break-ins and trespassing reports, but on very serious days there they used to be shootout situations as well. Okay. And you were able to tackle all of this, right? Yes, sir. Okay. So, I mean, this is one thing I genuinely ask, and I like to observe the kind of answers people give, because I would want to know if you had to look at yourself as an officer and Mhm. you would consider, and what do you feel personally is your biggest weakness, not at your personal level, but Hmm. while being on duty, like while being at a as a Leo. Okay, sir. And ironically, I have an answer for this with my personal experience. So when I joined in the Indian. department new, let me explain you my backstory more for this. Actually, like ठीक मैंने है, पढ़ आपको रहा एक हूँ. short brief में बताया था. हाँ हाँ. I'll tell you more about it. So what happened is the incident in which I had to medical take a medical discharge from the Indian Naval Special Forces. So basically, we were on a classified operation. I was piloting the helicopter. I had a co-pilot and four of my team members in the back. Our team had 6 members total, Okay. and we were deployed on a operation beyond borders. Yeah. So while returning, our helicopter took a RPG hit. The helicopter crash landed. I managed to crash land it, and what happened is me and my co-pilot survived. The rest four guys died, and we were facing severe injuries. After the medical discharge, after I was fully treated, I was awarded with Paramveer Chakra. I was not able to find a proper job for me. As I said, I could not find a job which I would find interesting. Like I would be able to focus in. I
I always had thoughts of my partners, losing my partners, the grief of losing my partners. That's the reason I shifted here. And then the same thing happened. I saw an innocent person die right in front of me. So that was the reason I joined the PD, and I eventually overcome those fears. I i accepted it, that this is life and this is how things are, and it is up to me what I can do to improve things and be a better person. So when I joined the department, when I was on the rank of a senior officer, I lost my calm in a situation, and because of which I was also deranked. Not to my proudest moment, but I would like to be blunt at this moment, because uh, I believe when we serve together, it's really honest. Uh, we be honest with each other. Yeah. So yeah, I lost my calm in a situation, uh, and I was also suspended for a week, and I got deranked back to an officer. But then yeah, I worked on it. I worked really hard on it, and I can say I have overcome my weakness now, and I have become a very calm person, a very patient person now. So, in your resume, it says you've been A1 certified, right? Yes, sir. I mean, see, I'll be very honest. A lot of personal experiences play with a person's mind or play with his abilities. So, don't mind me asking this, but it is something that I need to know. Is after that incident that happened, which Yeah. about the RPG and all of that. Yeah, After that, have you had any issues with flying or any fears while flying, or has anything like, because that's a very big thing that's happened with you, and Right, and no one can disregard that. So, but the thing is that, uh, for if you would be joining a department and you are L1 certified, there will always be something in your mind that what if something that ever happens again? How, like, that fear. So, from your point of view, have you faced anything or have you overcome that completely? exactly, sir. That's a very good question, I would say. And as I said, that when I finally accepted it, that this is how life is and this is how things are, and it is up to us to be better and come out better. So yeah, eventually I did have that fear, but then I also realized that in cities we do not have those kind of terrorists who would shoot down a chopper. I mean, that situation is like one in a million, but yeah, it could still happen. But I am not afraid anymore. It is up to me to come out better and overcome my fears, and I have. ठीक है, all right. So I'll just go to a couple of basic questions. What is the difference between reasonable suspicion and probable cause? All right, sir. So reasonable. One second, sir. Let me just. I'm kind of hungry. All right, okay. Yeah. So, sir, reasonable suspicion would be that you do not have a proper evidence of the situation, but you do have an a serious amount of suspicion on the person. The person is acting fishy or trying to hide something from you, and you can notice it. So at that moment, you cannot arrest the person, but you can detain him and frisk him to see if he has any weapon on him that he's trying to hide or trying to lie with you. And coming to with probable cause, you have a proper evidence, and that evidence give you the right to arrest the person and bring him into the custody for further questioning about the situation. All right, okay. Can you tell me what a felony stop is? A felony stop. All right. So a felony stop would be basically when we have visual confirmation that the driver of a vehicle is a wanted suspect, or he has committed a crime. Then we would go ahead and proceed with a felony stop. And do you want me to explain the process as well? No, that's fine. Okay. So I just wanted to assume that there was a local, like a person passing by, saw someone stealing a vehicle, and that person, and like after around say 1 hour, y'all spotted that vehicle, so y'all pulled him over. Now y'all don't know if that's the same driver, if the actual owner is driving the car. Y'all have zero idea about that. Okay. Because you have no identification of how the person looked who was robbing the vehicle. You'll just know that that number plate in the vehicle is slightly flagged just because of its
it's been announced stolen. What would you do? Would you perform a traffic stop or would you perform a felony stop, and why? Well, in that अरे case, लौट एक I मतलब would 40 और कितना है अभी actually लास्ट call है? in. I would first perform a traffic stop, and I will let the dispatch know that the Grand Theft Auto has been spotted on this location, and the occupants that is in the vehicle. I would then proceed with a backup unit, calling on a backup unit, and I would proceed the vehicle on a traffic stop with my weapon on my holster, like my hand on my holster. ठीक है, alright, okay. Now, say in that traffic stop, okay? Like this. Okay, yeah, it's cool, okay. Say in that traffic stop, say I am performing that traffic stop, okay? Hmm. And say Rex is patrolling around somewhere. Okay. I have the liberty to just say out there, Rex, I've pulled over this guy, he's a red Ferrari, just come and help me out. But instead of that, we talk in a specific language. Yeah. We talk in the codes, the 10 codes. Why is it that? When I can have a simple conversation with Rex and just tell him to come here, why do I need to like memorize all the codes and go through all that hassle? Well, the primary reason for that is to make the call shorter and more efficient. And when you give a call directly to some officer, instead you give it to the dispatch, and the dispatch then they have the whole system. They can see the trackers of all the officers, and they will assign the nearest officer to your location. And it is also a uniform code of communicating, so that people do not get confused between different accents and try to understand what the other person is trying to say on the radio. Okay. Sorry, do you want to ask him the question you asked him previously? Again? Just ask him, like, I just want to hear what he said. Alright, Civil Lieutenant, right, Mr. Sher Shah? Yes, yes. You're familiar with the SOP as well. Yes, sir. So, how many numbers of like amendments does the Constitution possess? Set 10 amendments. What are those? Should I read all of them for you? Couldn't you recollect before the tsunami or something? Well, thoda rush mein I got some anxiety, sir. No problem. Read me all the 10 amendments. Okay, sir. So the First Amendment prevents Congress from making any law respecting an establishment of religion, impeding the free exercise of religion, breaking the freedom of speech, infringing on the freedom of press, interfering with the right of peaceably assemble, or prohibiting the right to petition to the government. That is no religious discrimination. The second one protects the right to keep and bear arms, which is you have the right to keep or carry weapon with proper paperwork. The third amendment places restrictions on the quartering of soldiers in private homes without warrants. Early you cannot proceed like inside someone's private property. The Fourth Amendment prohibits unreasonable searches and seizure of property by the government. It protects against warrants and stops As of now, risk, yes. We'll safety reopen, but inspections, soon. and Well, the first batch wiretaps of settled and will other reopen. forms of surveillance. The Fifth Amendment protects self-incrimination and forbids double jeopardy. It also requires the due process of law be part of any अबे इसको कोई proceedings बोलो that यार, decline a किसी को 10 citizen अमेंडमेंट the याद नहीं रहता है. You life, just know the liberty, or meaning of property, it. and requires the कोई रट्टा government नहीं to मारता भाई यार, ऐसे नहीं compensate बोलते. citizens when it नहीं takes बोलते private ये. property for public use. The Sixth Amendment guarantees the right of criminal defendants, including the right to public trial without unnecessary delay, the right to a lawyer, and the right of the accused to know who the accusers are and the nature of the charges and evidence against them. The Seventh Amendment provides for the right to trial by jury in certain civil cases according to common law. The Eighth Amendment prohibits cruel and unusual punishments, which are not limited to excessive fines. The Ninth Amendment protects rights not enumerated in the Constitution. The Tenth Amendment states the federal government possessions only
only those powers delegated or enumerated to through the constitution. Actually मेरा English थोड़ा weak है. Can you tell me this in Hindi? कौन सा सर? 10th one. Same मेरा भी like I belong to the same country. हिंदी नहीं आता, हिंदी आता मेरे को. थोड़ा हिंदी में बता. सारे राइट्स सारे अमेंडमेंट्स हिंदी में बताओ. हाँ. गाँव से समझ नहीं आता मेरे को. हाँ कभी कभी सस्पेक्ट करेक्ट करके बोलता है मेरे को हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं आती हिंदी में बताओ ऐसा कुछ बोलता है राइट के लिए वैसे ऑल पढ़ साले ऑल पढ़. सर मेरा हिंदी अभी ना काफी वीक हो गया. सर आप मुंबई से आए हो क्या बोल रहे हो आपने बोला था मुंबई से. बहुत सर लॉस एंटोस है. थोड़ा पानी दे दो सर गला सूख गया. Yeah, sure, you can have a bottle of water. There you go. हाँ फंसा. हाँ फंसा तू. हाँ और पढ़. थैंक यू सर. कोई दिक्कत. ओके ठीक है कोई दिक्कत. ठीक. Let's move on. पी लो पानी पी लो. Okay. Yes sir. Let's move on. Jake sir, correct my English if I'm wrong. ठीक है सीख रहा हूँ. Let's move on to case laws. What do you mean by case laws, Mr. Shersha? ये बढ़िया था. केस लॉस का मेरे को नहीं याद है. अच्छा, you are a lieutenant, right? Yes. सही है. रेक्स सर कुछ पूछना चाहते हो? सर एक्चुअली ना मैं लाइक ये लॉ पार्ट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था क्योंकि आई वाज इन द स्क्वाड ना तो या आई अंडरस्टैंड. गोली चलाने आते हो क्या ऑन ड्यूटी? अरे नहीं सर वैसे नहीं बोल रहा. तो I used to do most of the field work. So are you saying that if there was any other work besides on field you would like probably hand it over to someone else? नहीं सर वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. I am saying कि I used to do it. मतलब my role was to do it. I am not saying कि I will not do it. If you tell me to do it, I will. अच्छा, all right, okay. Yes. I am always ready to learn, sir. As I said in the Park Rangers answer also, I am always ready to learn. Okay, all right, okay. I'll give you a small situation. Okay, sir. Consider yourself in the BCSO department, okay? Okay, sir. And you have the sheriff out here. Okay. So I am from the SASP as a trooper, and we have Rex Davis, who's the game warden of the Rangers department. Okay. So consider V3, and there are multiple situations going on. Huh. Out here, I give you a call as an SASP trooper. That there's a hostage situation. I need you to respond immediately to take care of the situation and assist out here. On the other side, your sheriff, basically, he is in a combat situation where somebody's trying to shoot him. Okay. So he tells you have to come where I am. I need immediate combat assistance because his life is on the line out there. And on the other side, Rex just comes up to you and tells you, see, you're close by in a proximity where an officer is down. Just go help him out first, and then you do whatever you have to do. Which situations would you prioritize, or how would you go about the situation, and what would you do? Sir, well, this is a very tricky situation, but I would firstly inform the dispatch regarding the situation. I would ask them if they have any available units for assistance. Secondly, I would tell the EMS to go attend the downed officer and give him the proper medical assistance. And I will let you know that an officer is currently in an active shootout and his life is at risk. I will go ahead with assisting the officer, and I will also let you know that once the officer is free, we will then head straight towards the hostage situation. And if possible, please assign any other units to the hostage situation for the moment. What if there is no other units available and you're the only unit there that can probably either assist me? Okay, fine. The EMS came and Rex's call got fulfilled. Fair. But you're the only officer available. You can either assist me or you can assist Send It. You are also on the situation? I'm in the hostage situation. Send is in the shootout situation. And you're the only officer available. But the hostage is a civilian, right? Yeah. Okay, so,
Sir, in most hostage situations, the robbers are actually not willing to harm the hostage because they are also doing this because of some of the reasons they have, but they are not in the mindset of actually causing harm to the hostage most of the times. But the officer who's involved in the actor shootout is definitely against some very bad people who do not hesitate to shoot at police, and I will definitely assist him first because his life is at stake. And once the officer is assisted, then we will proceed with the hostage situation, because I also believe that you are a SSP trooper, and you are perfectly capable of handling a hostage situation, sir. So out there, you're telling me that if by chance the suspects out there do shoot down the hostage, irrespective of if they are sentenced or not, I will have to tell court that my officer thought they were just not going to harm the suspect and they were going to just ask for some demands or whatever, and that's why he didn't come. Will I be able to tell this to court? Well, no, sir, but assisting the officer would be my first priority, sir, ठीक है. because officer's life is also at risk. ठीक है, okay. Besides the Air one, which I see why your resume is certified, did you have any other licensing? Yes, I did have interceptor license and a bike license. All right, I'll give you one more situation. Okay, yeah. So think of it this way: when you're a rank of an officer in the LSPD, there is a bank robbery being taking place, which is a very big situation. They are using a car named the BMW M5 to actually try to evade from there, which is a really fast car. And at that time, we have no one who is licensed to the speed enforcement on duty. We have no high commands available. We have no FTOs available and no one from the command available as well. So it is just a mix of officers and senior officers taking care of the situation. A senior officer knows that you are a good driver. So he tells you at that point of time, he just get out a Mustang and come to the situation and keep it back after the situation is over. And at that point of time, you have no license for the SEO. So what would you do and why? Okay, so according to the SOP, I anyways cannot drive a Mustang. I do not have the license for it, and I will do things in my possession, the resources in my possession to actually tackle the situation instead of breaking the SOP. I would how many units? I have ample amount of units, right? I mean, say you'll But have 3 vehicular units and you'll have an Air1. but no licensed guy. We No also have Air1. license. Yes, no license guy. Yes, no license. Okay, so I would call the Air1 for support for visuals, and then I would tell the other units that we can use spikes, deploy spikes in like turning areas where it is not noticeable, and I would not prefer to take out the Mustang instead. I would instead use the spikes and roadblocks to try and counter to stop that weapon. Stop that car, sorry. Okay, ठीक है. Okay, cool. I have one last situational question from my end. So, assuming there's a building, okay? On the building, due to Air1 surveillance, you've spotted 5 suspects. Okay. They are holding class 1 weapons. They might have class 2 weapons inside their bags which are unnoticeable. So the Air1 does not know. And there could be people inside the building also because the Air1 just got surveillance of the rooftop. So we are unaware. Okay. What we have information is 5 people holding class 1s. On the roof? On the roof, yes. To get to that roof, there is only one ladder. There is no other way you can get to that roof. Now you are in command of the situation. You have 7 officers with you. So you're totally 8. Okay. And you're 4 criminals and 8 officers. 5 criminals and 8 5 officers. criminals. Okay.
And you are all the 8 officers are completely equipped with class 1s, class 2s, your batons, tasers, everything. The entire police armory that is assigned, you all are equipped with that. Now, the only way up is that ladder. And you all have no air support. I mean, you all have that one air one, but that is the only support you have. You don't have, you can't get out 2 air ones or 3 air ones. कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है सर? It's a 3-story building. ओके, सो रूफ पे और कोई डोर्स नहीं है आने के? No, there's just a one ladder or air support. All right. So I would first advise the event to notice what they are doing actually on that rooftop with the guns. If they are just some teenagers trying to do photo shoots with the guns, I would tell the event to tell them on the loudspeaker to keep the weapons on the floor right now and call the units in to go up and search them if they have weapon license in their possessions. Actually, I would ask them to come down themselves by keeping the weapons on the roof, and then I would tell my team to go up and check the weapons if they have serial numbers and if the weapons are legal. And what if they begin to shoot? Well, as I said, I would first tell the airman to tell them to give a warning if they are not ready to put down the weapons. Then I will have to tell some units to get in the oven and rappel down from the chopper while the other units are climbing up the ladder. Okay, and what would you since you're what would you all use against this? Class 1s. And what if while just walking up they just get their class 2 out of their bag and just injure all the officers? Then Well, that is why we need a strategic planning before we move in on any of such suspects. Of course, there would be planning. We would not just go without planning. We would have 2 officers on the other roof, looking at them with the weapons pointed. And if we see any movement, if we see that any class 2s are coming out, I would advise my officers to first fall back and then replan the strategy and then counter them. Okay, cool. I have no more questions from my end. Send it if you guys do have questions. I can go for it. Nope. Okay. Alright, so your interview basically ends here only. Send it, you said no, right? Your voice cut slightly for me. Or you said हाँ yes? लेकिन कोई बात नहीं था, फिर पूछो. Alright, one last question before we end your interview. Shiri, Okay. you there? Yeah. Being an officer, you are always subject to liability. Suppose you arrested a person and you forgot to read his Miranda rights, and that guy is Good question. full hyper and he's demanding for a lawyer, and it's completely out of your mind, you forgot to read his Miranda rights. So what will you do? Will you still process him or will you let him out without processing? No, at that moment I will let him call his lawyer, and I will also call the DA and I will let him know about whole situation. But you haven't read his Miranda rights then. Well, then at that point I cannot use anything that he said to me against him. But yeah, this That's situation has perfect. never happened with me. उनको पूछ लिया which department is he interested in? Yeah, he said LSPD. Okay. Alright, thank you for appearing. Your response will be outside. Thank you, sir. यार मेरे को पूछना था लास्ट में जब योरन ने बोला एक और क्वेश्चन है योर फेलियर एज अ वो इन योर करियर एंड I have very sharp ears, sir. I have very sharp ears. नहीं कोई नहीं Go to the dawn. These sharp ears might affect your life. Just saying. अरे मजाक से 22. 22 2 ट्रिपल 2 1041 बोलो रैंक्स मिल गए ना रेक्स हाँ ट्रिपल 2 1041 108 आफ्टर हाँ बोलो जो हमारा चीफ है मतलब मेरा चीफ है इन अ वे उसने बोला कि सेंडेड यू एंड रेवा टेकिंग केयर ऑफ बीसीएसओ पर क्या उसे ये बोला कि सेंडेड तुम शेरिफ हो
मैंने मेरे कहा को तो बोला बोला कि you will be हैंडलिंग द रेंजर्स, मेरे को तो तू तो बोला, अकेला मेरे है ना, को तू तो तो बोला। होएगा तू तो अकेला है। हाँ। किधर बोला मैं शेरिफ हूँ? नॉक नॉक नॉक। कमेंट। सर वो गेट खोल देते हैं मेरे लिए तो। साथ में ले जाओ, गेट खोल दो। झाँक रहा है। किधर गया ये? ये देखो बाहर आके अंदर चला गया। बहुत बड़ा पीढ़ी है सर ये तो। Yep, we have a lot of departments and a lot of upcoming departments that ब्रुकलिन will be settled out here. लोग पे भी डिपेंड करता है ना। क्या? वो कह रहे थे कि उनका ब्रुकलिन वाला ऑफिस छोटा है। अच्छा। नहीं नहीं, मेरा ब्रुकलिन में नहीं था, मैं तो एलएपीडी में था। ब्रुकलिन तो न्यूयॉर्क में था। वो शो की बात कर रहा था मैं। अच्छा। नेटफ्लिक्स पे, हाँ उसमें बहुत छोटा सा दिखाते पीढ़ी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पूछा था क्या आपने जेक सर इससे? क्या? पीडी कैसे? कैसा दिखता है नेटफ्लिक्स पे? हाँ। कोई बात हमारा तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मेरा आईडी ले लो सर, शेयरिंग इज केयरिंग। नहीं Are नहीं, you 4 trying साल से चल रहा to है। bribe yourself to get the post out here? अरे नहीं नहीं सर, True. मैं तो ऐसे ही okay. सार्वजनिक अकाउंट है सर, मैंने भी दोस्त से लिया। मतलब आप ये कह मेरा रहे हो खुद कि का आप दूसरों पर्सनल का है। यूज करते हो, दूसरों के साथ फिर शेयर करते हो दूसरों का? हाँ। अरे नहीं नहीं। व्हाट? अच्छा नहीं, ओके नहीं ठीक है। यूज वाले यूज किया इसलिए तो शेरशाह है। मेरा दोस्त। अरे कुछ क्या? कुछ नहीं। थैंक यू सर। नो वरीज। चलो तुम्हारे को एरिया में घूम के आते हैं। हाँ रुको, सुट्टा मारने तो ट्रूपर भाई को। तो गाड़ी लेके आता हूँ ना। यस। भाई ओ एक सेकंड, अभी मैं थोड़ा फ्लेक्स करके आया। करो करो। इन माई ब्लू चार्जर 15 मिनट कोड वन करता हूँ, फिर मैं चलता हूँ सोने। ब्लू चर्च रोड अच्छा दिख रहा है। रोड है? ये कौन है शेफ? जॉर्डन सेंड इट। डार्क ब्लू ना, ये वाला ना? ये वाला था क्या? ये 3 ब्लू है। यही होगा फिर। Still better metallic actually. लिवरी नहीं है ट्रूपर का?
अच्छा कोई बात नहीं, ये छोटा दर्द। मोटा डिपार्टमेंट है कोई। सुना लो यही ब्लू है ना मेरा? नहीं, फिर कौन सा वाला है? मैट में नहीं आता। और ये मेटालिक है चमन। क्या ये है? जो डार्क शेड होगा वो होगा। ये वाला है? ओह, वो अपनी हाँ, गाड़ी सही है। देख रहे हैं। हाँ सही है, ब्लू ब्लू कर रहे हो, सही है। भाई करना पड़ रहा है यार, मेरा लिवरी नहीं है तो यही करना पड़ता है। ब्लू कर लो, रोड पे चलाना मस्त। एसपीडी रोड पे चलाओ, पीछे मुड़ के देखेंगे। हैं? हाँ ट्रूपर की गाड़ी जा रही है, देख रहे हो, वट होना चाहिए ना। Also, just DM me this. Like DM me this, I'll send it to high command and then they'll. ये क्या कर रहा है? अबे थोड़ा पीछे ले ले, मुझे 1 मिनट लगेगा। ऐसे लोग भाई छी। 101, अरे बेटी इसकी माँ का। इससे डार्क कोई है नहीं ब्लू, आई थिंक। भाई बुली करते तो मैं बुली करने ही तो आया था उनका। मैं बुली करने ही तो आया था। One, show me code 1. Brightness come. This is Gucci? Reckless driving a little soul. Oh. और एक रिपोर्ट करवाना था, उनकी किडनी अच्छी है क्या? हैं? मोस्ट एक्सपीरियंस कॉप के किनमें से? इंटरव्यू वाले से? क्या तुम इंटरव्यू वालों से पूछ रहे हो कि कैसे पूछ रहे हो?
जो इंटरव्यूज देने आए थे उनमें से मेरे हिसाब से मोस्ट एक्सपीरियंसेस प्रोबेबली रैज एंड माइकी। ओशन बोलता, पर ओशन ने बहुत लंबा ब्रेक लिया बीच में। ओशन बहुत स्टार्टिंग से कर रहा है, पर ओशन ने बहुत लंबा ब्रेक लिया, उसकी वजह से आई कांट से हिज नेम। I don't think you guys have heard much about Mikey, and Mikey stream भी नहीं करता. He's probably, he's an amazing person. Ura bhai, not a single grinder here. Hello, grinders. कोड चालू करता भाई, चूपर को स्ट्राइक पड़ने वाली ऐसा लग रहा है। भाई बट ओशन जीसीपी है भाई, वो टाइम जब ट्रूपर सीनियर ट्रूपर होते थे, डीसीपी हुआ करता था। अभी क्या है, अभी ट्रूपर मतलब जॉर्ड। इसका टर्निंग ना थोड़ा सा हैवी है, नॉट गोइंग, इसका टर्निंग थोड़ा सा हैवी है। अबे यार ये क्या था, ये गंदा था, ये गंदा था, ये गंदा था। हेलो आरजी, I wish Mikey would do crim and just join the racing scene, man. Like legit, I wish he does that. I wish at least like बस वो क्रिम बना के रेसिंग में आ जाए और कुछ नहीं। इधर फ्लेक्सिंग चल रहा है, ग्राइंड नहीं। आज रैंक मिला है मुझे। सुनो, हेलो हेलो हेलो, बोलो बोलो। एक क्वेश्चन है। पूछो। जब आप एक गाड़ी रिपेयर करते हो, जो मैकेनिक खुल जाते हैं, नहीं, जो मैकेनिक हेल्प करता है, क्या वो गाड़ी को रिफिल भी करता है? करना चाहिए क्या? नहीं, मैं बस पूछ रहा, बिकॉज whenever I do it, my fuel goes full for some reason, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा है कि नहीं है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर है तो ठीक कर दूंगा, थैंक्स। हाँ, वो दिक्कत नहीं है। Want to dispatch? Send it. The personal mechanic that we have inside the PD, does he refill as well? 10-4 he does. 10-4 update when you repair. Oh god, okay. 10-4. Didn't expect such question from you, but fine. We're professional, it's dispatch. यूनिफॉर्म है क्या टोपक? अभी तक तो नहीं यार। जिसको बोलना है सर, अब क्या गलत जगह आए हो? अगर आरुषि ने इंटरव्यू देखे है ना,
तो आरुषि को डर लग रहा होगा कि ऐसे सवाल पूछते मैं क्या बोलूँगी, क्या मैं इंटरव्यू दे पाऊँगी। लोगन इंटरव्यू लेगा जी, टन मेरा लोगन इंटरव्यू लेगा। क्लियर डिस्पैच ब्लिप्स। ऐसे ऑनेस्टली ना बेला आरुषि का ये सब का इंटरव्यू मैं नहीं ले सकता यार, मेरे लिए मुश्किल है, उनको तोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। रेडार, अरे यार रेडार भूल जाता हूँ। भाई इनको 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 तोड़ना और रोस्ट करना ना थोड़ा लाइक मुझे बुरा लग जाता है यार। क्विट करो ना, आई वांट टू ग्राइंड। वैसे भी कुछ नहीं कर रहे आप हैं ऐसे लोग भाई, छी भाई, ऐसे मैटर करते हैं लोग। Look, guys, just check one thing. Okay. Okay, all is done. अच्छी बात है, चलो। अरे यार नहीं कर सकता, सच बोल रहा यार, नहीं कर सकता यार। अगर मैं इनको तोड़ूंगा मुझे खुद बुरा लगेगा, बट इफ आई हैव टू टेक द इंटरव्यू करना पड़ेगा फिर मुझे, लाइक ऑप्शन नहीं रहेगा। आई हैव टू आस्क देम एंड ट्रीट देम लाइक एवरी अदर पर्सन। ओ भाई बच्चा, मैं सोचा कैरेक्टर स्विच कर लूँ यार, कोई है ही नहीं तो आई कैन फ्लेक्स कि ये ब्लू गाड़ी है। हाइड्रा वाले का इंटरव्यू कौन लेगा, मैं उनका ले लूँगा भाई। भाई मुझे न्यूक्लियर का इंटरव्यू लेना है, मुझे न्यूक्लियर का इंटरव्यू लेना है। न्यूक्लियर को मैं तोड़ूंगा। मुझे भी तोड़ोगे ना, ऑफ कोर्स। हाँ राइट, तेरे को तोड़ूंगा। वॉरियर, न्यूक्लियर, वन टाइम, हाँ ये सारे लोगों का इंटरव्यू मुझे लेना है, पर आई डोंट थिंक सबका ले पाऊंगा। I don't know why that is that, man. When this was a very easy one. You have to go from here, right? Yeah. इसका टर्निंग काफी बड़ा है। चीज पे वाले लोग सबको तोड़ना, बस मेरे को बल्लू को नहीं यार। आरुषि, अगर मुझे इंटरव्यू लेना पड़े तो मैं अभी से ही बोल रहा हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। माइकल से नहीं तो पैट्रिक से आओ। माइकल पैट्रिक करो क्या? मैं जा रही हूँ, गाड़ी हटाने जा रही हूँ। हटाओ हाँ चिकू। हेलो ऑफिसर। बताओ ऑफिसर कैसे हो ऑफिसर? बढ़िया बढ़िया हो, बढ़िया हो। बताओ क्या चल रहा है शहर में?
बस नमस्कार सर, नमस्कार। खेलने गई नमस्कार जो सर। दूर आके? ये बहुत काई काई लिली, हाँ, सुना ये सुना। इनसे लाल शर्ट वाले से पूछो हम तीनों रन करेंगे। सैल्यूट सर। I salute to you as well यार। बाय बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय। यप। व्हील ना होगा, चलो व्हील चेंज करते हैं फिर देखते हैं। लेट्स चेंज द व्हील्स एंड ट्राई। ओके स्विच करो डॉक्टर से मिलने हैं। लास्ट आई न्यू शी वाज प्लेइंग VLT। छोड़ो, नहीं, I'm not changing wheels. वैसे गाइस, तुम लोग को एक सीक्रेट पोर्टल देखना है? तुम लोग को एक सीक्रेट पोर्टल देखना है? इसमें एक ही बार दिखाऊंगा। तुम लोग को एक सीक्रेट पोर्टल देखना है? हैं? सीक्रेट पोर्टल गायब? सीक्रेट पोर्टल गायब? अरे यार खत्म भाई, सीक्रेट पोर्टल गायब। तो बताइए वॉल के थ्रू जा सकता था मैं हैरी पॉटर की तरह यार। देखो यार Inactive? 10-10. 10-10। Triple two code 1+1. पैट्रिक वर्सेस लीना था VLT में। हाँ था तो सही, बट यार आई डोंट थिंक वो इतना एक्सटेंड होगा। आई डोंट थिंक वो RP इतना एक्सटेंड भी होगा, सच बोले तो। भाई पोपट हो गया मेरा यार। पास के बाद VLT जब PD में कैसे पोर्ट्रेट भी करना है। हीरा को डाउन कैसे किया PD ने? अरे यार Hello, Officer Ray. Send it. Do we have any team exclusively deployed for finding the missing person? 10-10 as of now. Because there is a young girl who is complaining at the apartment site now that her parents are missing. Can you help us out here, if you can come? At 10 for 76. यस यस प्लस सही है। भाई ये स्ट्रेस का सीन नहीं होना चाहिए इतना यार। नहीं। Triple plus 123.
कितना स्लो करना पड़ेगा यहाँ पे? ओके that was okay. एयरपोर्ट जाओ एक बार ना नहीं यार हम पढ़ते हैं यार, शुरू भी ऐसा मत बोलो। 22211 Send for send it. 1025 Vespucci. Send for I'm there right now. 10 for. Exact money. Reception. Copy. मैं पूरा चैट पढ़ता हूँ, बस जोर से नहीं पढ़ता हूँ। कैसा? आपने सुना वो कंप्लेंट का इनके हाँ। पेरेंट्स मिसिंग है, तो वो सोचा कि केस था अभी कोडो नहीं कर रहे तो सोचा साथ में मिलके सॉल्व कर लेते हैं। No worries, या यस मैम, आज बताओ आपका क्या इशू था? हाँ, किसकी क्या कंप्लेंट लिखानी थी आपको? मैं मम्मी डैडी मिसिंग है, या फिर मैं मिसिंग हूँ, पता नहीं, कोई तो मिसिंग है। और लास्ट टाइम कब था जब आपने मम्मी पापा से मिला था? बहुत दिन हो गए, एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। मैं पुलिस स्टेशन आई थी कितनी बार, बस कोई भी नहीं था। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि अभी हमारा पूरा डिपार्टमेंट सेटअप हो रहा है, सो नाउ यू विल सी ऑफिसर्स अराउंड द क्लॉक। क्या आपके पास कुछ आईडी कार्ड होगा आपका, जहाँ से आइडेंटिफिकेशन जान सके हम लोग? नहीं, मुझे पास तो कोई आईडी कार्ड नहीं है। अच्छा, आपका नाम बताइए प्लीज़। चिंटी कुमारी। चिंटी कुमारी, एक सेकंड। हाँ, एंड क्या आप हमें बता सकते हैं आपका मॉम और डैड का लाइक नाम क्या थे? मम्मी और डैडी। क्या लाइक उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं थोड़ा, बिकॉज ताकि हम अगर उनको पहचान पाए, इफ वी सी समवन दैट रिजेंबल्स देम, हम उनको कन्फ्रंट कर पाए। लाइक कुछ डिस्क्रिप्शन बता सकते हो वो कैसे थे? मैं पापा इनके थे। इनकी तरह? हाँ। और किधर? और मम्मी उनकी तरह है? यस। तुम्हारे पापा रेक्स की तरह दिखते थे और मम्मी जॉर्डन की तरह? यस। जॉर्डन जरा कैन यू रिमूव योर हैट प्लीज? क्या? जो तुम्हारा हैट है हैट अच्छा हैट। हाँ। क्या अभी भी आपकी मम्मी इनकी तरह दिखती थी? हाँ, बस मूछें नहीं थी और बाल लंबे, बस सेम टू सेम इनकी तरह। इनकी मूछों करवा के दिखो, मूछें और बाल लंबे करवा के दिखो, सेम लगेंगी। नहीं, वो नहीं कर सकते कि वो उनको बोल सकते कि गो शेवन का, वो सब तो नहीं बोल सकते यार मैम। ठीक है, बट मम्मी इनकी तरह लगती थी। अच्छा, और लास्ट टाइम आप उनसे किधर मिले थे? माउंट चिया में। किधर? माउंट चिया, पहाड़ों में ऊपर। पहाड़ों में किधर? लाइक कुछ जगह? माउंट चिलियाड। अच्छा, माउंट चिलियाड। अच्छा, और तुम लोग माउंट चिलियाड क्यों गए थे? हम लोग है ना पिकनिक पे गए थे, हम लोग वहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रही थी। ओके।
हाँ तो फिर वहाँ पे हम जब हाइड एंड सीक खेल रहे थे उस टाइम पे मम्मी डैडी ने बोला मेरे को बेटा आईज क्लोज करके काउंटिंग करो। फिर मैं काउंटिंग करती थी, फिर मैं देखी तो कोई भी नहीं था। तो बेटा वो चले गए थे आप बोल रहे हो? हाँ फिर मैं वहाँ पे वेट भी करी, मैंने 3 दिन वहाँ पे वेट करा मम्मी डैडी शायद आएंगे या फिर मैं गायब होगी तो उन मुझे ढूंढने के लिए तो आएंगे, कोई नहीं आया। फिर वहाँ पे मैं जंगल में थी जानवरों के साथ। तो फिर आप फिर माउंट चिलिया से वापस कैसे आए? भागते हुए आए ना बहुत तेज। हैं? माउंट चिलिया से यहाँ तक? हाँ मुझे बहुत दिन लगे। क्या आपको कुछ खाना पीना या कुछ भी चाहिए? हाँ चाहिए, खाना और पानी चाहिए। आपको 2 पानी का बोतल दे रहा हूँ, also give you 2 chocolates for you to enjoy थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू अंकल। हाथ पाँव बहुत दर्द हो रहे थे पर क्या करें, मम्मी डैडी को भी ढूंढना है ना। क्या आप उसके बाद कभी हॉस्पिटल गई थी वो चेकअप या कुछ भी? क्योंकि आप अगर इतना टाइम चल के आए हो। गई थी। अच्छा, अगर आप बुरा ना मानो, कैन आई आस्क यू फॉर योर एज एज वेल? 18 प्लस 19। आप 18 इयर्स की हो? यस। और वीडियो पे आप गए थे माउंट चढ़ाने पिकनिक मनाने विद योर फैमिली एंड उधर लाइक यू दे वर मिसिंग। हाँ पहले हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आने के बाद हम गए थे हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे मम्मी डैडी डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे थे, मैं तो बाहर थी। फिर मैं वहाँ पे लॉलीपॉप खा रही थी तो मम्मी डैडी ने बोला कि चलो हम शहर घूमते हैं। मेरा कुछ चेकअप करा रहे थे वो लोग, पर फिर चेकअप कराने के बाद हम शहर घूमते थे तब हम माउंटिया गए थी। अच्छा ओके ओके। तुमने बोला चिंटी ने फीनिक्स को? क्या क्या? नहीं वो कह रहे थे कि चिंटी ने बोला है। क्या हो गया चिंटी? मेरा फैन है चिंटी। एवरीथिंग गुड? हाँ मम्मी डैडी की याद कर रही हूँ ना, मम्मी डैडी। अच्छा तभी पुलिस स्टेशन। ओके हाँ कंप्लेन लिखाने आई थी। देखो जो भी आपकी डिटेल्स है मैंने लिख तो लिया है एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू फाइंड योर पेरेंट्स। until then I'll just like बस like मुझे 1 सेकंड लेना। ओके आई एम जस्ट गोइंग टू चेक ऑन पेपर वर्क। ठीक है ओके सर। तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ पता चला? नहीं पता चला। ऑलराइट तो मैं चेक किया व्हाट मैं एक सजेशन दूंगा कि वाइल हम लोग ढूंढने की पूरी कोशिश तो करेंगे। मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आई विल टेक यू टू माउंट जोना जो यहाँ पे जो EMS फैसिलिटीज़ है। आई वुड रिक्वेस्ट देम टू आपका एक पूरा मेडिकल चेकअप करें जस्ट बिकॉज अगर आप माउंट चिलिया से यहाँ तक चल के आई हो, मुझे पता नहीं है बीच में अगर लाइक इफ़ यू आर हार्म्ड, आपके साथ कुछ हुआ, इफ़ यू आर फीलिंग फाइन और नॉट, तो वो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे। आई वोंट कम्प्लीटली बी एबल टू डू अ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आई मीन हम एक तरह से हम लोग भी पूरा कोशिश करेंगे टू फाइंड देम, बट आई ऑल्सो वांट कि आप भी सेफ रहो, आपको कुछ ना हो। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड लाइक आई कैन टेक यू टू द माउंट जोना मेडिकल सेंटर एंड देन वी कैन फिगर फ्रॉम देयर क्या है। ठीक है ऑफिसर। आ जाओ आ जाओ। पर मैं पागल नहीं हूँ ठीक है? हैं? नहीं तुम पागल नहीं होगे बिल्कुल। हैं? हॉस्पिटल लेके जा रहे हो ना? मुझे बचपन से लोग पागल बोलते थे। नहीं यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई विल बी टेकिंग यू टू द हॉस्पिटल ओनली, नोवेयर एल्स। ठीक है ऑफिसर। चिंटी दुआओं में याद रखना, जल्द वापस आ जाओगी तुम हॉस्पिटल से। मम्मी तो ही जा रही है। अरे पता है लेकिन हॉस्पिटल में टाइम लगता है ना, और दूर भी है काफी। हॉस्पिटल में डॉक्टर पकड़ के रखते हैं क्या?
हाँ रखेंगे ना, मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा तो 5-6 घंटे तो कहीं नहीं गए। इंजेक्शन लगेगा तुमको? नहीं नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। आ जाओ आ जाओ आ अच्छा जाओ। नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ठीक यार। आ जाओ आ जाओ। वो obviously काम है। नाइस काउंटर आरपी। अरे वो तो हम देंगे ही। आई एम काउंटर आरपी पर्सन। ओके। अरे ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तीसरी गाड़ी किसकी है? Jim ठीक Chop. है, फिर मैं तुमको कॉल करूंगा थोड़ी देर बाद, फिर 10:42, बताना ठीक है? backup sometime. चलो मिलते हैं। ठीक है बाय, टेक डोंट केयर। वरी, एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन। हाँ ठीक है, थैंक यू। नाइस। बाय। One oh one 76 in one zone. 300 same track. क्या आपको और कुछ खाना पीना के लिए कुछ भी चाहिए? नहीं सर, आई एम गुड, थैंक यू। कोई नहीं। सर 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 आ जाओ। यहाँ पे EMS कार्स निकालते हो। अच्छा ओके ओके ओके। सर कोई इमरजेंसी है सर? हेलो। हाँ मैं थोड़ी आता सी हूँ, आप है। थोड़े रुक हेलो जाओ। सर, कोई इमरजेंसी है सर? थोड़ी सी है, यस। सर बताओ। क्या आप हमको थोड़ा सा अपार्टमेंट तक छोड़ नहीं सकते हैं? वो तो हमारा नहीं थोड़ा कर सकता। एक्सीडेंट हो गया था यार। वो अभी नहीं कर सकता सर, यू हैव टू कॉल अ टैक्सी, आई एम सॉरी। अरे यार सर। Let it be. अरे संभल के, गाड़ी लग जाएगी। आ जाओ मैम। Doctor? Yes, officer. Who is like the senior most doctor available right now? Dr. Lincoln. He's like our Okay. chief, so All right, you okay. can talk to him. You start, I'm assist, sir. There you go. Okay, brother, but why is so shaky up and down, left, right? Don't worry, it won't be anymore. Yes, officer, good evening. How may I help you? Once you are a little free, I would want to have just a small word with you, sir. Yup. Huh? अभी नहीं। There you go. Alright. You can try texting it. Where is he? What the fuck? Hello? How I got over here? There you go. Alright, sir. Thank you. Yes. Heads up. Okay. Hello, sir. डॉक्टर इनको बचा लो प्लीज। Yes, sir. Please bring him inside. Okay. क्या आपका फोन बज रहा है? अच्छा। हेलो। मैं पिल बॉक्स आई हूँ।
हैं? फट गया। नो वन, नहीं कोई भी नहीं है। हाँ। ये इमोजी को आप क्या नाम देना चाहोगे? हैं ये क्या इमोजी है बे? बस 2 मिनट रुकिए, डॉक्टर लिंकी बस वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, देन ही विल बी विद अस, ठीक है? ठीक है, ओके सर। एंड इतना टेंशन मतलब विल फाइंड देम। ये रो मत। वो चॉकलेट और पानी खा लिया, पी लिया? चॉकलेट अभी एक ही है, यस। ये भी खराब होने वाली है, खराब होगी। हैं? डोंट वरी, एक थोड़े फ्रेश चॉकलेट्स खरीद के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? ये किधर से आई इमोजी? आजा अंदर आजा, देखते देख, मे बी डॉक्टर लिंकन मे बी फ्री हो गए होगा, लेट्स सी। वाईफाई वो सब निकल, हाँ कोई दिक्कत नहीं यार विराज, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये स्ट्रेस ना, ये स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। बिल जो बेचते हो वो आपके लिए हो जाता है या आपके पॉकेट में ही आता है? कौन है? अरे चिंटी बेटा कैसे? मैं ठीक हूँ, आप तो कैसी हूँ? चिंटी ये यार ये खरगोश पहन के घूम रहे हो यार तुम? हाँ मैंने कल ही नई शूज खरीदे हैं। अच्छा। अरे यार देखो मेरे तुम्हारी सोच थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, बस तुम्हारे मुंह निकला हुआ है। मेरा क्यूट है। क्या है तुम्हारे वाला? कूत है? कूत है, क्यूट। कूत कूत क्यूट क्यूट। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। And my body weight, it's 69, 67, 68. Okay, and do you have any medical history of having any major disease or injury in the recent 6 months? travel loss in real life? Yes, Any brother, doctor I से? had a lot of injuries. डॉक्टर है कोई? Like in 6 months. Okay. Like I got into a fight and someone like hit me with a bat. Okay, alright then sir. Couple of things you have to keep in mind. First of all, do not start running and jumping around after the mailbox because it's ऑफिसर आप नए ऑफिसर हो क्या? नहीं एक्चुअली मैं ये पूरा डिपार्टमेंट जो पीडी का संभाल रहा हूँ। माय नेम इज जेक विलियम्स। यस सर, आई मीन यस मैम। हाँ बट अभी या लॉस एंटोस सर हैं? यस लॉस एंटोस, ठीक है सही है अच्छी बात है। आपका नाम सर? माय सेल्फ सक्षम सिंह यो। अरे सर इनके गोटे में भी चोट लगी थी, बता रहे थे, बताया नहीं क्या उन्होंने? सक्षम नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? सेम टू यू। क्योंकि मेरे ट्यूशन में एक सक्षम आता था, वो मुझे बहुत मारता था। हैं? मारता था तुम्हें? ऐसा क्यों? शीला आंटी का बेटा था वो। न्यूयॉर्क से हूं। शीला आंटी मेरी टीचर। अच्छा। मेरी ट्यूशन टीचर का बेटे का नाम था सक्षम। तो इसलिए तुम सारे सक्षम से नफरत करते हो? यस, आई हेट सक्षम नेम। कोई ना आप मेरे को शार्की बुला लेना, कोई सी नहीं। हैं? अरे नेम है शार्की? हाँ धोती है बाबू राव की। नहीं हो सकता क्या? नहीं हो तो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है, व्हाटएवर निकनेम यू प्रेफर इन लाइफ। वैसे आपका क्या नाम है? वो मेरा नाम है जेक विलियम्स। हो और बताओ हाउ द डिपार्टमेंट गोइंग? अभी तो पूरा सेटअप हो रहा है, तो लाइक इट विल बी सेटअप एंड फंक्शनिंग वेरी सून। सही है। यप। एक मिनट, डॉक्टर लग रहा चला गया। It's okay, brother. It's okay. You treat this guy. नैंसी तो मुझे खाना पीना भी खिलाती है यार, तुम ही गंदे हो। Listen, Mr. Patient. This doctor he touch in very nice way. He deserve tip, okay? Oh my gosh. अबे वो मेरा खाता चलता है इधर, तुम मत बताओ।
He pulled pen down and everything. He's good. Band down? अच्छा ये सब भी खुद हाँ, तो Yes, मैं थोड़ी yes. करूँगा अभी लेटे हुए हैं? Nancy 150 लेती है Alright, there you go. Alright, so I think you might be feeling much better now if you do the next बिल्कुल नहीं down for the bit. And yes, regarding your weakness चली गई वैसे yeah, your weakness, it might be now much better. But regarding your water and your starvation, your ravenous stomach, we cannot do anything. You'll have to probably eat something, okay? कुछ आपके उधर हेल्दी मिलते हैं क्योंकि मुझे सैंडविच खा खा के पेट खराब हो जाए In our vending machine, we do have cola over there. Diet Coke. कोला इज वेरी हेल्दी थैंक यू ये अपनी वेंडिंग मशीन में चॉकलेट रखते हैं हाँ वेरी न्यूट्रिशनल Hello, Asivar. Hello, how you doing? डॉक्टर good, what's आपकी your वेंडिंग name? सुनो My name is Jake Williams. आपकी मशीन में ई कोला What नाम about की you? ड्रिंक मिलती है Little Uzi. सड़ी हुई थी मैं पी नहीं पाया फेंकनी पड़ी Uzi. $7 वेस्ट हो गए Little मेरे। Uzi. Yes, Mr. MP can probably have can that. say And if Lil you Uzi. want to कैसे go not for Lil any, Uzi तो? option, then we can Lil probably Uzi. Alright, nice to meet you. in the city and Yeah, nice to meet if you. they क्या have कर रहे हो? something else. Then you'll have to figure out a way to make it yourself because that's what I do in my place. Okay? तो इतना बड़े हॉस्पिटल में कैंटीन तो खोलो अबे तुम तो ऑर्डर करके खाते हो डॉक्टर तुम कब से बनाने लगे I usually when I am in an apartment I buy vegetables and I make my stuff on my own. भाजी खरीदने जाते हो Kind of, yeah. धनिया पुदीना फ्री लेते हो Yes, whenever they don't have the change, then they probably give it to me in that way. Oh, that's nice. That's nice. You Doctor, sound so Indian. If you don't mind, can I talk to you for like 2 minutes? Yes, Mr. MP. I'll Hello, have to hello, officer. I'll probably talk to you later, okay? क्या क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? I'm doing some work, sir. तो आप यहाँ हॉस्पिटल के सिक्योरिटी में हो? Not really. तो क्या हो आप? I just have some work with Dr. Lincoln. Please, I'll just continue that right now, unless it's urgent. अर्जेंट है मतलब अपना वो बताओ I mean क्या बोलते हो? अपनी तारीफ आपकी तारीफ सर? Myself, SASP Trooper Jake Williams. अच्छा nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name, by the way? वो गन असली है? ये कैसा सवाल पूछो सर? I mean चलती है? ये कैसा सवाल पूछो सर? सर एसएसपी का फुल फॉर्म क्या है? San Andreas State Police. ओके ओके लेकिन ये तो अच्छा ठीक है Dr. Lincoln, let's go talk. अभी रुक जा अभी ना. Sir, it was nice meeting you. Continue. Almost हक दिया. Yes. आ जाओ, चिंटी आ जाओ. Yes, sir. Where can we talk, sir? आपका yes, क्या I'll फीस? that will come. MP, you can pay me $200, okay? 158. I can pay you. Do one thing. You can Hello, probably Dr. later, okay? Lincoln. Right now I'm- कैसे हो Yes. आप? अच्छा, you are busy. I'm absolutely fine, sir. Just give me, like sometime you can probably come and give me the charges later, okay? Yes, yes. Come. अभी बेड से उठो भाग कैसे रही हो? चिंती. Hello. क्या कर Hello, रहे हो? doctor. क्या Yes, sir, हो, good तुम्हारी evening. तबीयत तो ठीक है? Brother, my brother came to give you cash. Yes, you can. Just okay, you can give me the cash. No, 195, brother. तब भाग के आई थी और आज दर्द हो रही है. डॉक्टर एक सेकंड ना. हाँ, कर $200. So you have to do it really quick because I have a meeting with. Sir. Okay, brother is doing it. Doctor, You give him help. 200 cash, then we leave. Yes, ma'am, please go inside. Don't worry. If it's the $200, I'll take care of your What's his medical name? expenses. No worry about it. You can Oh, pay. okay. Doctor, your okay, name? sir. What's your name? My name is Jake Absolutely Williams. Nice to meet you, Jake William. Officer, how are you? Dr. Nicholas, can you please take care of the general ward? I'll be in a meeting for 5 minutes with the Sir, office. did you get your money? Okay, Alright. okay, let's go, let's go. Sir, you got your money, no? Yep, got it. Okay, thank thanks, doc. You mind if we run because? Yeah, sure. I don't want to Yeah. get end up in another conversation. Yeah. आ जा चिंटी. Now we are safe. Again, I think we should run. It's a really long way. Okay. चिंटी थोड़ा भागना पड़ेगा. You fine with it?
Come on, have a seat. I would have normally taken you to my office, but considering the chairs over there is quite a little bit like less sturdy, so that's why I'm requesting you to have a seat over here. No worries, that's completely fine. Yes, officer. How may I help you this time? So the thing is that the person out here, her name is Shinti Kumari, and Okay. she had gone for a family picnic to Mount Chiliad. Okay. So out there, basically they were playing games and enjoying or whatever. And at one point, like basically, long story short, her parents and all of that went missing. But the thing is, like we are trying to find that out and trying to figure where they are and trying to get them to like reunite. But what shocked me the most was she has walked all the way from Mount Chiliad back to Los Angeles, and she's only 18 years of age. So I do not know if she has faced any medical form of injury or harm. She does like keep saying that her legs hurt. So I just wanted to come and see if a checkup could be done on her to just see if she is physically fine. Because like I don't want any harm coming to her. While we are trying to find her parents, but at least like because while walking also she gets hurt while like her body aches and all of that. So I don't want that pain to just like stay on. And if there are any like medical expenses that are there, I would take up those medical expenses. That is not an issue. So I wouldn't want you to charge her for it. I would just like you can let me know about it and I can take care of that. Absolutely, I will surely cooperate with that, and we will see what we can do about this situation. But first of all, I need to talk to the patient. So, Miss Chinti, can you come and sit closer to us? Or you can just talk a little louder, that's it. Okay, that's cool. So, Miss Chinti, this is Dr. Lincoln Clay. I think I've met you before, right? Or have I not? Yes, yes. Alright, so Miss Chinti, how's everything going? And how's everything in your family and friends? Sir, yes, sir. Alright, and nowadays what are you up to? मुझे इंग्लिश नहीं आती है Officer, can you या तो वो पूछे कि आजकल तुम कर क्या रही हो लाइक आजकल कुछ नहीं कर रही मैं वगैरह रहते हैं उनके साथ क्या क्या फिर से बताइए भैया दीदी लोग हैं ना शहर में उनके साथ घूमती हूँ मैं कपल ऑफ लाइक मतलब क्या ये तुम्हारे लाइक असली भाई बहन है कि लाइक यू दे आर एज क्लोज एज अच्छा ना यहीं पे बंदे हैं शहर में she has some people who she considers like her brothers and sisters who take care of her and all she just hangs with them. Okay. Alright, so Miss Chinti, can you tell me that in your whole body, where exactly you're feeling the pain, if you're having any pain though? डॉक्टर पूछ रहे हैं कि अगर कुछ पेन वेन हो तो लाइक किधर हो रहा है एग्जैक्टली ज्यादा पेन तो नहीं हो रही है पाँव में थोड़ी सी पेन हो रही है बस Okay, in which leg, left or right? Right, and where exactly, below the knee or above the knee? Below the knee. Alright, and I'm gonna ask you just one simple question, that on the scale of 1 to 10, how much pain right now you're feeling? अंकल समझाओ अगर जो आपका पेन फील कर रहे हो राइट अगर समझो कि 1 सबसे कम है और 10 सबसे ज़्यादा है तो आप किधर रखते हैं वो पेन का लेवल कि कम है ज़्यादा है वो 1 to 10 के नंबर में से कितने देते हैं 4.5 Okay, alright, somewhere around between 4 to 5. Okay, that's alarming. So probably Miss Chinti, you don't have to worry about anything. Now we have come here in the hospital, so we will take care of you, and I'll personally interfere in this, and I'll make sure that you get the proper treatment, and I'll make it happen by tomorrow that you'll be totally fine. Okay, but for that you have to stay here for a while. So you okay with that? वो बोल रहे हैं कि वो आपका ट्रीटमेंट कर लेंगे ताकि आप कम्प्लीटली लाइक ठीक हो जाओ बट उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है तो आपको लाइक यहाँ पे जो माउंट होना है उधर यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा तो क्या आपके लिए वो ठीक है Yes sir. Okay, and do you have any guardian, any of your relatives, any of your friends who can be act as a guardian over here, who can come and do the paperwork for us? Yes sir, I can call them. Who exactly? Cinderella Didi. Okay, so officer, can I you please will contact you. I will contact. आप टेंशन मत आप अपन का पूरा नाम जानते हो? वो दीदी बाहर ही होगी अभी हॉस्पिटल में आएगी बोल रही थी सिंड्रेला
OBERAOI. Okay, Cinderella Oberoi. Okay. बाहर ही होगी बिल बॉक्स के बाद उनको फोन करी, उन्होंने मुझे फोन करी थी तो मैंने बोला कि आ जाओ। ठीक है, ओके। क्या आप मुझे इनका कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकते हो? I'll just try to contact her and like inform her about this. मैं उनको बता दूंगा क्या सीन है। कैसे कॉन्टैक्ट? पहले मुझे लाइक कॉन्टैक्ट भेज लो आपका, फिर मैसेज पे उनका नंबर भेज दो या शेयर कॉन्टैक्ट कर लो। हाँ, तो ये नंबर पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भेज दो। आरपी हो रही है ये अभी भी 100% कैसे है? हाँ, आ गया आपका मैसेज। मैं उनको कॉल करके बताता हूँ। ये ठीक है। यस। ओह शिट। अरे डॉक्टर। Don't worry. That's an embarrassing situation. I can't look myself in the mirror now. Throw me out of this window. Throw me out of this window. I don't want to face my juniors now. Wait, where's the exit route from? I forgot. Okay, you're right. Just go straight. Just go straight. चिंटी आ जाओ। चिंटी आप एक बार सिंड्रेला को फोन करके बोल सकते हो रिसेप्शन पे आए प्लीज? ठीक है। थैंक यू। हाँ, सिंड्रेला दीदी सॉरी, वो पुलिस से बात करी थी। What the hell? क्योंकि आप मेरे गार्डियन के रूप में आओगी ना, इसीलिए। रुको, फिर मैं लूसीफर भैया को फोन करती हूँ। ठीक है। बताती हूँ आपको। वाओ, रुको। ऑफिसर What's up? वो बाहर आपकी जो कार है ना, Yeah, I just saw that. I'm एक gonna बहुत first save this नो doctor. हाँ नो आई एम सेइंग कि बहुत सारे लोग आए एक गाड़ी में, 6 लोग थे। हाँ। और वो बहुत तेज से आके पूरी कार को उड़ा के चले गए और तुम्हारे कार के टायर में कुछ फंस गया था, वो निकाल रहा था मैं। तुम निकाल रहे थे? चलो डिम्पल। वैसे आप देख लो कार की हालत देख लो। अरे क्या हुआ? रहने दो। Can you save अरे Dr. ऑफिसर, Lincoln? He was taking care of someone and didn't take care of himself. ऑफिसर Can you leave this situation? ऑफिसर, कुछ लोग आपकी गाड़ी डैमेज कर रहे हैं बाहर। कुछ लोग गाड़ी हाँ सर। उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। अरे ऑफिसर, डॉक्टर बोल रहे हैं कि डॉक्टर सिंगल है। एक मिनट। डॉक्टर ए ऑफिसर ए सर, यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है। उनकी कार को कुछ मत होने देना। कॉप की कार को कुछ मत होने देना। कहाँ गए वो बंदे? अच्छा भाग गए। अच्छा सर, ये देखो क्या हाल करके गए कार की। गाड़ी का ख्याल रखा है बहुत ज्यादा। ख्याल क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो उसको रहा है? ख्याल नहीं बोलता अगर अंदर से 10 बार उसका लॉक छीनने की कोशिश करोगे, जो मैंने देखा नहीं है। तो जस्ट से आई एम गिविंग यू ऑल वन एंड लास्ट वार्निंग, नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस, आई विल बी बिहाइंड बार्स। जस्ट सेइंग। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने देखा है एंड देयर आर कैमरास आउट हियर आउट देयर एंड देयर दैट हैव फुटेज फॉर इट आल्सो। सो इफ आई गेट द एविडेंसेस यू ऑल वुड गो डायरेक्टली बिहाइंड बार्स। सर हम नहीं हूँ सर। नहीं, जो भी यहाँ पे थे, जिसने भी किया, you all will all be behind bars, just saying, so do not take this lightly. We are not taking this lightly at all. हाँ, ऐसे It's logged, sir. Yeah, right now we have all the good officers before the bad officers come and join us, just like, you know. माफ करो ऑफिसर। गॉर्डन सर सुनो, अभी गुड ऑफिसर क्या नाम है इसका? आवाज नहीं आ रही। में बुरे आएंगे। बाद में बुरे ऑफिसर्स आएंगे ना, ये अच्छा है। आवाज नहीं आ रहा, गूंगा होगा ना बेचारा। हाँ, शायद से वो ऑफिसर्स सीधा like they would process you for the charges and all of that directly, right? अरे ऐसे ही आया था सर, ऐसे ही आया था, ऐसे ही ट्रक आया था, ऐसे ही आके ठोक के गया, ऐसे ही आया था सुपर फास्ट। Okay, I'm just in the middle of something, I'll just come. We don't have any problem. We can जॉर्डन सर आवाज आवाज।
चिंटी किधर गई अभी यार? इशू है, ठीक है? Supervising this working together, so there won't be any of the problems. Okay? And before that, you'll have to go through some tests and will probably examine your body. For that, Dr. Dina is here, so she will probably take care of you. Okay, so you don't have to worry about anything, and you don't have to get uncomfortable. Okay? Okay, sir. Alright. Officer, please give me a number. Can you give me a number? Yeah, please? sure. Yes, yes, sir. Good evening. Good evening. And who is the ऑफिसर guardian? हमको भी नंबर चाहिए। Yes, दे दूंगा। 80. Hi, officer. 80 पे। Hello. ऑलराइट गॉट इट सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स सर, थोड़ा भागा दौड़ी और नेक पे ज्यादा जोर नहीं पड़ने देना सर। हां, नेक पे ज्यादा। गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं डेलिकेट सा एरिया है ना, फिर से करा। Yeah, sent you I think. ठीक है। वैसे कैसे Send me yours as well as that's fine. मैंने तो कोई बात नहीं। यही सुबह यार। Alright. So I'll give you a call. वैसे who चिंटी तुम्हारा कौन है तुम्हारे साथ अभी? नाम क्या है नाम आपका? मेरी तो दीदी को बोली थी, पर दीदी बोलती वो शहर से बाहर चली गई है, तो फिर मैंने दूसरे भैया को फोन किया है, वो आ रहे हैं। अच्छा वो आ रहे हैं राइट? थैंक यू। चलो कभी आगे। वो अभी किधर है? तो बात करेंगे। अभी तो अभी वो भी शहर के बाहर थे, पर वो आ रहे हैं। चलो भाई। रास्ते में है। रास्ते में है। ऑलराइट। एंड कुछ आइडिया है कि वो लाइक कब तक आएंगे यहाँ पे? बोल रहे थे 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है फिर मैं तब तक यहाँ पे रुकता जब तक वो आते नहीं है। मतलब मैं बताता हूँ एक चीज बताता हूँ लेवल मतलब मैं उनका नंबर आपको भेज दी। क्या एक ऑफिसर थे मोटे से। हाँ थोड़ा उनका फिजिक जो था मोटे बंदे जैसा था एंड लाइक वन ऑफ पर्सन वाज चिलिंग अराउंड द अपार्टमेंट्स। ही जस्ट केम विद हिज मैट ब्लैक कार। पूरी कार मैट ब्लैक थी, बस ऊपर एलएसपीडी का लिवरी था एंड ही जस्ट केम रैन ओवर ऑन हिम एंड जस्ट like what, went really? out of hang up the call, sir. Okay, I'll check on that. Just give me 1 second. Where is Jake, sir? I know his name. Wait. Inside I know his the Manzana Medical Service. Barus Bain. 11 direct to Officer Barus Bain. Send it. क्या कोई incident हुआ where somebody was run over by mistake near apartments? I have no idea about it. Okay, one guy was just like talking to me about it and mentioning your name, so I just thought I'd confirm. 10-4, copy that. My name? Did I run over someone? 10-4, sir. That's what he claims. I'm not sure. Who was he? Sir, आपका नाम sir? Asking. Let me come to the apartment and handle this matter. क्या sir? A guy was with the down body at the mountain and he Abhishek. was claiming that you ran over him. अच्छा, एक आप अपार्टमेंट जा सकते हो, वो ऑफिसर आ रहे हैं आपसे बात करने, if you don't mind. Sure, no problem. And I really apologize from my end. Just like no sir, आप apologize मत मानो sir. ये चीज He was like डाक सर दिखाओगे healthy आप। officer. अपना अभी है right? अभी AVI. The guy in question out here is Mr. Ravi, AVI. It's okay, I'll talk with him. All right. No problem. No worries. Everything is sure. ट्रीटमेंट करते वहीं पे आ जाओ। वो बाहर जा रहा है, दौड़ते बाहर जा रहा है। आ गए लूसीफर भैया आ गए। आ गए क्या? ठीक है फिर। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, आपका क्यू टीम क्या है जान सकते? आई वुड सेव इट एज क्यूटी। अरे Lina. Hello. This is Officer Jake. I think you're already outside only where I'm from, so you can come inside only. I think you're Lucifer, right? I'm Lucifer Morningstar. Yeah, can you come inside the medical service room? Any questions? You can ask straight away to her, okay, without getting any hesitation. ओके सर। Alright. आ जाओ। हेलो मैडम। हेलो, आपका नाम क्या बोला था? Look, Jay, second, sir. Very nice. Mr. Lucifer, right? Yes sir. Yeah, this is SSP Trooper Jake Williams. Can you come here 1 second, please? Yes, okay. सर अब आपसे बात कर सकते So the thing is, Chinty has told us about like basically her parents have gone missing, and after that she walked towards Los Santos from Mount Chiliad. So I spoke to Dr. Lincoln for some medical treatment and just to like make sure she's fine and all that. She tried to call a person named Cinderella Oberoi to come and look at her, but she was busy at this moment. So we asked her who else would come, and she said your name. So I just thought of informing you as to why we are at Mount Zona. Just a general medical checkup because she says her legs are paining really like a lot. And सर एक सेकंड रुकना, मैं रेडियो बंद कर देता हूँ। हाँ कोई नहीं। अब मैं जरा रेडियो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मिलता हूँ।
तो बेसिकली नथिंग, कुछ सीरियस नहीं है, बस एक मेडिकल चेकअप है एंड ये मेडिकल चेकअप में लाइक जो भी मेडिकेशन देंगे लाइक डॉक्टर्स वो सब है और कुछ नहीं है। एंड मैं बस बोलूँगा कि अगर कुछ भी मेडिकल एक्सपेंसेस हो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दैट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, वो दैट आई हैव फिगर फ्रॉम माय एंड। तो इसलिए हाँ तो आपको फिर बोला गया मेरे को कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं फिर। हाँ, तो एक बार बस डॉक्टर लिंकन से बात कर लेना बिकॉज ठीक है, ईएमएस के थ्रू इज हैंडलिंग दिस थिंग। हाँ मैं उनसे बात कर लेता हूँ इस चीज़ के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच। आप एक बार लाइक आके बात ही कर लो, लाइक मेरे सामने आके। हाँ आ जाइए सर। हाँ पर ऑफिसर ये नहीं यहाँ पे नहीं, आप थोड़ा बाहर होंगे वो लोग। सेंडेड अभी से ही लोग गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वही देख रहा हूँ यार। अरे सर लोगों में बहुत खराब आती है बाहर। वो कोई तो वॉरियर करके गाड़ी बैठ गया, रैश ड्राइविंग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पीडी के गाड़ी में बैठे, खुली पड़ी थी वो वाइट रेंजर वाली। तो आपकी गाड़ी में बैठ गए? हाँ। कॉफ़ी नहीं है अभी, लगता है आपने कुछ कहना स्टार्ट नहीं करा है। करें। Yes, Officer Jake Williams. Can I just introduce you to Mr. Morningstar, who is the guardian of Chinty, like just so that then I can just go continue my patrolling. You do one thing. I'm right now. You can, if you just come straight outside the medical center, I'll be standing outside. You can bring him over here and I'll talk to him. Main gate? Okay, yeah, cool. Yep. Not from here. Go from the back. Yep. Now walk straight. Walk straight. Walk straight. Walk straight. Okay. There's like a door over here. I see you. Yeah. Yes, officer. Yes, doctor. This is Mr. Morningstar, who is the guardian of Chinty. So I just thought that you all could just meet once so that everything is fine. Yes, Till Mr. then I'll Morningstar. go and try to find like the Doctor. parents. Yeah. Mr. Morning. Yes, sir. Can you hear me? डॉक्टर लिंगन आपका आवाज चला गया है। डॉक्टर आपका आवाज। Yes, it's an honor to meet you. And so, can you do me a favor and just wait at the reception for? सर आपका गला। Can you guys hear me? Yeah, it's better now. It's better now. Give me 1 second. All right, sir. Yep. Can you hear me now, sir? Yeah. All right. So I was saying that if you can wait at the reception for 2 minutes, I quickly No talk worries, to the no patient worries. over here, and then I'll have a talk with you. And don't worry, Miss Chinty is in our care, and we will be taking good care of her. And she is in our strict supervision, so nothing, no major harm will come to her. Okay? Okay. कोई नहीं, मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। It's okay. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. so much. Thank you, Morningstar, officer. for coming. Thank Have you a so lovely much. day. You all Alright, too. it's Have a okay. lovely day, guys. Thank you. Yep. Thank you, officer. Thank you so much for coming as well on such short notice. चलो गाइस, ये वाली आरपी अभी भाई द थिंग इज ना, हाउ डू आई प्रोग्रेस? अभी ढूंढ के लाऊं कैसे? माइकल द पापा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अंदर बारूद मजे ले रहा था।
ऐसे लोग भाई आके बस बैठ जाते, छी भाई। मैं अभी एक बहुत वियर्ड सिचुएशन में फंसा हूँ, कुछ एडवाइस दोगे? एक लड़की है चिंटी कुमारी, अच्छा वो गई थी पिकनिक पे माउंट शेयर अपने पेरेंट्स के साथ। उसके पेरेंट को तो नहीं गए? यस। तो अभी and उसको कुछ लाइक उसने बोला कि उसका डैड का शक्ल रेक्स डेविड जैसा मिलता है, मॉम का शक्ल जॉर्डन सैंडविच जैसा मिलता है। यार ये तो बहुत मतलब रेक्स और जॉर्डन की शादी करा देते हैं। आइडिया बुरा नहीं है, एक बेटी भी है। आइडिया तो बुरा नहीं है। फिर जॉर्डन के कपड़े बदलने पड़ेंगे फिर। उसने बोला अगर जॉर्डन के बाल थोड़े लंबे हो और वो क्लीन शेवन हो, आइडेंटिकल मम्मी लगेगी। हाँ उसका फेस भी थोड़ा गोल गोल है तो हो जाएगा। अभी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, ताकि एटलीस्ट वो उससे बोला कि वो माउंट शेयर से चल के आई वापस। हैं एटलीस्ट बंद तो करके यहाँ पे बैठ। टिडिंग टिडिंग आवाज आ रहा है। अरे यार टिडिंग टिडिंग। मामू देख ये क्या कर रहे लोग ने। हाँ बांध के चला गए मेरे को। ये व्हाट? बांध के चले गए मेरे को, देख कोर्ट आउट साइड से दौड़ रहे थे। हथकड़ी बटकड़ी बांधे लाए, देखना पुलिस को। ये किसने किया? अरे कौन कफ कर दिया भाई? अरे कोई हरामी लोग सुअर थे तो शक्ल देखो सिविलियन पे कहाँ से आ गए फिर ये क्या है पता नहीं मेरे को, क्या पता रे कहाँ से आए। मेरे को बांध के गया वो हाथ में। ये तो पुलिस रखती है ना ये तो। हाँ बता मेरे को कौन। वाह पुलिस वाले सप्लाई कर रहे हैं क्या? I like how you jump to conclusions. अगर ऐसे ही conclusion पे jump करना है, there are multiple lawyers available. You can contact them and file a case. क्योंकि false allegations हमें पसंद नहीं है सर। अरे मैं से पूछ रहा हूँ। नहीं वो ये false allegations हमें पसंद नहीं है। अरे यही पूछ रहा हूँ, इतने सिविलियंस पे ये कहाँ से आ गया? सिविलियंस घुमा लगा रहे बताओ इनको। अरे मामू सुनना, वो लोग आए एकदम इधर, समझ रहे वो एक मैडम भी थी, मैंने गलती से आंटी बोला उनको तो उसने आके मेरे को ईंच कप कर दिया इधर और मेरे को लेके गया। क्या उनका कुछ लाइक डिस्क्रिप्शन बता सकते हो? हाँ बता सकता हूँ। एक की शक्ल थी वो चिकना बिल्कुल, एक बाल नहीं उसके मतलब थोबड़े पे। ओके बिल्कुल ऐसा सुअर होता ना, सुअर बिना बाल वाला सुअर देखा आपने? हाँ बिना बाल, अंग्रेजों के शहर में होता था बिना बाल वाला। नहीं देखा है सर। अच्छा अच्छा इंसान देखा बिना बाल का? पिंक 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 वाला पिग। हाँ पिंक वाला पिग। मास्क पहना होगा आई गेस। हाँ नहीं पिग जैसा शक्ल था, मास्क नहीं पहना वो। है अरे मतलब उसके बाल मतलब पैदाइशी सुअर था वो, ये कह रहा है। कांधे पे बाल थे उसके खोपड़े पे बाल नहीं थे। नीली जैकेट पहना वो, 6 सीटर गाड़ी, उसमें 4 लोग थे, 2 मैडम 2 लड़के। लड़की के बाल कैसे थे? लड़की के बाल थे वाइट और एक के गोल्डन, लाइट गोल्डन। गाड़ी का कलर याद है? हाँ याद है, रेड कलर की 6x6। अच्छा हाँ मेरे को ईंच कब कर दिया और मेरे को रोड पे ले जाके छोड़ दिया बीच में और मारे भी मेरे को। कुछ नहीं होने वाला, मेरा बैग चोरी करके लेके सामने से तभी ना नहीं बोलते हैं कि अगली बार ऐसा करो तो ऐसा मारेंगे मेरे को, ऐसा बोला ऑफिसर। मिलता है किसी का डिस्क्रिप्शन तो ढूंढते हैं उन्हें। हाँ ढूंढो मिलता है तो लेते हैं उनको अंदर। ट्रक है, ट्रक मॉन्स्टर ट्रक टाइप का होता है। 6x6 रेड कलर की बोल रहे हो? हाँ रेड कलर की। अरे आप भी तो दिखी थी। अब भी तो दिखी थी। कहाँ दिखी थी? ये यहाँ से क्रॉस कर रही थी, अपना गराज है ना, ये साइड वाला था उसका नाम, रेड गराज, उधर से क्रॉस कर रही थी गाड़ी। देखना पड़ेगा। अरे हाँ तो ऑफिसर फिर कुछ करो यार। हाँ करते हैं ना, करते हैं। दोबारा पकड़ने आएगा वो मेरे को। क्या उन्होंने आपको कुछ और तो नहीं किया? लाइक ड्यूटी यानी मेडिकल? अरे अभी तो कुछ नहीं करा उन्होंने। नहीं 1-2 पंच मारे थे, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। उन्हें पंच मारा हूं मेडिक। हाँ मुंह पे पंच मारे मेरे। एक बार आप डॉक्टर से जाके मिल लो फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट ताकि यू फील फाइन। हाँ पंच मारा था लेकिन लड़की ने मारा था, बहुत छोटे छोटे हाथ थे, नाजुक। हैं? हाँ और क्या। तो लगा नहीं तुम्हें? अरे थोड़ा सा लगा, बिल्कुल ऐसा चींटी काटती ना वैसा ही, ज्यादा कुछ नहीं। पंच भी काटती है? हाँ कौन काटती? पंच काटती तो वो है, काट गई आई थिंक सो। अरे काट के नहीं गई है, मतलब वो चाटा मारा उसने मुंह पे, पंच मारा, लेकिन उसके नाजुक हाथों से क्या ही लगेगा बताओ। ज्यादा लगा तो नहीं मेरे को। रहने दो फिर, क्या ही एफआईआर करनी। इसमें भी मोहब्बत वही भाई उसके हाथों से लगा नहीं, लेकिन उसने मारा कैसे ऑफिसर? ये दर्द हुआ, दर्द। पर वो हाँ तो दर्द हुआ ना,
दर्द थोड़ा बहुत हुआ। देखो दर्द से ज्यादा दिल में दर्द हुआ क्योंकि बेइज्जती हुई अपनी ऑफिसर। अब तो आदत सी है। आदत नहीं है इसके ऑफिसर को आदत है। वो ऑफिसर अभी रिपोर्ट देखो मेरी और वो लड़की को पकड़ो। Yes, yes, we'll try to find those people and we'll interrogate further. Don't worry about it. Yep. I apologize for what happened to you, but we'll try to get to the bottom of it. ठीक है सर, ठीक है। ऐसा मतलब गुंडे कैसे फिर रहे अभी से शहर में सर? अभी से मतलब? ये मतलब हथकड़ी बचकड़ी लगा रहे बताओ। Yeah, we'll figure something out. Don't worry. सुबह मेरे दोस्त को मारा किसी ने बाइट से। मारा? हाँ बेट से मारा मेरे दोस्त। अब पीडी आ जाते रिपोर्ट करने यार। क्या? अरे सर, अरे पहले इलाज कराना बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका इलाज कराया देखो। इसका अभी भी घाव है पेट पे। इलाज करने के बाद हम से अगर आप पीडी को रिपोर्ट करते वीड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट, राइट? सर मैंने सुबह तो बैग की भी रिपोर्ट लिखी थी कि बैग चोरी हो गया मुंह के सामने से आए सर और चले गए और बस ना वो बंदा भी लेना बैग रिपोर्ट मैंने सुबह का रिपोर्ट नहीं मैंने सुबह 911 किया था आए कह रहे मैं देख रहा हूँ फिर चले गए वापस ही नहीं आए। हाँ तो एक बार पीडी आके एक एफआईआर सेंडिट सर ये क्या चल रहा है येलो पेजेस पे कोई हैंड का फैन कब बेच रहा है ये देख लो ये देख लो। हाँ देखो ऑफिसर क्या चल रहा है ये। अरे सेलिंग हेड्स को सर आपके मुंह के नीचे हो रहा है कुछ करो For some other purpose. ठीक है मैम अरे जी की कतई किंकी हो रही है रीना जी कतई किंकी हो रही है। अरे टेंशन नहीं कोई ना मैम समझ रहे नहीं कोई बात नहीं रीना जी कोई ना होता अरे एक सेकंड देखो ऑफिसर वो पंच वाली बात नहीं है बात ये है कि कोई भी ऐसे कप करके लेके नहीं जा सकता कोई कप करके लेके गया वो भी पिल बॉक्स के सामने से और लोगों के सामने से समझ रहे हो ये लोगों की सिटीजंस की लुकिंग इनटू इट प्रॉपर्ली। अच्छा सिटीजंस की सेफ्टी के ऊपर बात आती है। ठीक है हाँ वैसे कोई कप करके लेके गया वो सीन है तो करा क्या नहीं उन्होंने क्या करा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मेरे को एक आध पंच पड़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है बट ये दिक्कत है कि यहाँ से पिल बॉक्स के सामने से बंदा उठाए एक। डोंट वरी हम लोग देखते हैं विल ट्राई टू फाइंड देम। ठीक है ओके सर थैंक यू सो मच। ओके चलो भाई निकलो। वो चिंटी का क्या हुआ? ओ हाँ मुझे वो लिंकन से पूछना था। आओ देखो उसका गार्डियन मैंने बुला लिया यहाँ पे तो एक लूसिफर मॉर्निंग स्टार वाला बंदा है ही इज हर गार्डियन एंड मैंने बस लिंकन को बोल दिया कि जो भी ट्रीटमेंट है उसका लाइक पेमेंट्स आई विल टेक केयर ऑफ ताकि लाइक बिकॉज आई डोंट नो वेयर आवर पेरेंट्स आर। मैंने बोला ठीक है कर लूँगा अभी के लिए अगर लिंकन मुझे लूट ले तो कुछ नहीं कर सकता। बारिश भाई डाउन हो गए। चलो 376 to 14 यार सन फॉर सेम ट्रैफिक एक तो भारी शरीर लेके घूमते हैं अरे रे लोग भी कैसे मदद करेंगे। शिट किधर हैं? बाजू में इधर ही है। अच्छा मतलब चल के आ रहे होंगे शायद से डिहाइड्रेट हो गए। अरे रे इसको सर को ले लो मेरा हाँ दे दो आँख ही नहीं आ रहा है। बारिश भाई कैसा आँख नहीं है? अरे इसकी आँख ही नहीं आ रही इसके आँख खराब हो गई। एक बार फोन निकाल के अंदर रख। बारिश भाई ठीक हो? 30 सेकंड फिक्सेस भी है भाई टेक्निकल सपोर्ट जेक विलियम्स। सर आपको हुआ क्या सर? के लिए एक दबाएं फॉर इंग्लिश प्रेस 2 कॉल सेंटर। अबे हैंड स्ट्रीट लाइट गिर गई गाड़ी पे ऐसा हुआ कि धमाका हो गया गाड़ी पे। अरे रे आप स्ट्रीट लाइट पे तो नहीं गिर गए? हैं? मेरे को लग रहा है बारिश भाई स्ट्रीट लाइट पे गिर गए। इसके हाथ में गन क्यों है यार? जलता है मजनू साला। अबे 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 ये चीटिंग है। ओह नहीं रुको 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 क्या हो गया? छोड़ो इसको रुको छोड़ो उसको। अरे वापस आओ। हाँ छोड़ो छोड़ो उसको पहले। ये पुराने डिपार्टमेंट वाले ना इनको लगता है नए डिपार्टमेंट में कुछ भी कर लेंगे यार हम सह लेंगे। किधर गया मेरा ऑफिसर? किधर गया? इधर
ठीक होना है पहले ठीक करो, ऐसे जलाते नहीं लोगों को। ये मोटे को छोड़ो, मोटे को छोड़ो साले, एचआरओ डिपार्टमेंट से निकाल दूंगा। गौर से देखो, तुमको डिपार्टमेंट दिखेगा भी नहीं कुछ टाइम में। ये ब्लैकमेल कर रहा है। जरा थैंक यू। इनको बदले जाओ यार। नहीं यार, आई कांट हेल्प इट, वो इवेंचुअली वो एक ऑफिसर ही है, बचाना पड़ेगा ऑफिसर ड्यूटी हमारा। सर एक ऑफिसर लैंप पोस्ट से ठिल गया, एक ऑफिसर जल के ठिल गया। ऑफिसर्स आप लोगों का एप्लीकेशन कब खुलने वाला है? सर वी विल लेट यू नो, थोड़ा अपने हाँ, ऑफिसर्स को तुम्हारा ट्रीट भोसड़ा होने दो बंद होगा। हैं। बी रिस्पेक्टफुल, दे आर सिविलियंस, बी रिस्पेक्टफुल ऑफिसर। गन गन बड़ी गन है हाथ में उनके, डर लग रहा है। Explicit content. ऐसे नहीं बोलते कुछ किसी को भी यार, बी डिस्क्लेमर तो देना था। हुआ क्या भाई साहब? लैंपो से कौन ठिला है पहले ये बताओ ना। जो मेरे पास वो लैंपो से ठिला, जो ये मोटा, जो दूसरा है वो पता नहीं कैसे, पर कैसे ना कैसे आपके पिलबॉक्स में जल के मर गया। रिस्पेक्टफुल बोल रहे थे। केमिकल रिएक्शन। तीसरे आंख से पहले को देखना और लेट जाना। क्यों आग पहले की तो आग खराब है क्या उसके देखने के लिए? हाँ पहले की 2 आंख से देखेगा तो कुछ नहीं होगा। नोट्स बना रहे हैं, कोई तो इंपोस्टर हो सकता है, अपने ऑफिसर्स को जला रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को ऑन ड्यूटी ड्रंक हो के आते हैं, दारू की मुंह से दारू की बास आती है। चुप। लेट की बात कर रहा है। ये जरा सा चीटिंग नहीं है? हाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर गलत छेद पे डाल दिया क्या? है? ऐसी आवाजें निकाल रहा है वो। पता नहीं भाई, पता नहीं। Is everything all right here? है? Are you okay, officer? I'll leave you all to it. क्या चल रहा है? हेलो। पता नहीं यहाँ पे like they just put the curtains and all of that, so I don't know यार, थोड़ा I'm just staying away. दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल में लग रहे हैं सर आप तो। क्यों तुम कंधा दोगे? दे देंगे सर आप बोलते तो। मैं भी थोड़ा मुश्किल में, आप मेरे को बात दे तुम भी लेट जाना, बिस्तर बगल वाला बिस्तर खाली है। थोड़ा सा तो रोना लेट। एकदम बढ़िया। आपके कपड़े यहाँ रखे। तुमने मेरे कपड़े उतार दिए। अबे पहले उसको बर्न वुंड से ना तो वो साफ करने के लिए। बर्न वुंड से? आपका 200 ऑफिसर जिंदा हो ना तो? सर वो देख लेना। हाँ ऑफ कोर्स जिंदा ही है। आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आप ये बिस्तर पे ले सर जाओ। बहुत लोग जलते हैं हमसे। मैं रेगुलर पेशेंट। और बहुत लोग जलाते हैं तुम्हें। क्या चल रहा है? अरे कुछ लोग जलते हैं ना, नजर लग गई मुझे। क्या हुआ आपको? लैंपोस्ट गिर गया। सर आपका पैर अगर इंजर्ड है, आई वुड रिक्वेस्ट आप बिस्तर पे जस्ट लेट जाइए, ऑफिसर अभी डॉक्टर विल बी विद यू, आपका एक सेफ्टी के लिए। डॉक्टर, लैंपोस्ट इन पे गिर गया था। सॉरी, ये लैंपोस्ट पे गिर गए थे। अच्छा डिसाइड कर लो पहले। सिविलियंस बाजू में थोड़ा प्रोफेशनल तो रहो थोड़ा सा। हाँ सिविलियंस बाजू में। कमिंग बैक टू प्रोफेशनल। हाँ प्रोफेशनल सर, एक्चुअली सर इफ यू डोंट माइंड डॉक्टर, द थिंग इज दैट आई थिंक अभी स्टेट हमसे पैसे मांगने वाले हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो पिक अप द रिमेनिंग्स ऑफ दैट लैंप पोस्ट। बुरा लग रहा है उसके लिए, सो वी विल जस्ट लाइक हैव टू लाइक जस्ट सी इफ वी कैन फिक्स इट अप। नहीं तो स्टेट हमसे हां, नहीं तो स्टेट हमसे बहुत पैसा देगा। चलो हम निकलते हैं। इसको साथ में लेके जाना पड़ेगा ना। अरे इसको छोड़ दो ना, क्या करें। बूढ़ा हो रहा है, थोड़े दिन में निकल जाए। क्या देख रहे हो विनोद? डॉक्टर है नूडल्स है? क्या बोल रहे हैं? बच्चे बड़े हो गए आजकल। टेरियाकी सर, जापानीज डिश होती सर एक टेरियाकी। हाँ तेरी माँ की राइस। टेरियाकी। ऐसे लोग भाई यार। अरे भाई जी सर आप जाके बिस्तर पे ले जाइए सर। हमने सोचा 2-4 महीना कॉलेज गया होगा तो बुद्धि लेके आया होगा सारा, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट करके आया है।
अरे कैसा मोटा लग रहा है धीरे सर कैसे उठेगा, भारी उठेगा। एकदम बढ़िया सर, एकदम कोई बढ़िया। डिजीनेस, कोई ब्लड विजन, कुछ सामने एक चूतिया नजर आ रहा है। हाँ वो हम कुछ नहीं कर सर सकते डिजीनेस भी है, ब्लड विजन भी है अच्छा सर, बाय द वे, बट इट्स जस्ट एज। बाय द वे दोनों ऑफिसर का सर। मिला के 400 हो गया सर, अब अपने हिसाब से दे दीजिए। मैं दे दूंगा सर, नो वरीज। झुक जाओ। अरे भाई पैसा बोला है भाई। अरे इसको डॉक्टर क्या हुआ है सर? सर जे मोहब्बत मैं दे कुछ देता तो हूँ। हुआ है डॉक्टर। ये लीजिए सर, दे दिया, नो वरीज। आप भी दे दो सर, आप भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम डबल हैं? अभी भी यार ऐड डबल करना है? पेनिट्रेशन। अभी हार्म हुआ है हमें, हार्मफुल पीपल अराउंड मी। भाई मैं जल्दी निकलूं भाई यहाँ से, भाई मैं मर जाऊंगा, मेरी आंखें बहुत ब्राइट है ना? अरे दौड़ कैसे रहा है, अभी तो इलाज हुआ है। कोई गिनती कर रहा है क्या? हाँ गिनती कर रहे हैं। साला जूम क्लासेस भी चलती हैं? रुको। हाँ रुको। हैं तुम भी ऐसा कर सकते हो? अभी मैंने बंदे को पुल ओवर किया, बोलता सर हाथ ऊपर करने के लिए मैंने ये किया। बारह। मुझे गाली पड़ने वाली है। भागो। उनकी गाड़ी किधर थी? यहाँ पे थी ना? हैं पीछे हटो, क्या हो रहा है अभी? नहीं है, डेपो करनी पड़ेगी, रुको। क्या डेपो करनी पड़ेगी? आगे मतलब क्या? गाड़ी कहाँ गई, मेरे को आइडिया ही नहीं कहाँ हाँ गई। चलेगा। maybe Sandra just put it back into the garage. हाँ वही। ओ अब मैं समझा, नेवर माइंड। ची भाई यार, मतलब हम बोलेंगे गायब हो गए, ऐसे बोल दो। तुमसे उसको देखो ना। छोटू ये देख। क्या दिखा रहा है? गाड़ी से बैठे बैठे कैसे डिपो होता है, देख। मैं नहीं जानता इसको। अबे मैं चाह रहा हूँ। अबे मेरे लिए वो फोन बुक भी गया। अरे मेरे को भी दो यार, मतलब मैं भी करना चाहता हूँ। बड़ा कर लो पहले। सर आर यू मैजिशियन? बड़ा मेरे है। पे लाइन मत मार, किसी और पे जाके लाइन मार। हैं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पर लाइन मार रहा हूँ सर? नहीं तो जाके कहीं और लाइन मारो ना। आर यू मैजिशियन बिकॉज यू जस्ट स्टोल माय हार्ट अवे करके सब जाके किसी और को मार के आओ भाई। नहीं सर, मुझे बस आई वांटेड टू लर्न मैजिक और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है आई हैव अ थिंग फॉर यू सर? नो वही तो यार, मैजिक तो होना चाहिए सबके पास। सर हमें भी तो। मैजिक ये क्या चीज होती है? हैं? मैजिक यार, मैजिक। ये किसने बोला? किसने क्या बोला? जादू यार, तो जादू। पता होना चाहिए। क्या फायदा? बारिश भाई की उम्र हो रही है ना अभी, उन्हें सुनाई नहीं देता बराबर। मुझे पता नहीं, एक मैसेज आया फोन पे, क्या फायदा, फिर रिपोर्ट फॉर्म वैसे भी रिजेक्ट ही होगा शायद। ओ भाई ये भी सही है। ओ भाई ये किसी भड़वे ने लिखा होगा। हमने सुना है लोग एक दूसरे को हैंडकफ कर रहे हैं। लोग को समझ नहीं आता कि चौथा दिन है। आई मीन कुछ नहीं। अबे लोग हैंडकफ बेच रहे हैं भाई। तुम्हारा क्या कहना है इसमें? क्या मतलब रात में फिर से मेरे को हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। यहाँ पे कोई हैंडकफ नहीं है, नहीं। अबे लड़की खाली खड़ी है बे, लावारिस। चलो। सर गाड़ी खरीद दी सर आपने हैंडल से अपने साइकिल के। जुर्माना कौन देगा? सर कंपनसेशन दो। कंपनसेशन दो सर। 1 लाख बोल रहा माफी से क्या होता है कंपनसेशन? सर गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही। हाँ तो चढ़ जाओगे। तो चढ़ जाओगे। सर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नाम की चीज होती है। क्या सर? हम अपनी बंदूक की मजल वेलोसिटी चेक करें तुम पे? नहीं सर मत करो। ये देखो बाजू वाली गाड़ी कितनी ड्यूरेबल है। हाँ, बिल्कुल नहीं है सर। क्या है वो? अरे मैं बता रहा हूँ सर। अरे सर एक कव लेता हूँ गाड़ी उल्टी। क्या? हार्ड टर्न लेता हूँ, मतलब समझ रहे हो?
एक का लेता हूँ गाड़ी उल्टी एक कब बोला भाई, एक कब बोला मैंने। अरे कर किसका लेगा भाई तू? क्या नंगा क्यों घूम रहा है भाई मुझको सेक्सी लग रहा था। कैसे हो? अच्छा ओके घूमो सेक्स नंगा कर ले। हैं मैं ये ऑफिसर ने नहीं बोला, ये ऑफिसर ने नहीं बोला, ऑफिसर ने नहीं ओह, बोला। ओह, ओह, ओह। आप पीछे जाके बैठ। एक मिनट आया मैं। अबे मेरे गाल पे खरोच लग गई भाई। हैं को भाई पार्क करने दो भाई। एक्सप्लोजन है? पेट्रोल पंप चलो चलो। गुड इवनिंग ऑफिसर। गुड इवनिंग। अबे गाड़ी कहाँ गई? एक सेकंड रुको। अबे किसने मेरे ऊपर हिट एंड रन का केस बनाया था जरा बताना। वो अभी नाम का बंदा। अरे मोटे वाले ऑफिसर रुक जा, सिचुएशन आ गई है सर, रुक जाओ। अरे रुको बम फूट गया है कहीं, चलो। हाँ एक्सप्लोजन रिपोर्ट आया। ओह माय गॉड। इसकी फट गई भाई। इधर से ही तो नहीं फाड़, मतलब पॉलिटो पे आया ना। चलो इसी बहाने ये आया है। इसी बहाने इसका टॉप स्पीड चेक कर लूंगा। अरे कहाँ है एक्सप्लोजन? क्या मतलब मेरे को हैं? मेरे को एक मैसेज आया, आई वाज फीलिंग द पेट्रोल इन द व्हीकल एवरीथिंग एयर ब्लास्टेड। जाने तो फिर जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों भाई? यार ये MSI ना। हाँ पर क्या पता इंटेंशनली अगर किसी ने पूरा पेट्रोल पंप फोड़ दिया तो। हाँ यार मेरे को वही लग रहा है। वही तो आजकल आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी गाड़ी में आग लगी तो तीनों में फैलेगी क्या? अबे प्लीज नहीं 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 ये गलत है भाई, नहीं। जेक सर को लग सकती है, मेरे को नहीं। हैं? ऐसा क्यों? क्यों? नहीं तुम्हें आग नहीं लग सकती? नहीं। क्या तुम पानी से बने हुए हो? यस मैं भगवान हूँ। हैं? देखो हाँ ये गाली दे रहा है तुम्हें। ये बोल देखो, रहा अबे है गाड़ी he हवा is- में उड़ेगी। ये बोल रहा है he is greater than you। ये गाड़ी बारूद हवा मैंने में ही उड़ेगी सहता। अभी, देखना। बारूद मैंने ही सहता। He told you he is क्या greater। मतलब पट से डिस्पैच का कॉल आ रहा है, पट से फालतू पहुंच गए 21 सेकंड। अरे नहीं 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 उतना भी 30 सेकंड VCP टू मेन स्ट्रीम। उतना भी नहीं उतना भी नहीं। नहीं यार But इतना he भी is नहीं यार। but he is testing your abilities। वो बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते उसको। कुछ नहीं कर सकता भाई, ये मटा कुछ नहीं कर सकता यार। अरे कुछ नहीं कर सकता है। मान तो लिया, और क्या चाहिए? करने में बस किसी की फोटो वायरल कर सकता हूँ। अरे भाई हेलो भेजो में क्या पता ट्विटर पे एक पोस्ट आ जाए, ना पता बच्चा देखने पे कांटेक्ट करे स्वयं LSPD। अरे डालो हम लाइक करेंगे, हम ये केस सॉल्व भी करेंगे, फाइन करेंगे इसको। अरे वो कोई केस नहीं है, ठीक है। अरे वो चिंटी के भी माँ बाप गुम हो गए थे, ये बच्चा भी ढूंढ लूंगा मैं भाई सब। हाँ भाई चिंटी का माँ बाप बहुत दिनों से गायब है, उसके लिए कुछ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। I made the report like I noted everything and also I let her contact Dr. Lincoln who is doing a proper medical checkup on her ताकि because she walked from Mount Chiliad back, तो वो भी हो रहा है। and one of her guardians named Lucifer Morningstar is taking care of her at the at Mount Ongwa, so उधर उसका पूरा चेकअप हो रहा है। शायद से वो चेकअप आज कल में हो जाएगा पूरा। बट प्रॉपर एक माइनर है, शी इज अ माइनर, तो स्कूलिंग का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो हु विल बेसिकली टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर हर स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, दैट इज आल्सो नीड टू बी डिस्कस्ड बाय द स्टेट। दैट इज वेरी ट्रू। ओह माय गॉड। यहाँ पे एक टाइम पे एक जमाने में एक पेट्रोल पंप हुआ करता था। उरे उरे ऑफिसर क्या हुआ? एविडेंस दिख रहा है। निकालो, उठाओ। खून दिख रहा है। को खून तो दिखेगा ही। हाँ एक बैग में डाल दिया। एक सेकंड, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, ये खाना खरीदने गया क्या? हाँ ऐसे ऑफिस को फायर करना पड़ेगा भाई तो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, पल्स चेक करो, पल्स चेक करो। गया तो नहीं?
अच्छा है सर यहाँ पे हुआ पल्स क्या था? Blast हुआ. Don't worry sir, this is paramedic Jake Williams. I mean this is SSP Trooper Jake Williams helping you out. कैसे हुआ हैं? ये इतना जरूरी है? हाँ Don't worry अरे sir. कहाँ गए हम हमारे वो होनहार ऑफिसर ने मेरी बातें सीरियस ले ली। हो सकता है बोल रहा हूँ कुछ करके आता हूँ। वो गया किधर बे पर? गया होगा कुछ करने और क्या। लाइफ में गाड़ी चलाने से बहुत स्ट्रेस होता है। ड्राइवर रख लेते फिर हम, क्या बोलते हो? नहीं यार, फिर हमारा क्या काम आएगा लाइफ में? अभी बात है, एक ही चीज तो आता है। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सहायता की जाएगी। होपफुली अगर आप जाने तक बच पाए तो। क्या फिर से सोचो? हैं? चलेगा मेरे को चलेगा। मैंने सुना नहीं, फिर से। अरे चीटिंग करते यार। मेरे को पता है। मुझे नहीं पता। मुझे पता है। अरे भेज दो यार, मेरे तरफ भेज दो, मैं ठीक है, मैं ख्याल रख लूँगा। क्या भेज दो? क्या बातें कर रहे हो? मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत सीरियस बात है। रेडियो शिट, किसका कॉल था? Send it. सेंड इट। और कौन कौन है? तीनों ही यार। कैसे थे फिर आज के इंटरव्यूज? कुछ लोग का एफ हुआ, कुछ लोग अच्छे थे, कुछ मुझे आई थिंक दो बहुत बढ़िया गए। हाँ सिर्फ 2 बहुत बढ़िया गए। हमारे 2-4 बढ़िया गए, बाकी एक कैडेट था उसका अच्छा था, बाकी 1-2 ऐसे थे। अच्छा, रिजेक्शन लिस्ट लंबी होने वाली है। उतनी नहीं, पर हाँ मतलब हाँ, कुछ तो करने पड़ेगा, फिल्टर तो करना पड़ेगा। वो तो मैं मानता हूँ। ये मत नहीं है क्या सिटी में? है तो सही। अरे 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 हैं? ये क्या था? अरे यार। You know, life seems very, very, very stressful. जिंदगी में चैन नहीं है। जिंदगी में इतना स्ट्रेस आ गया आज के इंटरव्यूज के बाद ना, इतना स्ट्रेस आ गया कि क्या ही बोलूं। गाड़ी नहीं चल रही है। हाँ अरे तो oh my अच्छा God. मुझे एक बताओ, जब ये होता है क्या गाड़ी तेरे लिए अचानक रुक जाती है? हाँ ये तो थोड़ा हाँ वही है। सुस पूरे भाई इजी वीसी भी वेरी सस्पिशियस। अरे यार रुको यार, might have to buy a couple of cigarettes or have coffee. मैं किधर आया? मुझे उधर जाना है, इधर बराबर है। नहीं यू थोड़ा आगे से फिर राइट, फिर एक और राइट लेना है। हाँ है इतने में लो फ्यूल।
हैं? आपका क्या है 41 पे दे दो। हेलो आपका क्या है? लेकिन नंबर 233। हेलो डॉक्टर। Hello, officer. डॉक्टर ने ट्रीट कर दो। Please take him inside. I'll get some ठीक है, medicines and get ठीक back. है, यस सर। अरे तुम्हें भी अंदर ले जाना पड़ेगा इसके साथ मेरे को। अरे अरे मैम आपके शोल्डर पे अभी दर्द है तो क्या बात है सेंडेड सर, आज खुद नहीं आ रहे, आज पेशेंट्स लेके आ रहे हो, क्या बात है सेंडेड सर। हेलो डॉक्टर्स। क्या किसी के पास कुछ कॉफी होएगा या सिगरेट्स होएगा या कुछ होएगा? तुमको बोलने बोला है। ये लो प्लीज दे दो मेरी खराब हो रही है वैसे। चाय लेके खराब चलो। की। अरे यार आज जितने इंटरव्यू स्ट्रेसफुल थे ना कि इतना स्ट्रेस हो गया है। कबीर सिंघानिया कौन है? कबीर सिंघानिया कौन है? ये स्ट्रेस नहीं, नशे के बाद डॉक्टर को दे आता दो। है। नहीं सर, इसको स्ट्रेस बोलते हैं सर। अगर आपको पता नहीं हो तो आई वुड से डोंट। सर आइए क्या है? क्या हुआ सर, आप मुझे बता सकते हैं? सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सर। ओनली इंटरव्यूज टुडे एंड सम ऑफ देम वर गुड, सम ऑफ देम वर बैड, सो आई एम फीलिंग सुपर स्ट्रेस्ड। Alright, let me just. The melody. Do you smoke? Yeah, I do smoke, yeah. Alright, I'm giving you some cigarettes. हैं? तुम सिगरेट रिकमेंड कर रहे हो मुझे? No, sir. Actually, अरे अभी मेरे पास. इनको करो दो थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए। That's what I'm doing, sir. हाँ हाँ हाँ। Try this. I'll just go outside and like light it. Yeah. Yep. ने छाता डाल के खोल दिया तुम्हें। अरे एक सिगरेट से इतना कम बड़ा? भाई क्या स्ट्रेस कम हो रहा है? देखो कचरा कर रहा है ट्रूपर। कौन? किधर? मैं कुछ नहीं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये 4 सिगरेट फूक के ऐसा लगा कि यार कुछ हुआ ही नहीं।
अरे वो मेरे को हुआ है अभी, चलो सिगरेट लेने। ठीक है, यहाँ पे सिगरेट लेने। गाड़ी में बैठे बैठे कैसे हो रहा है भाई? गाड़ी में बैठे बैठे ही हो रहा है। मैंने इतना स्पीड करके पॉलिटिकल लिख के गया इसलिए स्ट्रेस हुआ। अरे यार, क्या ये कहना चाहते हैं कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ स्पीड एनफोर्समेंट? पूरा भाई तुम अभी वो के लिए देखो पीछे गया हाँ, स्पीड एनफोर्समेंट। वो अभी के लिए बचा हुआ है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, वरना उसको धर लेते। वरना उसको धर लेते। हाँ। मैं सिगरेट फूक के 42 जाने वाला। ये बहुत बहुत स्ट्रेसफुल डे था, बहुत स्ट्रेसफुल डे था। हाँ यार, दिन में तो बहुत था और अभी कुछ ज्यादा है। आज हमने दिया है 9 घंटे ड्यूटी इंक्लूडिंग इंटरव्यूज। जी यही था कैरेक्टर ड्रिंक से भी। हो रहा है कुछ? फूक रहा हूँ, फेफड़े चल रहे हैं। 11 सिगरेट फूक लिया, अभी 12वां 13वां। फर्स्ट फाइट में HTRP डाउन। मैं नहीं जानता किसी को भाई, मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता किसी को, मैं नहीं जानता अपने बंदों को। मैं नहीं जानता गाइस, मैं नहीं जानता अपने बंदों को। तुम लोग जानो, मैं नहीं जानता। कोई ना चक्कू फाइट, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये चक्कू फाइट वक्कू फाइट, मैं आउट। मैं मासूम इंसान हूं, मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं नहीं जानता। कौन था पता नहीं यार। वॉरियर और न्यूक्लियर का कुछ तो सिचुएशन हुआ था। मैं तो ऐसे ही बकचोदी कर रहा हूँ। सेकंड फाइट भी होगी है क्या? ग्रैनी पे बात हो रहा है क्या कि हम लोग फिर से आने वाले हैं? हाँ? मुझे बताओ क्या तुम गाड़ी में फूक पा रहे हो? वियर्ड क्वेश्चन। फूकना तो चाहिए। ट्राई करते हैं। बेनिफिशियल। अरे लेने तो दो, रुको रुको। है अच्छा, हाँ कर सकते हैं, अभी रुक जाओ। अरे पेट्रोल तो भरा लो। नहीं मुझे ये भी मुझे कुछ ट्राई भी करना है। Let's go.
ये थोड़ा इशू है। क्या है? रिपेयर पे फुल रिफ्यूल। ओ भाई मैं थोड़ा अभी जा रहा हूँ। कहाँ? ऑफ ड्यूटी और कितना करूँ? 10 घंटे से हूँ, 9 किधर घंटे जा से। रहे हो मतलब? और किधर? उधर ऐसा करना पड़ता है यार अगर नहीं तो लोग बोलेंगे भाई तुम तो काम ही करते रहोगे पूरा दिन, ना। बराबर। यार मैं क्या सोच रहा था यार, यूनिफॉर्म अपनी चेंज नहीं हो सकती क्या? होनी तो चाहिए, हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपना यूनिफॉर्म। पर यूनिफॉर्म में चॉइस नहीं यार उतनी। हाँ वो तो मैंने बोला है अपने चीफ सर को, केविन की, थोड़े और आउटफिट्स ले आओ यार ताकि शेरिफ का है, पार्क रेंजर का है, भाई हमारा शेरिफ ही का नहीं है। बहुत है। शेरिफ में तो चॉइस ही चॉइस है। हाँ हम ही रह गए साइड में। ये भी सही है। चलो हम थोड़ा चलते हैं। हाँ मिलते हैं। तुम ये गाड़ी चाहिए कि एक और गाड़ी निकालोगे? कल तो इंटरव्यूज है ना। अब कोई है नहीं तो अच्छा पता नहीं, देखता हूँ। मैं ये गाड़ी रख दूँ अंदर? रख दो। आज के लिए 101 show me 1042 for the day. 10-4। बोले भाई। हमने कुछ सुनने में आया। क्या? हाँ पर हम बोलेंगे नहीं। हमें तुम्हारे बारे में बात पता चली। हमारे बारे में क्या? अरे इन केस एंडिड। अच्छा पर हम बताएंगे नहीं ना। यप। तुमने कभी सोचा है लाइक टू जस्ट ग्रो योर हेयर एंड गो क्लीन शेवन? क्या? कभी सोचा है टू लाइक ग्रो योर हेयर लॉन्ग एंड गो क्लीन शेवन? वही गुड है। बिकॉज़ वो चिंटी बोल रही थी ना कि यू लुक लाइक हर मॉम। तो अरे क्या बोल रही थी भाई वो, मैं तो सदमे में चला गया 2 मिनट। भाई आज तो वो अभिषेक हमें पता नहीं आया था, वो भी बोला था आई लुक लाइक हिज मॉम। हाँ ऊपर तक आवाज आई थी। हाँ उसने मॉम ही बुलाया मुझे। ऊपर तक आवाज आई थी। अरे वो जो आखिरी में चिल्ला के गया है भाई। तो विवान सीजर इंटरव्यू दे रहा था, नीचे से बोलता है आप क्या क्या हुआ मेरे को बताओ। अरे सामने इंटरव्यू चल रहा था विवान सीजर का। हाँ नीचे वही बोला जोर से, जेक सर आप मेरी मम्मी जैसे लग रहे। 2 मिनट का ऑकवर्ड साइलेंस हुआ उधर इंटरव्यू के बीच। ओहो एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया है। चलो गाइस सी यू ऑन द अदर साइड। हमारा अदर साइड ही नहीं है भाई, कचरा चुकता है वो भी। चलो यहाँ पे सेल्स कुछ है भाई, पीडी बहुत बड़ा है भाई। Alright guys, I am going to be restarting stream in like 5 minutes, ठीक है? 5 minutes I'll restart stream, 5 to 10 minutes, ठीक है? Because अभी 10 घंटे का स्ट्रीम, 9 घंटे का स्ट्रीम हो गया है। I'll keep this stream as just an interview stream और फिर माइकल वेस्पुची ला रहा हूँ। Alright guys. वही तो नहीं बताता साला रे। मिलते हैं guys in the next stream in like a couple of minutes. Bye bye.